माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक है, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया हो। शेष को व्यक्तिगत माना जाएगा। आइटम नंबर 16, अनुदानों की पूरक मांगे। माननीय शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Chairman, sir. I very much want to present my party's views on the supplementary demands for grants 2021-22 presented before this House by the Honourable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman. Now, we're all gathered here, sir, at a time when our nation's economy continues to battle the significant forces of disruption that have been set in motion by the COVID-19 pandemic and which can trace their way back in our country to the disaster of demonetisation 3 years earlier. While we all applaud the heroic efforts of our nation's healthcare workers, our nurses, doctors and other members of the medical fraternity, the truth is, sir, the virus combined with the short-sighted policy decisions of this government has ushered in a period of uncertainty for the economic revival of the country. And I have to say, sir, that we have been seeing crises everywhere we look. The foundations of the economy have been laid low ever since demonetisation. And let's face it, the star performers that have been affected by the pandemic include the tourism and service industries, which are devastated, the backbone of the economy, agriculture, MSMEs, both in crisis. And as I pointed out during the budget debate in February, the government has given us then, I'm afraid, and continued to, the usual combination of high rhetoric, grand ambition, exaggerated numbers and unrealistic targets, all diluted with underwhelming allocations to crucial sectors. The very fact that the Finance Minister has come back to us with such a large supplementary demand for grants testifies to this. The government had budgeted a total expenditure of 34.83 lakh crores in fiscal year 22. But spending has defeated the estimates and excess expenditure has brought the Finance Minister back to the House with this new request. The gross additional expenditure she seeks is over 1.87 lakh crores, of which 23,675 crores will be the actual cash outgo. Of this, sir, more than 80% of the extra net cash outgo has been directed to 5 specific items, the largest of these being the equity infusion into Air India Assets Holding, over 62,000 crores, followed by a substantive additional subsidy for fertilizer, 58,000 crores, and food, almost 50,000 crores, followed by a large allocation for the clearance of past dues owed to exporters, and finally a modest boost to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Now, let me share with the Honourable Minister that we in the opposition can understand the need for critical government spending as a result of the pandemic. But as we have repeatedly pointed out, sir, including during the last budget debate, the government must stop presenting unrealistic targets to this House and offer much more transparent numbers to the country. I have had the privilege of pointing out here that the macroeconomic figures presented by the Honourable Minister in February had to be greeted with healthy scepticism, and I'm afraid her supplementary demand for grants merely confirms the suspicions and apprehensions I voiced 10 months ago. Now, the supplementary demands for grants clearly indicates a gross miscalculation on the part of the government on expected expenditure, and in so doing, it essentially insults Parliament. It undermines the control of Parliament over the budget by going over and above beyond what had been sanctioned at the government's own request
and which we have told the government at the time was not realistic. Now, the additional demands confirm that it is unlikely that the government will be able to stick to its claim of a 9.5% fiscal budget deficit, which itself, of course, was an increase from 6% last year. The current cash outgo clearly shows that the government will be unable to stick to its own claimed target of capping the fiscal deficit at 6.5% of GDP, 6.8% they revised it to. They're not going to meet that, so they're going to exceed that. The government's confidence in meeting this was already, I think, really fading last month when the Finance Secretary made a comment about it being unlikely to be achieved. But we know about COVID. We knew about COVID, so blaming COVID is not good enough, sir. Unrealistic estimates were announced in February. We knew about COVID at that time. But what does it say about the government that data today shows that the total government debt as a percentage of GDP for both centre and states has risen from 70% in March 2019, which was bad enough, to 90% by March 2021, sir, which is much higher than the 60% recommended target that has been recommended by the FRBM Review Committee back in 2017. Now, the gap between expected revenue and expenditure is likely to widen further. Why? Because disinvestment has not made the progress the government rationally predicted for it. In fact, if you look at the disinvestment target of 1.7 lakh crores, it's going to be missed by a large margin, a very large margin. The privatization of BPCL is not expected to be completed till fiscal year 23, and all of this, of course, doesn't even take into account the estimated 65,000 crores in the potential revenue foregone from their calculations because of their recent cuts in fuel taxes. Now, this is not altogether new from this government, sir. They've repeatedly failed to meet their disinvestment targets in 4 of the 6 years since 2014. And the 2 years where they did meet it was through the slightly comical arrangement of getting one PSU to buy shares from another PSU. That track record, sir, extends this year as well. At the end of October, according to the Controller General of Accounts, the government has only managed to raise 9,333 crores. And while a lot was said about the sale of the aircraft carrier, of the national airline, Air India, to the Tata Group, a significant component of those demands for grants, the ones that before us today, sir, reflects 62,057 crores for Air India Asset Holding Company Limited, which carries the burden of the majority of the debt the carrier was under. In other words, sir, if people think that by privatizing Air India, the burden of a loss-making airline is off the hands of the taxpayers, they better think again, because we are going to be carrying that burden, sir, for a long time to come. The government remains liable for nearly 46,000 crores of accumulated debt, and that debt has therefore been passed to the taxpayer. So, Achedin is going to be a while coming, sir, no question about it. If it comes at all. Perhaps with a change of government we might see it. Now, the economic distress, sir, that we've been seeing because of the pandemic has also disproportionately affected rural India. And again, we had pointed out, sir, I'm proud to say in my budget speech I'd made a big issue of this, the lack of allocations and the cuts that were imposed on Manrega, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, sir. Today, some money has been requested. I'm sure this House will gladly grant it. But is it enough, or is it too little too late? At a time of record levels of demands for work, let's not forget, sir, unemployment today is at the worst levels ever recorded since they began recording unemployment figures. So, at that time, a lot of people have come under the Manrega scheme saying, please give us work. And the government, in its wisdom, actually slashed allocations for the scheme by a shocking 35% in the budget that we approved last year, earlier this year. In fact, in August last year, over 24.2 million households requested work under Manrega, a 66% hike from the same period in 2019. But with the government slashing allocations, sir, we have seen a real problem. And I'm sorry to say that with 4 months still remaining in the current financial year, the government's own financial statements show a negative net balance of 10,244 crores in Manrega, including payments due.
Sorry to say, this is a government-made disaster, Mr. Chairman. And so the fact is that the current proposed supplementary allocation of rupees 22,039 crores reveals how the government continues to grossly underestimate the importance of NREGA as a lifeline, sir, a lifeline to rural India. And it remains 50% short of expert estimates that have been saying for a whole year now that we need at least 50,000 crore rupees to meet the current levels of demand for NREGA due to continued rural distress in our country. Merely allocating funds is also not enough, because there's no clarity from the union government on when the funds will be released so that the states can actually process payments to those who have done the work. Even with this new infusion of 22,039 crore, the new total expenditure under NREGA would increase to only 95,000 crore, which is 14% below the revised estimates of 1,11,500 crores for fiscal year 2021. So how can we applaud the government, sir, for giving 14% less than was revised estimates of last fiscal year at a time when the need and the demand is actually much greater than it's ever been? I think the government has once again undershot its target. In fact, it's estimated that out of 6.77 crore people who demanded work under MNREGA this year, 5.87 crores only got employment. So there's an unmet demand of almost a crore people, 13.25%, who haven't got work. The ones who've got work haven't been paid on time. But the ones who haven't got work, what do we do about them, sir? The government has failed to provide employment to those in need. It's failed to give them unemployment allowance as mandated by the National Rural Employment Guarantee Act of 2005. Okay, so we'll turn again then away from agriculture, where the government has again let us down in this way, turn to the railways, because railways, as you know, is already featuring in the current supplementary demands for grants. The fact is that the government's repeated attempts to hide behind rhetoric in matters of serious policy making and governance really has again been apparent when it comes to the railway budget. They've asked for 20,000 crores more for the railways. But we'll all recall, sir, that in the budget of this year, the Ministry of Railways was allotted a large sum of money, a record sum in the Finance Minister's words. She announced a mega rail plan for the budget speech, released a national rail plan targeting India 2030, broad ambitions and targets that were released, clearly stated by the Finance Minister. But the government appears to have grossly underestimated the funding required to fulfill these targets. Further, sir, the nature of allocations and reappropriations under the second batch of supplementary demands for grants reveals that the priorities of the Railway Ministry has been completely reworked. The whole budget will have to be completely reworked to the tune of 40,000 crores, and we're looking at reappropriating existing grants for 20,000, then 20,000 new today, and at the end of it, what are we looking at, sir? We're looking at a report of the Controller and Auditor General, the CAG, telling the government that there is a need for more realistic estimation of supplementary requirements by the Ministry of the Railways. Apparently, the Ministry of Railways had obtained supplementary grants of 817.5 crore earlier in anticipation of higher expenditure, but the final expenditure was even less than the original provisions. I'm quoting from the CAG report, sir, and they say that they really need to be more realistic in calculating their numbers. This is something we have been saying in this House time and again with the government's budget numbers, sir. Now, despite obtaining these supplementary demands, the final expenditure remained below the original budget estimates for the year, and yet the Railway Ministry also incurred unsanctioned expenditure of over 5,000 crores in 2019 fiscal year, another 500 crores in 2020, which means that the Ministry's finances are, to put it mildly, sir, in a shambles. What are the other misses in this budget? If you look, sir, that I mentioned NREGA when it comes to the agriculture sector, but there's been no provision allotted at all for MSP. The fact is there are two schemes in the government that ensure the implementation of MSP. The Market Intervention and Price Support Scheme, MISPSS, and the Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Yojana, PM Asha. Both of those have witnessed consecutive reductions in the last 2 years,
leading to a 20-25% cut in this year's budget. Now, the supplementary demands would have been the perfect place to cover up that hole. They have not done so. Having withdrawn the farm laws, how are they going to be able to promise MSP when they have cut by 25% the money available for MSP, sir? I would love the Finance Minister to explain this magic that is being inflicted upon the nation. Now, sir, there are a number of areas where the budget was itself deficient, and sorry to say, the supplementary demands for grants have not made up for it. One immediate area that we've talked about, of course, is healthcare, for which some additional funds have been provided, but there's still no money for any meaningful fiscal stimulus. All we have continued to see in the government's approach is a focus on liquidity rather than direct fiscal support. But giving cheaper credit to businesses is of no value unless consumption and demand increases. But demand won't increase unless people have money to spend. Where is the money going to come into the pockets of people? Even in Rega, sir, there are going to be a lot of people unemployed, unable to purchase. Tourism and hospitality, where are the supplementary demands for that? A very major industry in our country in severe crisis, and an industry which employs a lot of people, including semi-skilled labour. Who is going to ensure that money is available to boost that sector? Defence. You remember, sir, that I had to say in this House how shocked I was that the Finance Minister did not even mention the word defence in her budget speech. Again, here is a great opportunity to make up for that omission. We have a crisis on our borders with the Chinese sitting on territory that they never controlled before. Are we giving our military enough resources to protect this nation's security and self-respect? Why has the Finance Minister not asked us for money for the Defence Ministry in the supplementary allocations? We have, sir, a number of serious questions like this to ask. I do want to leave enough time to my colleagues, but I have to say that we had already seen, with the ignoring of agriculture and the ignoring of defence, I was forced to say this is not a Jai Jawan, Jai Kisan era under this government. It's a Na Jawan, Na Kisan budget that we have. And we are seeing the same thing continuing, sir, in the supplementary demands for grants. And I do want to say to you, sir, very frankly, that we are seeing this across the board. Look, for example, at the Women and Child Development Ministry. We have a situation in Women and Child Development where the Parliamentary Standing Committee has been forced to point out the gross underutilisation of funds. Now, the Finance Minister is going to save that money, and I'll take just 1 minute to wrap up, sir. He's going to save that money and say, see, we have tried to meet our targets by saving money, not only by reducing expenditure, not merely by raising revenue. But the truth is that according to the Standing Committee, the important schemes, including Beti Bachao, Beti Padhao, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Poshan Abhiyan, etc., have not been able to spend the money allotted to them. They've grossly underused their money. And the result in this process is the government is able to point to savings, but the benefits have not reached the women of our country and the children of our country. It's no longer, sir, Beti Bachao, Beti Padhao. It is actually Paise Bachao, Beti Dubao. That's what's happening with this government. Thank you, sir. One last point, sir. Yesterday, in her reply on a different bill, the Finance Minister had made a particular claim, which I'm afraid I must address. She had specifically said that there was a tender allocated in my constituency to create a port of Vilnius. She said, in violation of the rules, a one-bidder tender. I do want to let her know, sir, there were actually 2 rounds of bidding under a PPP model. After the failure of those rounds, 3 rounds of bidding under the landlord model. And what is more, sir, I have the full details, but I'll be happy to share with her of the saga of those who have bid, why they were disqualified, and why we ended up with only one valid bidder. Thank you. Let me conclude, sir, by just saying, ultimately, these supplementary demands for grants are for the economic well-being of our country. We believe the government has not done a terribly good job of looking after our economy, sir. We certainly will not stand in the way of giving some of these resources, but we are constrained to point out that the government should stop miscalculating and making wrong claims when they come with their original proposals, and in their supplementary demands, they must recognise the real problems and ask for enough money to solve them rather than undershooting as they have again done. Thank you very much, Mr. Chair. Shri Nishikantji Dubey ji. निशिकांत जी बोलेंगे. Crores of rupees. So the time allocated is only 4 hours.
This is it. So last time also we didn't get a chance for the first batch of supplement. The BSc, 4 hours. Definitely, that's There's why, sufficient time. that's why I'm drawing your attention. Please enhance the time of discussion of this. निशिकांत जी, The 4 hours, I think. there's धन्यवाद सभापति महोदय। मैं भारत सरकार के द्वारा लाए हुए सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। अभी जब सभापति महोदय कांग्रेस के मित्र तकरीर कर रहे थे तो मुझे साहिर की एक लाइन याद आई कि कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, सबको अपने ही किसी बात पर रोना है। समझाऊंगा जब एयर इंडिया की बात करूंगा, जब मनरेगा की बात करूंगा, जब सब्सिडी की बात करूंगा तो पूरा समझाऊंगा, पूरा कागज लेकर आया हूं। इतना बड़ा सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स लेके भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई है, उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझने की आवश्यकता है सभापति महोदय। आज पूरी दुनिया, अभी आईएमएफ का जो है अक्टूबर का रिपोर्ट आया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अक्टूबर का रिपोर्ट आया है, और कोरोना के कारण, कोविड के कारण पूरी दुनिया कराह रही है। और मैंने फिजिकली सभापति महोदय, संजोग से ये पिछले 7-8 महीने में मैं यूरोप के भी कई एक कंट्री घूमने का मुझे मौका मिला है और मैं अमेरिका भी घूम कर आया हूं। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, जहां की लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, जहां की सारी दुकानें अरबों अरबों रुपये में जाती थी, आज का हालात, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपको जून और जुलाई की बात कर रहा हूं सभापति महोदय, वहां के सारे दुकान खाली हैं। इतनी बड़ी बेरोजगारी है, लोगों को किराएदार नहीं मिल रहा है, बेचने की तो बात छोड़िए। और उन लोगों ने क्या किया? पूरी दुनिया में आज अनएम्प्लॉयमेंट अपने एक्सट्रीम पर है। हेल्थ का सिस्टम जो पूरी दुनिया कह रही थी कि यूरोप का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, यूके का बहुत बढ़िया है, यूएस का बहुत बढ़िया है, इस कोरोना ने सबको सामने लाकर खड़ा कर दिया कि सबके मुकाबले आप माने या ना माने, मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने दुनिया को दिखाया है, हमने जो 130 करोड़ लोगों को बचाया है, शायद इस तरह का हेल्थ सिस्टम कोई भी पैदा नहीं कर पाया। और वो कह रहा है कि पूरी दुनिया में आप समझिए कि जीडीपी का, जो आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये सारे जो रिपोर्ट आए हैं, वो रिपोर्ट लगातार ये कह रहे हैं कि प्रत्येक देश की जीडीपी जो है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी लगभग 3.5% डाउन जाएगी। और उसमें जब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए खड़े होते हैं, तो हमको कम से कम प्रेज करना चाहिए। मैं, आप सभापति महोदय, कम से कम कांग्रेस के जो स्पीकर हैं, जो बोलने वाले थे, उनके माध्यम से कहना चाहता था कि हेल्थ वर्कर को आपने अप्रिशिएट किया, सभी करते हैं, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके कारण हम बच पाए, ये सभी करते हैं, मतलब पूरा सदन उनके साथ है। हम लोग लगातार बार बार अपने भाषण में इन चीजों का जिक्र करते हैं, लेकिन सरकार ने कुछ किया, वित्त मंत्री जी ने कुछ किया, प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ किया, उसके लिए भी तो कम से कम एक लाइन बोल देते। उन्होंने क्या बोला सभापति महोदय? उन्होंने बोला, एयर इंडिया के बारे में बात हुई, क्योंकि इस बजट में सबसे बड़ा विषय जो है वो एयर इंडिया है, और मुझे पता है कि मैं जब अपना बात खत्म करूंगा तो कई एक लोग जो है एयर इंडिया के बारे में अपना पूरा का पूरा भाषण जो है इसके ऊपर देंगे। एयर इंडिया क्या है, मैं एयर इंडिया से ही शुरू करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, जब 2004 में हम सरकार से बाहर गए, तो एयर इंडिया एक अलग कंपनी थी और इंडियन एयरलाइंस अलग कंपनी थी।
और यह पूरे सदन को जानने का सवाल है। और दोनों कंपनी प्रॉफिट में थी, दोनों कंपनी प्रॉफिट में थी। अचानक 2004 में हमारी सरकार चली गई और यह पूरा का पूरा ये सीएजी का रिपोर्ट है। सभापति महोदय, यह सीएजी का रिपोर्ट है। सीएजी का रिपोर्ट क्या कहता है? यह 2011 की रिपोर्ट है, हमारे सरकार के सामने की रिपोर्ट नहीं है। इस पर चूंकि हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। सीएजी की रिपोर्ट एक एक चीज को बताती है। यह बताती है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर नहीं होना चाहिए, यह गलत डिसीजन था। एयर इंडिया बोर्ड ने भी कहा कि यह मर्जर नहीं होना चाहिए, इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड ने भी कहा कि यह मर्जर नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बोर्ड के मर्जी के खिलाफ इन्होंने मर्जर कर दिया। और आपको बताऊं, आज जब मैं बात कर रहा हूं, आज इतने दिनों के बाद 2021 अब 22 होने वाला है, पिछले 16-17 साल में सभापति महोदय यह मर्जर हो ही नहीं पाया। धर्माधिकारी की रिपोर्ट आ गई कि उनके जो एम्प्लॉई हैं, उनका जो लोगों का बिहेवियर है, काम करने का तरीका है, जो उनका इंसेंटिव देने का तरीका है, जो उनको सैलरीज है, ये दोनों को स्ट्रीमलाइन करो। आज तक वो धर्माधिकारी कमेटी की रिपोर्ट नहीं हो पाई और एयर इंडिया के एम्प्लॉई अलग रहे, इंडियन एयरलाइंस के एम्प्लॉई अलग रहे। एक कहावत है कि तेते पाव पसारिए जेते लांबी सोर। जितना आपका चादर है उतना ही बढ़ना चाहिए। बोर्ड ने तय किया, एयर इंडिया के बोर्ड ने तय किया, इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड ने तय किया कि हम 17-18 प्लेन से ज्यादा खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? मैं सभापति महोदय ये ईगॉम की रिपोर्ट लेकर आया। कांग्रेस के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, बड़े नेता हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, पी चिदंबरम साहब ईगॉम के हेड बने। और उन्होंने क्या किया? करे कोई भरे कोई। हमारे ऊपर जो क्वेश्चन करते हो सभापति महोदय, कांग्रेसियों को अपने से सोचना चाहिए। आपने क्या क्या किया, मैं पढ़ के बताऊं। आपने जो है भारत सरकार का, यह पीएसयू था, भारत सरकार की कंपनी थी, लेकिन वो प्राइवेट तरीके से चलती थी, प्रोफेशनल तरीके से चलती थी। भारत सरकार ने, यह ईगॉम की रिपोर्ट है, मैं प्लेस करूंगा, ये यहां टेबल पर रखूंगा सभापति महोदय। आपने सॉवरेन गारंटी दी, भारत सरकार ने सॉवरेन गारंटी दी और जो 17 प्लेन खरीदना था उसको 117 पर कर दिया। किसके पास यह कमीशन गया? किसके कहने पर आपने कर दिया? ये चिदंबरम साहब कौन होते थे ईगॉम में ये फैसला करने वाले? और यदि वित्त मंत्री के नाते पैसा नहीं था इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को, तो इतने प्लेन खरीदने की क्या आवश्यकता थी? और खरीदते तो ये सॉवरेन गारंटी देने का अधिकार किसने दिया? इस देश को बेचने का अधिकार किसने दिया? और जब आप सॉवरेन गारंटी देंगे और उस सॉवरेन गारंटी में एयर इंडिया जब पैसा लौटाने को तैयार नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतनी प्रॉफिट नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे? प्रत्येक साल 4,000, 5,000, 10,000 इस तरह की बातें होने लगी। जब लगा कि मामला नहीं सुधरेगा तो 2010-11 में एक टर्न अराउंड प्लान जो है इन्होंने फिर से फिक्स कर दिया। फिर से पैसा देने का जो है इन्होंने एक साधन क्रिएट कर दिया। मैं केवल बता रहा हूं कि यूपीए सरकार ने किस तरह से इस देश के साथ, इस देश के टैक्स पेयर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की। और वो टर्न अराउंड प्लान में वो भी सीएजी की रिपोर्ट है, और सीएजी की रिपोर्ट पूरे देश में पढ़ना चाहिए कि उस टर्न अराउंड प्लान के बारे में सीएजी ने कहा कि तुम पैसा कूड़े में फेंक रहे हो, इससे कोई एयर इंडिया की हालत नहीं सुधरने वाली है। लेकिन हम लगातार, कोई ऐसा बजट नहीं है सभापति महोदय, हम और आप एक साथ जो है सांसद रहे हैं, 2009-10 से कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसा बजट नहीं है, कोई ऐसा सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स नहीं है जिसमें कि भारत सरकार ने 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 करोड़ रुपया एयर इंडिया को नहीं दिया। किस लिए दे रहे थे भैया? जब आपको तय हो गया कि हम पैसा नहीं लौटा सकते, वो भी पैसा कम से कम नहीं भी कुछ तो 30-35 हजार करोड़ रुपया सभापति महोदय टर्न अराउंड प्लान में केवल करप्शन में हमने दे दिया। तो क्या करते?
जब भारत सरकार ने यह तय किया और लगा कि हम टैक्स पेयर की मनी लेकर जा रहे हैं, और ये केवल और केवल उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और चिदंबरम साहब के कारण ऐसा संभव हुआ, तो भारत सरकार ने तय किया, क्यों अच्छा तय किया कि इसको डिसइन्वेस्ट करना है अपने को। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सॉवरेन गारंटी है, जो 117 प्लेन लेकर आप आए हैं, वो पैसा कहां से आप देंगे? और इसी कारण से जब ये टाटा को ये जाएगा तो उसको डेट फ्री कंपनी देना है, और इस कारण से ये हम लेकर आए हैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। उसका कारण ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट में कोई पार्टी आएगी कि नहीं आएगी ये तय नहीं था। आपको पता है कि हम पिछले साल भी इसको डिसइन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन कोई आदमी खड़ा नहीं था, और वो कहते कि हम एंटीसिपेट नहीं कर पाए। हम एंटीसिपेट किए, लेकिन आपने कितनी चोरी की थी उसको एंटीसिपेट करने में हमको इतना वक्त लग गया, इसलिए हम इस बार लेकर आए। दूसरा कांग्रेस के समय का कि कैसे देश को इन्होंने डुबोया है, वो स्पीकर 10 मिनट तक नहीं बैठते सुनने के लिए। ये कांग्रेस की आज के समय हालत है। ये है। चलो निशिकांत जी बोलेंगे जी, नहीं, निशिकांत जी बोलेंगे, दूसरा कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति महोदय, अब दूसरा सवाल है फर्टिलाइजर सब्सिडी का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। हम पार्लियामेंट में सभी लोग किसी न किसी कमेटी के मेंबर होते हैं, और हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है ऊपर होनी चाहिए, हम सांसदों को पूछते नहीं हैं, कमेटी की रिपोर्ट को जो है कोई सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत ही बड़े डेमोक्रेट हैं सभापति महोदय, और वो पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट्री कमेटी को बड़ा सीरियसली लेते हैं। और हम तो अपोजिशन का, अभी मेरे बाद जो है वो मिस्टर मारन बोलने वाले हैं। ये रिपोर्ट है सभापति महोदय, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का केमिकल और फर्टिलाइजर का, और उदय प्रताप सिंह मेरे सामने बैठे हैं, संजोग से वो मेंबर हैं, और उसकी चेयरमैन जो है डीएमके की जो उपनेता हैं कनी मोजी साहिबा, वो इसकी चेयरमैन, उनकी ये रिपोर्ट है। और वो क्या कह रही है, ये रिपोर्ट में केवल 2-4 लाइन कोट कर दूं सभापति महोदय। वो ये कह रही है, ये 2020 की रिपोर्ट है, मतलब अभी की रिपोर्ट है, मतलब ये कोरोना होने के बाद की जो है ये रिपोर्ट, कोई पुरानी रिपोर्ट, क्योंकि 2019 में हम लोग जब आए जीतकर तब उसके बाद वो चेयरमैन बनी है, तो इसलिए उसके पहले वो चेयरमैन नहीं थी। ये कह रही है कि सिंस एनी ड्रास्टिक चेंज in the extent fertilizer subsidy policy would have huge bearing on the food security of the country, the committee would like to make the following recommendation। और वो ये कह रही है, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता, कि भारत सरकार की जो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी की जो पॉलिसी चल रही है, हम उससे सहमत हैं, और इसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए जो कमेटी बनाई है नीति आयोग की और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के नेतृत्व में, यदि पूरी पार्लियामेंट का हम सोचते हैं कि छोटा सा एक रूप जो है स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी की ये रिपोर्ट केवल फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए ही है, कोई अलग कोई रिपोर्ट मैं कोट नहीं कर रहा हूं, फर्टिलाइजर सब्सिडी के ये बारे में रिपोर्ट है। और यदि उस रिपोर्ट को भारत सरकार ने इन टोटो एक्सेप्ट कर लिया, और इसमें जो है किसानों को जो है 1.5 गुना 2 गुना दाम देना है, एमएसपी देना है, केवल किसानों की बात करते हो यार, किसानों को कैसे सुविधा देनी है। पूरी वर्ल्ड मार्केट में आज यदि डीएपी का रेट बढ़ गया, नाइट्रेट फॉस्फेट, यदि आपके पास उसका रॉ मटेरियल नहीं मौजूद है, और पूरी दुनिया में दाम यदि आगे बढ़ रहा है, यदि उसकी प्राइस को कम करने के लिए हम फर्टिलाइजर सब्सिडी लेकर आए, तो क्या काम कर दिया? क्या किसानों को फायदा देना कोई ये नहीं है, केवल सिंघू बॉर्डर पर जाकर हल्ला करना और किसानों को जो है मरवा देना, यही आपका उद्देश्य रह गया है कि किसानों को कैसे फायदा पहुंचाएंगे, कैसे कम रेट पर जाएंगे? क्या ये विचार नहीं है? और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, ये किस तरह की बातें करते हैं। मैं भी देख रहा था पेट्रोल डीजल पर बड़ा ह्यू एंड क्राई होता है, और यूपीए, और मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जो है फरहान, उनसे मैं पूछना भी चाहता हूं कि सदन को वो बताएं यदि मेरी समझ जो है वो कम है या ज्यादा है या नहीं है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को बताना चाहिए
पेट्रोल डीजल पर 2004-5 में जब यह सरकार बनी सर, मतलब मैं केवल यह कह रहा हूं कि किस तरह से न्यूसेंस इन्होंने क्रिएट किया। 1,40,000 करोड़ का 1,40,000 करोड़ का इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किया। ऑयल बॉन्ड जारी किया, कोई 10 साल का ऑयल बॉन्ड है, कोई 15 साल का ऑयल बॉन्ड है, और वो केवल सामने जनता को दिखाते रहे, जनता को गुमराह करते रहे, टैक्स पेयर को गुमराह करते रहे कि हम आपको सस्ते दर पर डीजल और पेट्रोल दे रहे हैं, हम आपको सब्सिडाइज रेट पर डीजल और पेट्रोल दे रहे हैं। आज वो 10 साल 15 साल पूरा हुआ हमारी सरकार में सर, क्योंकि मैंने कहा ना कि करे कोई भरे कोई, हमने कर दिया और अब आपको जो भोगना है, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया 2014 में सभापति महोदय। मैं कई एक कानून के बारे में लगातार बोलता हूं, चाहे वो मनरेगा की बात कर रहे हैं, चाहे लैंड एक्विजिशन की एक्ट की बात कर रहे हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हो। इनको यह लगता था कि जो आने वाली सरकार है उसको 4-5 साल में हम इतना बदनाम कर देंगे कि वो चली जाएगी। और उसमें मैं आपको बताऊं कि ऑयल बॉन्ड में 1,40,000 करोड़ का जो ऑयल बॉन्ड है, भारत सरकार को आज 3,20,000 करोड़ रुपया लौटाना पड़ा। क्या आप इसी तरह का वित्त चाहते हैं? इसी तरह का फाइनेंस चाहते हैं? क्या आप जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं? क्या आप जनता को गुमराह कर रहे हैं? 1,40,000 और वो 3,20,000 करोड़ जो ऑयल बॉन्ड लिया, वो ऑयल बॉन्ड किसी गरीब आदमी ने नहीं लिया सभापति महोदय। ऑयल बॉन्ड किसी ने किसी पैसे वाले ने लिया, किसी ने किसी कॉर्पोरेट ने लिया। और आप कहते हैं कि यह सरकार चलती है। किस तरह की दलाली आपने की है? किस तरह के लोगों को आपने ऑयल बॉन्ड दिया है? 1,40,000 करोड़ यदि 3,20,000 करोड़ में चला गया, यह किसका पैसा था? यह आम गरीबों का पैसा है, यह टैक्स पेयर का पैसा है, और आपने जो है इस तरह की बातें कर दी। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। निशिकांत जी जो बोलेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा। आप बैठ जाइए। मैं सभापति महोदय, इस बजट में कई एक ऐसी चीजें हैं जो गांव गरीब और किसान से जुड़ी हुई, सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पे मैं बता रहा हूं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक जो है 53,000 इन्होंने दिया है कि फॉर पेमेंट ऑफ पेंडिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। इस कोरोना में या कहीं भी यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं सभापति महोदय, तो मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर करता है, छोटे उद्योग करते हैं, एमएसएमई करते हैं। और एमएसएमई एक ऐसा उद्योग है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा चीज है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। छोटी इंडस्ट्री होती है लेकिन ज्यादा रोजगार देता है। और यहां जो सबसे बड़ा विषय है कि रोजगार देना है तो कैसे देना है, कैसे लोगों को इन्वॉल्व करना है, खासकर गांव के लोगों को या छोटे लोगों को, अनस्किल्ड लेबर को या स्किल्ड लेबर को कैसे देना है। इसमें 53,000 करोड़ रुपया दिया है। और किस लिए दिया है? कि आपको हम ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाइए। क्या गरीबों को पैसा देना गुनाह है? क्या गरीबों को रोजगार देना गुनाह है? क्या इस बजट में? दूसरा मैं आपको बताऊं कि किसानों की बात कर रहे हैं, यहां महाराष्ट्र के भी शिवसेना के लोग बैठे हुए हैं, एनसीपी के लोग बैठे हुए हैं। यहां कपास कौन पैदा करता है? कपास ज्यादा जो है महाराष्ट्र के किसान पैदा करते हैं या गुजरात के किसान पैदा करते हैं? 7,000 करोड़ की सब्सिडी, उसके लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में यदि हमने व्यवस्था रखी है कि 7,000 करोड़ कॉटन की सब्सिडी देंगे, कॉटन ग्रोअर फार्मर को जो है हम मदद करेंगे, तो हमने कौन सा गलत कर दिया सर? इसके बाद मैं आपको बताऊं कि रेलवे पर आया। रेलवे एक बड़ा विषय है, चले गए 2014 के पहले यहां कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा जो रेल से नहीं जुड़ा हुआ है। रेल एक ऐसा साधन है जो व्यक्तियों के क्षेत्र में आम गांव गरीब से जुड़ा हुआ है। आज उसको बजट एयरलाइंस के तौर पर एयरलाइन से मुकाबला करना पड़ रहा है। यदि फर्स्ट क्लास में यदि हम यहां से पटना जाना चाहें तो उसका किराया ज्यादा हो सकता है और ट्रेन का किराया ज्यादा हो जाएगा। उस दिन गडकरी जी ने अनाउंस किया कि हम आपको 4 घंटे में पटना पहुंचा देंगे, 10 घंटे में हम मुंबई पहुंचा देंगे। यदि इस तरह के कंपटीशन आपको एयरलाइन से मिल रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बन रहे हैं, उड़ान स्कीम में चप्पल पहनने वाले लोग भी जो है प्लेन पे चढ़ रहे हैं, तो क्या रेलवे को कुछ नहीं करना चाहिए? और रेलवे का क्या होता रहा 1947 से लेके 2015-16 तक? क्या होता रहा हमारी सरकार बनने तक सर? पूरे दुनिया में यदि रेल बनता है, रेल लाइन बनती है, तो वो सरकारें रेल लाइन बनाती है।
रेलवे अपना पैसा खर्च करके दुनिया में भारत को छोड़कर कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां की रेलवे को पैसा भी कमाना है, 13 लाख 14 लाख एम्प्लॉय को पैसा भी देना है और उसके बाद रेल लाइन भी बनाना है। उसका कारण क्या, नतीजा क्या होता था सभापति महोदय, कि केवल जो है छोटे छोटे पैसे देके एक एक रेल लाइन आप अनाउंस कर देते थे, पिंक बुक में आ जाता था, वो 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल लग जाता था। भारत सरकार ने क्या किया, मोदी जी को यह लग गया कि रेलवे के लाइन बनाने का काम भारत सरकार का है और भारत सरकार को इसका पैसा देना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला डिसीजन जो हमने लिया कि रेल बजट को जनरल बजट के साथ मिला दिया। उसका क्या फायदा हुआ कि आज वित्त मंत्रालय लगातार हमको पैसा देती है और उसी में ये जो 20,000 करोड़ आज साफ सफाई नजर आ रही है। आज स्टेशन रीडेवलपमेंट के नाम पर अभी गांधीनगर में जो है बहुत बड़ा काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता है कि उसके लिए किया। अभी वो हबीबगंज गए थे, मध्य प्रदेश में ये बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के उदय प्रताप जी। हबीबगंज का रेलवे स्टेशन किस जमाने में कैसा हुआ करता था, साफ सफाई नहीं होती थी, प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट नहीं होता था, गाड़ियां जो है छुक छुक चला करती थी। आज पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन, आप समझिए लगभग 80-85% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और हो सकता है कि हम साल 2 साल के अंदर जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लें। ग्रीन एनर्जी की तरफ ये देश जा रहा है और उसी के लिए 100 ट्रेन जो हमने आजादी के 75 साल में 75वें महोत्सव में 75 फास्ट ट्रेन चलाने का, क्योंकि किसी भी छोटे से छोटे शहर के लोगों का, छोटे से छोटे गांव के लोगों का, वंचितों का, शोषितों का, दलितों का जो एक सपना है कि वो फास्ट ट्रेन में चले, उसके लिए यदि हमने पैसा मांगा है 20,000 करोड़ रुपया, यदि स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए मांगा है और यदि फास्ट ट्रेन बनाने के लिए आया है, क्या ये पैसा नहीं देना चाहिए? क्या आप ही की तरह जो है हम लोगों को परेशान करते रहते कि 20 साल 25 साल में अपने को ट्रेन बनाना है, ट्रेन चलाना है? तो मेरा यह कहना है कि इस तरह के जो तकरीर हम देते हैं सर, ये बहुत ही बुरी बात है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो बजट है, रोटी कपड़ा और मकान, मैं माननीय मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं सर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसमें 7,000 करोड़ रुपया इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में, यदि 2022 तक यदि लोगों को मकान देना है, 2024 तक यदि सबको नल का पानी देना है, तो उसके लिए पैसा देना है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 7,000 करोड़ रुपया रखा है। मैं अब आपको आऊंगा एक विषय में 5-7 मिनट में सभापति महोदय खत्म करूंगा। एक जो इसमें बजट में हमने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के लिए लगभग 4,500 करोड़ 4,300 करोड़ के आसपास जो है इस बजट में हमने प्रोविजन किया है। और अभी यहां बुंदेलखंड के साथी बैठे हुए हैं और सभी साथियों को, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पहला जो केन बेतवा लिंक है वो कैबिनेट ने पास भी कर दिया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोगों की तरफ से मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। ये इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर ये बहुत पहले से प्लान चल रहा था सर, मैं ये नहीं कहता कि प्लान नहीं चल रहा था। नेहरू जी ने भी इसके ऊपर प्रयास किया, राव कमेटी बनी थी, राव कमेटी की रिपोर्ट आई। लेकिन यदि किसी ने सीरियस काम इस देश में यदि शुरू किया तो वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया सर। सुरेश प्रभु जी जो यहां रेल मंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बना और टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट दिया सर 2003-4 में, और कई एक नदियों के बारे में कहा कि कहीं बाढ़ होता है, कहीं सुखाड़ होता है, तो अपने को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पर जाना चाहिए। क्योंकि जो बुंदेलखंड की मैंने बात की सर, वहां तो पानी ही नहीं है, पीने का भी पानी नहीं है, सिंचाई का तो छोड़िए आप, जानवर ऐसे ही बिना पानी के कई एक बार जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, बुरा हालत है। रिपोर्ट आ गई, संजोग से 2004 में वाजपेयी जी की सरकार चली गई सर। 2004 से लेके 2014 तक एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का जो है उदय हो गया सर, और कांग्रेस पार्टी के युवराज आ गए। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। उन्होंने वन फाइन मॉर्निंग उसको फाड़ा और कहा कि ये इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर जो है, ये जो रिवर है, ये संभव ही नहीं है, इसको करना ही नहीं है। और मैं 2 लोगों का, यदि ये बहस करना चाहेंगे तो मैं 2 लोगों का स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा सर। बड़े सीनियर नेता रहे, अब नहीं है, माननीय करुणानिधि जी। उन्होंने करुणा सीनियर नेता रहे, मतलब अब नहीं है वो जी,
करुणानिधि जी ही कह रहा हूं, मतलब सम्मानित है, उन्होंने 2011 में राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी सर, और उन्होंने कहा कि आप जो ये कर रहे हो ये गलत है, इस देश के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो है सबसे जरूरी है। और दूसरे उस वक्त के जो तत्कालीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सर, शरद पवार साहब, उन्होंने 3 मीटिंग की राहुल गांधी को समझाने। राहुल गांधी कुछ नहीं थे सर, क्योंकि कांग्रेस को शासन, सत्ता, पार्लियामेंट पर भरोसा ही नहीं है। यदि आपको ध्यान हो, उस वक्त सर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बन गई। हम लोग भी जिस पार्टी से हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी से सर, उनको किसी पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ कहना होता है वो आदेश कर देते हैं सर। निशिकांत जी दुबे, मैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहा हूं सर, मैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो भारत सरकार पैसा दे रही थी सर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के लिए, प्लीज बैठ जाइए। मैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहा हूं सर, जिसके लिए कि हम पैसा देते थे, टैक्स पेयर का पैसा जाता था, इस पार्लियामेंट से बजट पास होता था सर। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने क्या क्या किया सर? आरटीआई आ गया। आरटीआई से क्या फायदा हो गया सर? क्या आपको लगता है कि आरटीआई ने सब कुछ ठीक कर दिया? क्या हमको नहीं लगता कि हमने जगह जगह पर ब्लॉक में एक दलाल पैदा कर दिए? कौन सा ऐसा चीज है जो आरटीआई ने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया? कौन सी ऐसी चीजें हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट से आमूलचूल परिवर्तन हो गया? कौन किसानों को 4 गुना पैसा देने को तैयार नहीं है? लेकिन सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के कारण क्या स्थिति हो गई आज? कोई भी प्रोजेक्ट 2 साल 3 साल के पहले नहीं पूरा होता है। क्या मनरेगा में करप्शन नहीं है? आज यहां जितने बैठे हुए हैं सदन के लोग, अपने सभी दिशा कमेटी के चेयरमैन हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर वो पूछें कि क्या मनरेगा से जो है करप्शन को हम नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? किस तरह की चीजें हम करना चाह रहे हैं? तो मैं वही कह रहा हूं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है सर, मतलब, और जिस पर कि भारत सरकार बहुत सीरियस है, उसके लिए ना उन्होंने शरद पवार साहब की बात मानी, ना करुणानिधि जी की बात मानी। बड़े से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहां कहावत है सर कि अभिवादन शीलस्य और नित्यं वृद्धा पसे बिना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या बलम। यदि आप बड़े बुजुर्ग का आदर करेंगे, उनके बातों का मान और सम्मान करेंगे, तो आपका आयु, विद्या, यश और बल सब बढ़ेगा। आज यदि कांग्रेस डिटोरिएट हो रही है तो उसका कारण यही है कि उसने बड़ों का कहना मानना बंद कर दिया। इसी कारण से ये इतनी बड़ी पार्टी जो है आज लीडर ऑफ द पार्टी नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना पा रही है। उसने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर नहीं बनाया सर। जब 2014 में माननीय मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट है, हमको गांव गरीब किसानों तक, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना है, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर देना है, और आज ये बड़ा प्रोजेक्ट होया, और इसीलिए इस बजट में उसका प्रोविजन है। मैं अंत में सभापति महोदय, क्योंकि हमारे बहुत स्पीकर हैं, मैं 3-4 चीजें जो है आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड्स और ग्रांट्स में कई एक बातें नहीं होती हैं, और जो मेरा बहुत ही इमोशनल विषय है, और यहां संजोग से मेरे मित्र शिव कुमार उदासी साहब यहां बैठे हुए हैं, कि क्रिप्टो करेंसी जो 2013-14 से लगातार उस विषय को उठा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा विषय है, माताब साहब भी हैं, हम लोग फाइनेंस कमेटी में 13-14 से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत हेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसका कोई मालिक नहीं है सर, और कई एक चीजें टेक्नोलॉजी है जिसको कि हम रोक नहीं पा रहे हैं। इस देश में मान लीजिए ड्रग्स हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो ड्रग्स हम रेगुलेट नहीं कर देंगे। हवाला से पैसे का लेन देन होता है, ये पूरी दुनिया जानती है सर, लेकिन हम हवाला को रेगुलेट नहीं कर देंगे। यदि पोर्नोग्राफी को हम बैन नहीं कर पा रहे हैं, यदि टेक्नोलॉजी को बैन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम रेगुलेट नहीं कर देंगे सर। 4 लगातार जो 4 आरबीआई के गवर्नर रहे हैं सर, चाहे वो सुब्बा राव साहब हैं, चाहे रघुराम राजन साहब हैं, चाहे उर्जित पटेल जी हैं, चाहे शक्तिकांत दास जी हैं, वो लगातार अलग अलग फोरम पर ये बोलते हैं कि चिट फंड कंपनी है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से इस भारत सरकार से आग्रह है कि क्रिप्टो करेंसी का बिल लाने के पहले मुझे लगता है कि एक बार असेसमेंट करना चाहिए, और इसको यदि हम बैन कर पाए तो देश के लिए बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। दूसरा, हाउस में चर्चा भी होनी चाहिए जिससे कि सबों के व्यूज आ जाएं। दूसरा, जिस इलाके से मैं आता हूं सर, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए एक तो हमने 115-117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, उसके डेवलपमेंट के काम चल भी रहे हैं, लेकिन जो नया बजट आने वाला है, यदि उसमें अलग से हम बजट का प्रोविजन कर पाए तो मुझे लगता है कि उन जिलों के साथ एक न्याय हो पाएगा, और वो भी एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है उस पर वो जा पाएंगे।
तीसरा जो हम लगातार क्वेश्चन पूछते हैं सर, उसमें एक चीज जो सामने आती है, जिस राज्य से मैं आता हूं, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम हो, चाहे टूरिज्म का काम हो, चाहे एनएच का काम हो, हम पैसा देते हैं, केंद्र सरकार पैसा देती है, लेकिन वो राज्य सक्षम होकर काम नहीं करती। कहीं डीपीआर नहीं बनता, कहीं करप्शन होता है, कहीं चोरी होती है। और इस कारण से केंद्रीय योजनाएं सभी राज्यों में, जहां की राज्य सरकारें बहुत मजबूत हैं, वो अच्छा काम कर लेती हैं, लेकिन जहां हमारी जैसी सरकारें हैं, जो करप्ट सरकार है, वो नहीं कर पाती है। इस कारण से सफर होता है, आगे बढ़ जाता है कोई इलाका, जैसे महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ गया, गुजरात आगे बढ़ गया, तमिलनाडु आगे बढ़ गया, कर्नाटक आगे बढ़ गया। लेकिन हम जो ईस्टर्न इंडिया के लोग हैं सर, खासकर मैं अपने झारखंड की बात करता हूं, तो जो केंद्रीय योजनाओं का असेसमेंट है, उसको एक प्रॉपर यदि कर पाएं और उसमें सांसदों की भूमिका को प्रभावी कैसे बनाया जाए, दिशा कमेटी से बहुत कुछ होता है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए अपने को मैकेनिज्म जो है तय करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी सार्थक सरकार आई है और ये बहुत कुछ करना चाहती है। और एक चीज है जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब जब औरंगजेब आते हैं तो शिवाजी आते हैं, उसी तरह से जब देश में इस तरह के हालत हुए तो मोदी जी आए। और हमारे यहां रामायण की एक चौपाई है सर कि जब जब होई धर्म की हानि, 12 ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीड़ा। लोगों का पीड़ा हरने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आई है। ये गांव गरीब किसानों के लिए अच्छा करेगी। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दुबे जी। श्री दयानिधि मारन जी। Sir, Vanakkam sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this occasion. Sir, first I would like to start my speech saying that Tamil Nadu has seen a record rainfall. This happens the third time in this last 200 years. The rainfall was similar to 2015, but because of the efficient steps taken by my Chief Minister, M.K. Stalin, we have ensured the damage was very limited. And in fact, sir, the Tamil Nadu government has asked the Finance Minister for a restoration of the amount for 3,554.88 crores, which we are yet to receive. I take this opportunity to stress upon this, and same time also to remind our BJP friends and also the Prime Minister, when some similar incident took place in 2017 in Gujarat, the floods came. Within 3 days, 500 crores was released for Gujarat. Sir, Tamil Nadu is also part of India. I appreciate the way Gujarat got the funds. We should also get similar funds, sir. It will be very appreciable, sir. Similarly, sir, I also heard upon the Finance Minister, sir, to stress upon there's a due of 4,943 crores of GST pending for states. And as you know, sir, states are losing their share with the new GST formula. I will urge upon the Finance Minister to release the funds at the earliest, sir. Sir, in the second batch of demands for supplementary grants, sir, nearly 3.73 lakh crores has been sought by the Finance Minister, sir. The House is definitely going to pass it. Sir, there are certain discrepancies or certain things, anomalies, which I like to point out. So, after much regrettable suspension, MP-led funds is back, sir. But the amount which is going to be given is only 1,153 crores, sir. I'm sure all the members will agree that we are at severe loss of face to our constituents. So for 750 members, 1,153 crores is very, very little, sir. I urge upon the Finance Minister to increase the funds for MP-led, sir. And similarly, sir, out of the 3,73 crores, 73 lakh crores, the Finance Minister has requested for 22,000 crores for Manrega. We can once again, sir, because of the COVID, long pending COVID, sir, the unemployment rate has increased. Several young youth are being jobless and are suffering, sir. Sir, and basically, if you see, sir, the latest available results of the quarterly periodic labor survey conducted by the Ministry of Strategic Programming Implementation show that unemployment rate in urban India was a level high at 9.4% in January-March 2021 quarter, sir. It also showed that 23% of the urban youth
in the age of 15 to 29 are remaining unemployed. So this is a very serious matter, sir. I'm sure the finance minister should take more effort. I'm sure in the coming budget she'll address this issue much more wisely, sir. So, if the 3,73,000 crores, which the lakh crores the finance minister sought, 22,000 crores for Manreka. Sir, but hoping 64,000 crores is for Air India. So one wonders, yes, a commitment made to Tatas that Air India will be handed over debt-free. So Tatas are won the bid for 18,000 crores. A secrecy claim. Who's the second bidder? Who's the third bidder? We don't know. Is as secret as the PM cash funds? We all want to know who are the other bidders. And only what we read from the newspaper, sir, it claims that the other bidder was SpiceJet. And one wonders where they had money, because already the courts are putting the SpiceJet in the bench, saying that they have to wind up the companies because they are not paid up the creditors. But, sir, who was the... Sir, I'm talking. Wait. Nine. If you want to give it to me, give it to me. So, out of the 18,000 crores, sir, Tata's is paying only 2,700 crores as cash. Yeah. So, remaining 15,000 crores has been taken as absorbed as debt. And the government of India is giving 68,000 crores to wipe out all the debt. So, Rishikant Dubey ji has been always stuck in the memory loop. So, it's 7.5 years since your BJP government is ruling the country. You still want to go to 2004, 2011. Why can't you start? We are in 2021 and the end of it. Sir, every time you want to start blaming from Jawaharlal Nehru to Indira Gandhi to Manmohan Singh, when are you going to own your responsibility? In 7.5 years, you could not turn a company around, or you made it worse. So it's a question. I'm not asking this question. Any common man with limited knowledge of economics might ask this question. When you are interested in putting 68,000 crores, why can't you put the remaining 18,000 crores and take the company and keep it running profitably? This is our national jewel. Why can't we do it, sir? Sir, a lot of doubts linger in the mind. Every time I enter the parliament, I see the 20,000 crore Central Vista project done by the Tatas. I do not know what is the understanding. Whether probably even this 2,700 crores is coming from the government to the Tatas, and Tatas are paying it the other way. So it's just a doubt. As a common man, I'm just asking, sir, if I'm right, a lot of questions will be raised. No one stays in the government permanently. Everyone changes, and everyone changes. These all will come to question. Sir, if Tatas are the buyer, they have a past history of buying VSNL. And even the VSNL, sir, if I remember correct, they're supposed to hand over the excess land to the government. I don't know, the finance minister can answer, or if she wishes to not to answer, but whether the excess land which was part of VSNL, which they have closed and sold it for a profit, will it come back to the government or not? Sir, again, sir, Mr. Rishikant Dubey had spoken much about the fuel pricing. I'm glad they have now the guts to talk about fuel price, because they are reduced 10 rupees. After how many years of us shouting that you please reduce the cess, please reduce this, people are suffering. Sir, now they are ready to address the elephant in the room. Sir, what is the problem with you? Sir, today you made lovely advertisements saying that Prime Minister Modi is wiping the tears of the poor village women. She not use wood and they cry with smoke. Now give your subsidies, give your entitlement for subsidized LPGs. And all of us believe the Prime Minister, and including myself, I gave it my, so whatever subsidy we gave it up and went for commercial or for gas cylinders. Sir, that time it was 490 rupees. Today, a domestic gas cylinder costs 915 rupees. Earlier, sir, with cooking, only the head of the family, the lady was crying. Now the entire family is crying. Sir, the commercial gas has gone to 2,234 rupees. Sir, and they are giving subsidy, sir, 162 rupees is in 10 installments. Sorry, in 12 installments. Great, sir. So are giving installment 12 rupees a month?
but the price has gone to 953 rupees. Sir, Minister, sir, I just started. Sir. I just started. I'm the only speaker, sir. I'm the only speaker. Only speaker. So, Minister of State for Finance, Pankaj Chaudhary, has stated that the collection from the levy of central excise duty on petrol and diesel increased from 1.78 lakh crores in 2019-20 to 3.72 lakh crores in 2020-21. This is April 22, April 2022, March 20. The total amount of tax given to state governments for the corpus collector under the central excise duty for the year 2020-21 is only 19,973 crores. The remaining money went to the center. So this is all the questions I'm not asking, sir. The common man is asking. Why can't you reduce the price? Sir, there's one more demon which we have to see, sir. So the finance minister is here. She brought the bill of the government, the insolvency in the bankruptcy code will solve the NPA crisis and will also address the disease. But we see, sir, a major fraud is happening in the disguise of the bankruptcy code, sir. Sir, large of public money, bank money, is being written off. Sir, if you take a list, which has come, as I say, the finance is aware, sir, the haircuts which the buyer companies are getting is unbelievable. Bhushan Power, sir, 50% haircut received by JSW, Tata Steel, JS Steel and Tata Steel, sir. Alok Industries, sir, was a COC accepted a bid by Reliance Industries for haircut was 83%. Sir, and similarly, if you go on, there are so many, sir. I can say as ABG Shipyard, 80%, sir, and Monarch Parts, 70%, sir, and so on. So many companies are going for the bankruptcy insolvency, sir. Sir, the finance minister earlier made a comment, sir. I would like to remind her about the comment, sir. Sir, the committee of creditors take a decision, and it's all based on the percentage of the loan they are given to the companies. When they are taking the company, it's mostly the banks. So I wonder, how can banks give a haircut of 70%, 80% to their in such a situation? Does the bank chairman have so much of power, or is it phone banking, sir? Are they getting a phone call from someone to accept to these kind of banking? Sir, and irony, sir, I should say, sir, most of these companies are being bought by their same owners in a different name. Basically, they are writing off their complete debt and getting the companies back. Sir, and one of the industries is, sir, it's Siva Industries, sir. He gets nearly 95% haircuts. And it's happened, the NCLT itself asks, how can the bank take such a serious haircut? And you won't believe, sir, the buyer who had given the offer to the company was none other than the person Siva's father. He himself buys the company back. And the irony is that, sir, he has agreed to pay 5 crores and the remaining amount in 6 months, sir. So this is the kind of things happening, sir. I'm sure what you did in a good intention is being misused. Sir, this will come to haunt you. Sir, a farmer, when he takes a loan, he doesn't get 95% haircut, not even 10% haircut. When children, parents take loans for education, they don't get any haircuts. The bank doesn't write off their loans. But, sir, their photographs are put in public. They are insulted, and most of the farmers commit suicide. Sir, but these people, this government, seems to be patting the rich. Not patting, pampering the rich. Sir, and only 5 or 6 of them where I can count with my fingers. Only though they are getting their companies exempted from these national bankruptcy codes. Sir, I can also say, sir, there's another group called, sir, Videocon Industries, sir. Sir, 64,838 crores was the amount, sir. But the Vedanta group took the company for 2,962 crores. So I can give on keeping a list of so many other companies which are there. Kindly Sir, conclude. No, I'm concluding, sir. I'm the only speaker, sir. All I'm asking, sir, when these banks are giving a haircut
to these companies. Who is eventually paying it? The banks are paying it. How does the bank pay? It's the public money. Isn't this a big scam, sir? The very idea is that to save the company, but you're killing our public banks. So I think the time has come for the finance minister to look into it. So basically, see, if a father of the person who's going insolvent is able to buy the company, what is the enforcement department doing under your wing? Are you encouraging it, sir? Or is it phone banking? And to top it all, sir, consultants have come. And consultants are not ordinary consultants, sir. They are all Rajagurus who are all sitting in the board of directors of RBI. They have Guru associates who sees all these companies. They are the consultants and they are controlling. They are having hand in glove with the banks. I don't know what is happening, sir. Of course, yes, I'm talking about Mr. Gurumurthy only. Yes, sir. Sir, finishing. I'm winding up. Sir? Yes. Yes. एक और है speaker. No, I'm the so only kindly speaker. conclude. No, I'm the only speaker. You are the only speaker? Yeah. Okay, no problem. So, sir, in this situation, sir, I'm warning the government, as a public when I see, when I'm not getting, as an individual, as a student, as a farmer, I'm not getting any haircuts. I'm not getting any. Sir, if you see this, sir, the kind of companies which have got their thing, you can say Vijay Mallya is a saint. Because Vijay Mallya borrowed 5,000 crores, the banks wanted 9,000 crores without haircut, but the Prime Minister said they got 14,000 crores of Vijay Mallya. He has paid all the money. Yeah, in fact, 3 times over. But these companies are taken over by the previous owners in different disguises. Sir, I'm bringing this point to the Finance Minister's view. I know sometimes we do something in good intentions, but these intentions are being manipulated. So when the things are manipulated, sir, in English, it's simply called corruption. Thank you. Thank Sir, you very much. I'm just concluding. It's simply called corruption. A large-scale corruption is taking place. And I wonder, when will the finance minister will wake up to see this, ensure that the public money in the banks are not taken away or given away to the rich. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Professor Saugat Roy ji. Sir, I shall be brief. I rise to speak on the second batch of supplementary demands amounting to rupees 3.83 lakh crores, of which the outgo is rupees 2.99 lakh crores. The rest will be made up by savings of the government. But we may take it that by the end of October 21, already 52% of full year expenditure target has been completed. So it is highly unlikely that fiscal deficit will exceed the budgeted 15.1 lakh crores at the rate which spending is going on. One reason is also that substantial portion of ambitious F2022 disinvestment have faded. So ultimately we'll land with a bigger fiscal deficit. Now if we look at the supplementary budget, sir, there are 4 big ticket items. Fertilizer subsidy, 43,430 crores. 2 pending export promotion subsidies, and then Air India, 62,000 crores, and expenditure towards food storage and warehousing, 49,805 crores. Now, if we really look at it, this is a budget for disinvesting Air India. Before I go to that point, I may remind Mr. Nishikant Dubey of a mistake he made. He said the fertilizer subsidy we are giving for imported is for nitrate, etc. No, it's mainly for phosphatic and potassic fertilizers, not for nitrate fertilizers. Number 2, Mr. Dubey also said
that Mr. Modi is the greatest democratic prime minister, I may ask him, whom did the prime minister ask when he put the whole nation in a queue during his ill-conceived demonetization, which recovered no black money? And whom did the democratic prime minister ask when he introduced the 3 farmers' bill, which he had to withdraw after a year of agitation and 700 farmers dead? So let us not talk of Narendra Modi and democracy. देखिए सर, he has become a professional heckler. उधर से जाके भाषण देगा, इधर आके डिस्टर्ब करेगा, and you allow that every day. If his seat is there, why does he go and sit there? Why can't you enforce that? Every day he comes here to heckle and disturb the कौन सा opposition. नियम आपका? ये क्या बात है? उनका he's आप लोग raising का a point favorite of order. people है, favorite children है. Why does he change his seat to heckle the opposition? Why? The debate अधिकार है ना? ये तरीका नहीं है. अधिकार है मेंबर का. grants Point of order, chairman sir. Point of order तो मेंबर का अधिकार है. constituting same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying. मैंने जानबूझकर सर शशि थरूर साहब ने डिमोनेटाइजेशन के बारे में बोला, मैं 1000 चीजें बोल सकता था, मैंने नहीं बोला सर, क्योंकि इसके स्कोप में नहीं आता है. इसीलिए ये जो पीएम के बारे में बोल रहे हैं और डिमोनेटाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं, ये स्कोप नहीं है, इसीलिए इनको नहीं बोलना चाहिए सर. दैट्स ऑल. सकते हैं. ये पार्लियामेंट में पीएम इज द लीडर ऑफ द हाउस. क्या बोलता है इससे? छोड़ो, ठीक है, होएगा. प्रोफेसर सोगत राय आप बोलोगे. चाकरी रखे से ठीक है. Sir, now I'll mention about Air India. 62,000 crores is being given almost towards Air India. Now, how is the money going? Air India had a total debt of 61,562 crores. Now, Thales, that is a Tata company, will take over 15,300 crores. Remaining 46,262 crores will be transferred to AIHL, that is New Air India Asset Holding Company. So, आप देखिए, Tata will only pay 18,000 crores. What they will get, and they will take debts of 33,000 crores. Tata is getting Air India as if we are catching their feet and begging them to take it. And with this, government is spending 62,000 crores. Can you beat that? You request Tata, please take over. We shall give all the money. We shall take all the debts. You please save us and run Air India. Pandit Jawaharlal Nehru had created the national carrier Air India and Indian Airlines. These people are selling the family silver. And in history, the present finance minister will be known as the biggest saleswoman, because she is selling not only Air India, she is selling 2 banks, 1 insurance company, all nationalized during Indira Gandhi's time. She is selling BPCL. She is disinvesting the biggest insurance company, Life Insurance Corporation of India. Is this? Huh? Vizag steel plant also. And Vizag steel plant, our Andhra friends are saying, she is also selling. So हम कहते हैं जो बेचते हैं ज्यादा उसको बेचू बाबू कहते हैं. उसका क्या नाम फेमिनिन जेंडर में होगा हमें पता नहीं. सरकार बेचू बाबू का सरकार है. Sir, what I want to say is that the economy is in a bad state. Very bad, very bad. 2020-21, we had a contraction of 7.4%. They are saying that economy is showing green shoots. The finance minister went to some place, Chandigarh or somewhere, to attend a party function. She said, why the economy is improving? GST and direct tax collection
that is rising. Now, why is this rising? This is rising due to inflation. The cost of same thing, which used to be sold for 10 rupees, has become 12 rupees. So you take GST out of that, you will get more money. What is happening is that inflation is driving their so-called revival path. And this will ultimately land the country in a very difficult situation. Look at the price rise, sir. Sir, you are still a practicing doctor, surgeon in Ahmedabad. You know, you have to go to the market, you are not a minister. Go to the market and find out about the prices. Leave aside fuel, leave aside LPG. What is the price of vegetables? What is the price of edible oils? The inflation has hit the middle classes, fixed income people terribly. So in this situation, it's a strange situation because the minister, I have read all her speeches. She has not given any explanation as to when so many people lost their jobs due to the pandemic. How is that the share market is rising? Stock market is rising because the big companies are functioning with lesser people. That is giving them more profit margin. And if I may say so, without mentioning any individual's name, it's only 3-4 people in India, 3-4 companies which are reaping the benefit of this government. In the name of liberalization, they are handing over the country's economy assets. They are selling the family's silver. Ultimately, the Adanis will have all the airports, Tata will have Air India, and Minister will also do the same thing, sir. You as an independent doctor, you must intervene, put your voice that I don't like country's assets being sold to Tatas, Ambanis and Adanis. They are not the arbiters of the nation's Thank you very much. So that's why Thank you. supplementary budget we have to pass. But the country has come to such a pass. The economy has come to such a pass. Contraction of 7.4% last year, no signs of positive recovery yet. And unemployment is showing no signs of receding. That's why, sir, Thank you. I totally criticize the government and its attitude of rampant sale of public sector assets Thank you very much. to the few industrials. Thank you, Professor. Shri P.V. Mithun Reddy ji. Thank you, sir, for letting me talk on this. At the outset, I would like to congratulate our Honorable Finance Minister for having put all her energy. She has led very dynamically with a lot of enthusiasm to put the country's economy back on a revival trajectory. And I would also point out that quarter-on-quarter GDP growth of 8.4% was reported on constant prices. And further, for the first half of this financial year, a GDP growth of 13.7% was reported on the corresponding period of the previous year. And even the GST collections have substantially increased year on year. I respect what the senior Dada has spoke, but I think the rise in inflation and the rise in GST collections, there's a lot of difference. GST collections have definitely increased, and we should definitely appreciate the Honorable Finance Minister, because if something goes wrong, definitely we point out things at her. When something is right, I think she needs to get the credit. This is in the national perspective. But I would like to talk about my state's issues, sir. Before I go into that, I would like to recall that both the NDA and UPA came together and split our state. State bifurcation was thrust on our state, even though we didn't want the bifurcation, people of Andhra didn't want. But that's a old story, sir. But during bifurcation, two things were promised to us, sir. We call the Parliament Temple of Democracy. Every word has to be respected here. The previous Honorable
ex-Prime Minister Manmohan ji and the current Honorable Prime Minister Sri Modi ji, both of them promise various things, sir. And I think this is one of the few issues where NDA, UP have come together and without any dispute they've passed this act and they've split the state. So I would like to recall, sir, that special category status was promised to us, sir. I'll tell you why it was promised also, sir. Sir, on the day of when the state was split, if you see the state's per capita, state's own revenues, for Telangana it was 15,454 rupees, and for Andhra Pradesh it was 8,979 rupees, sir. There's a huge difference, and we had unviable finances, and special category status was promised, sir, both in the house and off the house, sir. So we demand the government should keep up its word, because we are really worried about the future of our state. We were given unviable finances. We don't have a way out, sir. And even AP Reorganization Act, various promises were made in the AP Reorganization Act, and the tenure of the AP Reorganization Act is for 10 years, and it's almost 8 years which have passed now. There's just 2 years left. There are various promises which have to be fulfilled, sir. Before I go into the details of the AP Reorganization Act things, I would like to tell a story, sir, I mean, if with your kind permission. So once, just to point out the attitude, sir, once there was a great king who wanted to help a state, sir. So he called all his wise men and he said, work out something and you help that state. So the king, once he told this wise men, the wise men sat together. They said, okay, we will give you a painting of a majestic tiger so that you will overcome all your troubles and things. It will be a very valuable asset, sir. So the wise men sat and they said, okay, the tail should not be so long, make it a little bit short. And they said, one other wise man said, so many stripes are not there in most of the tigers, so reduce the stripes. And one more person said, make the ears short. And one more wise man said, the paws are big, make them small. And finally, the people were anticipating what was there, and there was a big unveiling ceremony. Finally, it was unveiled. They found a cat, sir. It was not a tiger. It was a cat. I just want to tell this story because I want to point out the attitude, sir. All the promises made in the AP Reorganization Act, they're finding one way or the other, sir. There were some irresponsible answers, which I don't want to mention the name. They were saying the tenure of AP Reorganization Act is for 10 years, and it's only 8 years past. Still, we have 2 years to fulfill, sir. What is this sort of answers, sir? We don't accept this sort of answers. Even Polavaram project, they find n number of reasons saying a lot of funds are blocked. Even the revenue deficit gap, there have been a lot of issues which have been pointed out and not fulfilled. Even Petro corridor, now we've been asked to pay viability gap with thousands of crores upfront for setting up the Petro corridor. Even the backward districts grant, which was promised to us, it is very meager, sir. We were promised in the lines of Bundelkhand package or anything. We don't understand why we are being treated like this, why Andhra Pradesh is being treated in this most pathetic way. So we request, sir, we request the government, we request the Honorable Minister, we request the Council of Ministers, even the Honorable Prime Minister to keep up what they have promised, sir. It's not just the NDA, even the UPS, sir. I want the attention of the House because both of them promised, both of them split our state, but now things are happening. Now we are not in a very good situation. So we want the government to help us out in this situation, sir. I would like to point out about the Polavaram project, sir. The Polavaram project was started by late Honorable Chief Minister Y.S. Rajashekhar Reddy. It was designed for 194 TMC. And the project was the execution started before the AP Reorganization Act was announced and before the state was split. The design was for 194 TMC, sir. But if you see, after the AP Reorganization Act was passed, and I think I should read out what was written in the AP Reorganization Act also, sir. It says the Polavaram irrigation project is hereby declared to be a national project. And the other point which I would like to read out is the central government shall execute the project and obtain all requisite clearances, including environmental, forest, rehabilitation, and resettlement norms. Sir, what does this mean, sir? It means that central government will execute this project, and whatever was designed, whatever was planned for 194 TMC, it will be executed, and the whole payment will be made, all clearances will be done. What happened after that is really, I think it's really pathetic, sir, because I want to
bring to the notice of the House, sir. After a while, they said, like, we will not permit drinking water component. No other national project in the country, there has been a discrimination for drinking water and irrigation component, which is not fair. And even the revised cost estimate, though it was approved by Technical Advisory Committee, and even the revised cost committee have approved for 55,656 crores. They said, no, we will accept only the one earlier, and it has not been approved in the cabinet. Sir, how are we concerned with this, sir? You clearly promised that we will finish the project at 194 TMC. Whatever was being executed, it was not changed after the Reorganization Act was done or after the state was split. It was designed for 194 TMC, sir. It's basic logic. But why should we go through all this, sir? Why is the central government not executing this project? I agree, sir, they have given to the state, but it was done by the NDA, and when TDP was part of them, I don't know what transpired between them, and it was agreed that state will execute, sir. But now the people of Andhra Pradesh are suffering. Polavaram project is the lifeline of Andhra Pradesh. Through yourself, I request the Honorable Finance Minister, Madam, kindly permit the water component, Madam, because no other national project there is a discrimination for water component and the irrigation component. So kindly permit this so that the project will not be hampered. And we also request, ma'am, I know you have constraints, it has to go to the cabinet. I also request you to consider sending the revised cost estimate of 55,000 crores to the cabinet so that the project is executed, ma'am. Sir, and I would like to talk about the other things also, what is there, sir. There's inadequate coverage of beneficiaries under National Food Security Act for Andhra Pradesh. So if you see the national level, 75% of the rural population and 50% of the urban population are covered under targeted public distribution system. But for our state, sir, though our GSDP is much lower than various other states comparatively, we have only 61% of rural population and 41% of urban population covered under targeted public distribution scheme. For example, you compare with Karnataka, Gujarat, Maharashtra, they all have above 75% or 76%, but we have only 60%. So I would like the government to take a note of this and kindly help us out in this. And a request for pending amount of almost 1,700 crores is pending with civil supplies. It's the 10% withheld amounts for the past 6 years. Almost 1,700 crores is pending, and we put several requests for this. And there's one more promise made on the floor of the House. It says that resource gap funding by Government of India for the first year after the bifurcation took place. So even the CAG has audited and given that they've pegged it at 16,078 crores, and there was another other things. So the total resource gap for that year was 22,948 crores. But subsequently, they came up with a new concept of a standardized expenditure, and we were permitted only 4,000 crores, 4,117 crores. So through yourself, I request the Honorable Minister and the government, sir, to consider this and help us out. And recently, floods have devastated 4 districts of Andhra Pradesh. So there was huge damage. Almost, if you see, like 44 people died. Even a SDRF constable died, and there were like 1,400 villages and almost 196 mandals which got affected, and there's huge damage which has happened. So I request, through yourself, I request the government to release an amount of at least 1,000 crores as interim relief, and also depute interministerial central team to assess the damage and losses caused by the heavy rains. So there were unprecedented rains, sir, not even like, I think in the last 200 years, these were the most heaviest rains. And a lot of tanks got breached, a lot of people lost their lives. So I request the government to act in time, sir. If they help us at a later date, it will not be much useful, because right now it's the time for them to help us out. And I also make a request to the government regarding Visakhapatnam steel plant. So through yourself, I request the government not to privatize Visakhapatnam steel plant, sir, because it is a very good asset. We know there are losses, but it has a huge land bank, and provided we give them a captive iron ore mine, sir,
it is not a loss for the government to give captive iron ore mines to Visakhapatnam steel plant, because when we auction iron ore mines, there is an element of profit for the contractor and there is a percentage to the government, sir. But when the government allots to Visakhapatnam steel plant, the complete profit is transferred to the government subsidiary. Visakhapatnam is, of course, a government asset, and the valuation of the asset also will go up. We can actually restructure all the finance. I mean, we can do a very good financial restructuring, and I think it will be a very profitable asset, sir. So we request the government to reconsider and not to privatize. Our party demands that the Visakhapatnam steel plant is not privatized, and the government should run the Visakhapatnam steel plant, sir. And I will also like to bring to the notice of the government that post-bifurcation, we don't have tier 1 cities, sir. We have all medium-sized cities. So we are not getting enough investments in the medical sector. We suffered in COVID, sir. Our patients had to go to Hyderabad or Bangalore or Chennai for better treatment. We had very few hospitals. So our Honorable Chief Minister has come up with 13 new medical colleges and hospitals, because there is no other option. When private investment is not coming, the government has to step in and do. So even the Honorable Prime Minister has announced that the Government of India will sanction 1 new government medical college for every uncovered district. So I request, through yourself, I request the Honorable Minister and the government, sir, so to help us out in the construction of these medical colleges. And I would also like to bring to the notice of the Minister that she has that cryptocurrency, whatever regulation is being done. I would also know. I'd also like to understand what is the what regulation or what's the government doing to regulate these non-fungible tokens, because it is also it also needs to be regulated. And in the end, sir, I request the government, sir, to increase our MP lads, because MP lads are most effectively used when we go into the constituency. We can help people then and there. We don't need, it cuts down the red tape. So the amount we increase is directly going to go into the, going to help the public, sir. So through yourself, I request the Honorable Finance Minister to consider increasing MP lads. And in the end, I request once again, I request the Honorable Finance Minister and I request the government, I request even the Prime Minister to be sympathetic towards Andhra Pradesh. Please help us out. We have suffered enough, and the tenure of the AP Reorganization Act is just 2 more years. So kindly help us out. Thank you, sir. Thank you very much. Shri Srikant Shinde ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने की अनुमति दी। आज हम 3,73,761 करोड़ का जो एप्रोप्रिएशन बिल है उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सरकार की तरफ से पहले वक्ता का भाषण सुन रहा था, जहां उन्होंने बहुत सारे आंकड़े हमारे समक्ष रखे, और उन्हें सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि देश में सब सुचारू ढंग से चल रहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए और उन्होंने कहा कि भारत का हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना अच्छा है कि यूएस को भी हम पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि ऐसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए डॉक्टर्स तो है, डॉक्टर्स के कारण ही आज कोविड के कारण हम कोविड को हरा सके। उनके लिए एक पंक्तियां, 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। तुम्हारी फाइलों में यस, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। बिल्कुल सेना के ऊपर एकदम जाता है, महाराष्ट्र के ऊपर। वर्तमान में कोरोना महामारी में सरकार ने अच्छा काम भी किया है। मैं सभी चीजों की आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि वैक्सीनेशन में जो काम सरकार के माध्यम से हुआ है वो 132 करोड़ लोगों को टीका देने का काम किया है, जिसमें 60% जनता को पहला डोज दे चुके हैं और दूसरे डोज जो है वो 37% लोगों को दे चुका है। और इसमें बड़ा काम जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट जैसे महाराष्ट्र में जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने किया है, कि जिसकी वैक्सीन जो है
वो बाहर भी, भारत में ही नहीं बाहर भी हम दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में अगर एलोकेशंस की बात करें तो 49,805 करोड़ दिए गए हैं एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स फूड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। 2,900 करोड़ दिए गए हैं एक्स सर्विसमैन के हेल्थ स्कीम्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 7,000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और 1,152 करोड़ दिए गए हैं क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर एमपीलैड स्कीम्स। मैं कुछ सुझाव यहां पर मेरे रखना चाहूंगा। मैं एक डॉक्टर हूं और कोरोना महामारी में समय मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है और हमारी पॉलिसी मेकिंग में एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। इसलिए मेरे सरकार से दरख्वास्त है कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वैसे ही इंडियन हेल्थ सर्विसेज का अगर केंद्र और राज्य स्तर पर गठन किया जाए तो हेल्थ पॉलिसी बनाने में, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करने में एक बड़ा काम हमारे देश के माध्यम से हो सकता है। मुझे लगता है कि मेरे पहले वक्ताओं ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ पर स्पेंडिंग जो आज भी है जीडीपी के 1.8% और बाकी जो देश है, श्रीलंका हो 3.76 है, बांग्लादेश 2.34 है, ये तो पिछड़े देश है। लेकिन डेवलप देशों का जो यूएसए है उसका 9% है, जर्मनी का 8% है, जापान का 9% है। तो मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य जो है आने वाले 2025 तक जीडीपी के 5% तो स्पेंडिंग जो है वो हेल्थ पर हमें करनी होगी। तो ये कोरोना में जो कोरोना जैसी आपत्ति हमारे पर आई उसमें हमें बेड्स की कमी महसूस हुई, ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, इसलिए हमें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने पड़े। सरकार को अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने की जरूरत है। एक आरटीआई रिप्लाई के अनुसार 2019-20 में सरकार ने पब्लिसिटी और मीडिया पर 710 करोड़ खर्च किए हैं। एक तरफ तो सरकार हमारे एमपीलैड फंड बंद कर रही है और दूसरी तरफ सूचना मंत्री ने सदन में जवाब दिया है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने 1,698 करोड़ जो है वो सिर्फ विज्ञापन पे खर्च किए हैं, मतलब प्रति वर्ष जो है वो 600 करोड़। हम जहां भी जाते हैं वहां पर हमें हमारे प्रधानमंत्री जी के दर्शन होते हैं, पेट्रोल पंप पे जाए, बस स्टैंड पे जाए, कहीं पर भी जाए। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छे जो काम करते हैं उनकी हम, मैं आता हूं आप वहां सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्रचार किया था कि हेल्थ बजट में 2.23 लाख करोड़ है और 137% की बढ़ोतरी की है। इसको हेल्थ एंड वेलबींग का नाम दिया गया है, लेकिन जब मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े तभी रिवाइज एस्टिमेट में 78 करोड़ से 71,000 करोड़ किए गए, जिससे 10% की कटौती हुई है। तो सरकार को कोरोना महामारी के बाद मुझे लगता है कि संभल जाना चाहिए और हेल्थ पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अब सरकार को प्रचार और प्रसार नहीं, उपचार पर खर्च और ध्यान देना बहुत जरूरी है। 2017-18 में बजट घोषणा हुई कि दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने होंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 80,000 सेंटर्स मतलब 55% ही बन गए हैं। अगले आने वाले 1 साल में 70,000 सेंटर्स हम कैसे बनाएंगे, इसका जवाब भी मंत्री जी दे। इसके साथ में ही अभी हाल ही में बिल हुआ फार्मास्यूटिकल्स पे, जहां पर फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम जो 2016 में स्वीकृत हुई, लेकिन अभी तक इस योजना को शुरू नहीं किया है। सिर्फ इस योजना में हर वर्ष 1 लाख का टोकन एलोकेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्कीम को जल्द से जल्द शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नाइपर पर चर्चा थी तभी मंत्री जी ने भी कहा कि एपीआई जो मैन्युफैक्चर्ड चाइना में होता है वो ज्यादा से ज्यादा उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में होना जरूरी है। तो इसलिए ये स्कीम को आगे लेके जाना बहुत जरूरी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फार्मा मैन्युफैक्चर जो है वो भारत में हो पाए। एक और क्षेत्र जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है वो है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर।
जिसमें निवेश बढ़ाना बहुत जरूरी है। 2008-2009 फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें साउथ कोरिया ने 70% जो स्टिमुलस है वो ग्रीन मेजर्स में इन्वेस्ट किए और वहां आर्थिक विकास ज्यादा हुआ। और उसी के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स के 2009 के रिसेशन में उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लीन एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया, उसके वजह से वहां पर जॉब्स ज्यादा बने। 1 minute, Shikha ji. There are 3 speakers from your 2 party. speakers only, sir. 3 names have been given. So if you want to continue, you can continue, but the other people will not get. Only 2-3 points are left. Please. I'll complete. प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा की, जिसमें 111 लाख करोड़ का निवेश जरूरी होगा अगले 4 वर्षों में, जिससे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक पहुंच पाएंगे। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ये अवसर है कि हमारे पास इस पाइपलाइन का हम इस्तेमाल करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसमें ई व्हीकल्स, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, ग्रीन बिल्डिंग्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देने की बहुत जरूरी है, इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी है। आज भी हमारे देश में 60% उत्पादन जो है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से होते हैं। सरकार ने अच्छे प्रयास किए हैं कि जिसमें 38% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जिसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारा विश्व जो देश जो है वो विश्व में 4थे स्थान पर है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, और वर्तमान में 729 मिलियन टन ऑफ कोल भारत में प्रोड्यूस किया जाता है और अतिरिक्त 247 मिलियन टन कोल जो है वो इंपोर्ट हम करते हैं, जिससे 1.5 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज का खर्च होता है। अगर हम बाकी देशों पर देखें, नॉर्वे अगर हम एग्जांपल ले तो 25% जो है वो हाइड्रो पावर पर है, ब्राजील है जो 32% बायोफ्यूल और वेस्ट एनर्जी पर है, और इस दिशा में हमारे महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार काम कर रही है, हमारे युवा नेता जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य जी ठाकरे साहब, उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 की संरचना की, जिसका लक्ष्य है कि 1.5 लाख न्यू बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑन स्टेट रोड्स बाय 2025। मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है, इसका अनुकरण जो है वो केंद्र शासन को भी करना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एक अच्छा विकल्प है, जिसे भेज देंगे आपको। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया। टेक्नो इकोनॉमी फिजिबिलिटी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद इसमें 25 जो वाटरवेज है वो फिजिबल और वायबल पाए गए, और नेशनल वाटरवेज 53 जिसको स्वीकृति मिली थी, जो है कल्याण, ठाणे, वसई क्रीक के बीच डेवलप होना था। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मंत्री जी, जब गडकरी जी इस मंत्रालय के मिनिस्टर थे, उन्होंने इस हाउस में, इस सदन में कहा था कि 600 करोड़ इस वाटरवेज के लिए मंजूर की गए। लेकिन अभी जब मैंने मंत्री जी का उत्तर जो अभी दिसंबर 2021 का है, उसके अंदर सिर्फ 25 वाटरवेज को सैंक्शन मिला है। सर आई एम कंप्लीट लास्ट पॉइंट। 25 वाटरवेज को ट्रांसपोर्ट मिला, ये मंजूरी मिली है। उसके अंदर ये मेरा मतदार संघ में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो कहीं गायब हो चुका है, मंत्री जी के बोलने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि इसका फिर से सरकार विचार करे और इसके लिए निधि आवंटन करे। उसी के साथ में कुछ मैं बात अपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या आज हर शहर के बीच में है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके कारण सरकार ने नई नीति लाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए कि इसके बाद कहीं पर भी डंपिंग नहीं होगा। लेकिन आज सॉलिड, इसके पहले जो बड़े बड़े पहाड़ लैंडफिल्स बने हैं, उसका हम उसके लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। और बायोमाइनिंग जैसा विषय जो है उसका मैंडेट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में भी है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र में द्वारा जो बायोमाइनिंग के लिए 33 शहरों का एक प्रपोजल दिया गया है, जिसका 690 करोड़ की मांग है, उसमें मेरे क्षेत्र की 137 करोड़ की भी मांग है कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। तो उसका आप जल्द से जल्द जो निधि है उसका आवंटन करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी अभी दिक्कत है कि पहाड़ बन गए हैं, लेकिन पहाड़ को खाली अगर करना है तो बायोमाइनिंग जैसा असरदार उसके ऊपर
कोई काम नहीं हो सकता है। और उसी के साथ में और एक सजाव है, क्लस्टर पॉलिसी फॉर मल्टीपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक छोटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वो एक वायबल प्रोजेक्ट बना नहीं सकता है, वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट बना नहीं सकता, क्योंकि उसका कचरा जो डेवलप होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर 3-4 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलाकर अगर ये पॉलिसी हम क्लस्टर पॉलिसी अगर बनाएंगे तो देश के लिए और सभी म्यूनिसिपल छोटे मोटे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको मदद होगी। उसी के साथ में डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग के लिए सरकार फंड दे रही थी, वो बंद कर दी है, तो उसके लिए भी आप फिर से वो स्कीम शुरू करें। और मेरा लास्ट आखिरी पॉइंट जो है वो एमपी लेड फंड्स पे है। अभी आपने भी उसके ऊपर चर्चा की कि एमपी लेड फंड जो है वो बढ़ा दिए जाए। और उसी के साथ में मैं सीएसआर पे कुछ कहना चाहूंगा कि सरकारी पीएसयूज जो है वो सरकारी पीएसयूज के अनस्पेंड सीएसआर बहुत बड़े प्रमाण पर है, और अगर उसको अगर हम यूटिलाइज कर सके तो एमपी लेड के साथ सीएसआर यूटिलाइजेशन करके हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उसी के साथ में सीएसआर फंड डाइवर्ट, बहुत सारी कंपनियां, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमआईडीसी है 2 जगह पर, तो वहां पर बहुत सारे बड़े पैमाने पर सीएसआर को डाइवर्ट किया जाता है, जो कि उनका ही खुद का एक एनजीओ होता है। और वो सीएसआर जो जहां डाइवर्ट करते हैं, जहां वो एनजीओ होता है वहां पर वो काम, मतलब कंपनी है महाराष्ट्र में, एनजीओ है उत्तर प्रदेश में, तो सब फंड जो है वो उत्तर प्रदेश जाता है। तो यहाँ पर अगर हम पॉलिसी बनाएंगे कि जहां पर वो कंपनी स्थित है वहां पर ही वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर का यूटिलाइजेशन जो है सीएसआर का अगर हम करें तो आजू बाजू के क्षेत्र का भी विकास हो पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं अपने पार्टी की तरफ से सरकार के सप्लीमेंट्री डिमांड जो 3,73,761 करोड़ रुपए के डिमांड रखे गए हैं उसके स्वीकृति के लिए, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, सवाल यह है कि सरकार ने ये सप्लीमेंट्री लाया तो किन कामों के लिए लाया, आज उस पर सदन में चर्चाएं हो रही है, जिसके अंदर में हम लोगों ने देखा है कि इसके अंदर में आप खाद पर सब्सिडी देने के लिए 58,000 करोड़ उसमें दे रहे हैं, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 53,000 करोड़ रुपए का आप उस पर खर्च कर रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। हम सबसे बड़ी बात है कि अभी यहाँ हमारे से बोलने से पहले जो हमारे विपक्ष के सम्मानित सदस्य बोल रहे थे, वे खड़े होकर कम से कम इस सदन में तो बोल दे कि ये जो सप्लीमेंट्री आई है उसके अंदर में जो खाद पर 58,000 करोड़ रुपया जो दिया जा रहा है सब्सिडी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तब तो इसका विरोध करें। अगर आप इसके पक्ष में भी हो और चाहते हैं और इसका विरोध भी करें तो दोनों बात एक साथ कैसे होगी। आपने देखा है कि इसके अंदर में रक्षा के और गृह के लिए भी 5,000 करोड़ और 4,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया। आज हमारे आप देख रहे हैं कि देश के अगल बगल के सभी देशों के साथ जिस प्रकार हमारे देश के जवान वहां पर लगातार मोर्चे पर मौजूद हैं और हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त खर्च की जरूरत है, जिसके लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड में लाया गया है। राष्ट्रीय राजगीर ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर में भी 22,039 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा आवंटन इसमें दिया गया है। आखिर जब तक हम इसके माध्यम से गांव में इस कोविड के बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को काम नहीं है, अगर हम इन माध्यमों से अगर हम उन्हें रोजगार मुहैया करा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि वित्त मंत्री की ये सोच, माननीय प्रधानमंत्री की ये सोच और पूरे सदन इस पर सहमत होकर इस चीज को पारित करने की जरूरत है कि ताकि हम खादों पर सब्सिडी, रोजगार दे सके, हमारे जो हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सके, आयात पर से हम अपने निर्भरता को कम कर सके। उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि निर्यात करने वाले छोटे छोटे को हम उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रोत्साहन राशि की उनसे मदद करें, जिससे कि वो आज इस कंपटीशन के बाजार में वो compete कर सके और दूसरे देशों के साथ उनका कंपटीशन चलता रहे। महोदय, इसके अलावा सबसे पहली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था जो नदी जोड़ो, उस नदी जोड़ो को माननीय प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकार नीरा का गठन करने जा रही है और उसके अंदर में 4 परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। और माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के पहल पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नीरा परियोजना के अंदर में 2 योजना जो 4 स्वीकृत हुई उसमें 2 योजना बिहार की ली गई है। इसके लिए मैं अब पूरे बिहार के तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आपने देखा है कि इसके अंदर में बूढ़ी गंडक नून वाया गंगा तथा कोसी मेची लिंक इस 2 परियोजना के डीपीआर को स्वीकृति दी गई है। सभापति महोदय, हम बिहार से आते हैं, हमने देखा है हर सालों साल कोसी की वो बाढ़ की जितनी बड़ी बाढ़ आती है और वहां पर जो प्रलय आता है, पूरा बिहार 3 से 4 महीना बाढ़ के कारण जितने भी बिहार बढ़ने की कोशिश करता है 4 महीने में बिहार पुनः पीछे हो जाता है। हमारा चाहे वो सीतामढ़ी जिला हो, चाहे वो कोसी का जिला हो, इन सभी जिलों में आप देखेंगे कि बाढ़ से बड़ी त्रासदी हो रही है। उस बाढ़ को अगर नदी को जोड़ दिया जाता है कोसी और मेची को, तो उसके कारण एक बहुत बड़े इलाके के में आने वाले हर एक साल आजादी के बाद से अब तक कोसी का इलाका बाढ़ देखा है। आजादी से लेकर अब तक चाहे वो हमारा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट रहा हो, नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट रहा हो, वो बाढ़ देखने का काम किया है। यहाँ बैठी हुई है हमारे बगल के जिले की सांसद महोदया, उनका भी जिला लगातार बाढ़ से हमेशा हर साल डूबता रहा है। आज इस बाढ़ नदी जोड़ो की अगर योजना जो शुरू हो जाएगी तो हमें बाढ़ से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम सब उस बड़े एक सपना देखा करते थे, जाने कब हम लोग को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। वाजपेयी जी ने उस सपने को देखने का हमें मौका दिया था, परंतु वो पूरा न हो सका। आज हमें लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर ये 2 योजना सरजमीन पर लाने का काम हो रहा है। महोदय, आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार के अंदर में माननीय वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आपने भी इस बात को सदन में रखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत ही जरूरी है। महोदय, हिंदुस्तान पूरी दुनिया से तभी कंपटीशन में अपने आप को सर्वोच्च देश साबित कर सकता है जब तक कि बिहार भी अन्य राज्यों के बराबर में विकसित होकर हिंदुस्तान के अंदर में नंबर 1 के राज्यों में गिनती में नहीं आएगा। तब तक आप विदेशों में जाकर भारत देश का परचम लहराने में कहीं न कहीं आपको ये बाधा आएगी कि आपका एक राज्य, अभी नीति आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसमें उसने लिखा है कि बिहार सबसे पिछला राज्य है। अगर पिछले राज्य में हमें आपने नीति आयोग ने हमें रखा है तो हमें बात आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और लगातार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी मांग कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज से नहीं, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अगर आप हमें विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आएगी। हमारे बिहार के लोग पूरी देश की इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। आज हमारे बिहार के अंदर में अगर इंडस्ट्रीज आती है तो हम बिहार के लोग उस इंडस्ट्रीज को चलाने में सक्षम है। परंतु हमें जब तक हमारे यहाँ तभी कोई बाहर के कंपनियां आएगी या हमें अपने यहाँ यूनिट बैठाएगी जब आप हमें विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मैं आपके माध्यम से यहाँ पर मौजूद वित्त मंत्री जी से पूरे बिहार वासियों की तरफ से बैठे हुए हम अपने सदन के सारे बिहार के सांसदों के 40 के 40 सांसदों की तरफ से आपसे पुनरोध और मांग करता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप देने की घोषणा करें। आप जिसे पैकेज दे रहे हैं, पैकेज नहीं, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और हमें यह दर्जा देने का आप कष्ट करें। आप महोदय, अभी हमारे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है, जिसके बारे में मैं भी कहना चाहता हूं कि महोदय, सीतामढ़ी मेरा जिला, इसको भी एक स्पेशल जिला में लिया गया है और इसको जब तक वित्त विभाग की तरफ से अलग से कुछ फंड नहीं दिया जाएगा और जो सामान्य फंड है तो फिर ये एक्सप्रेशनल जिला में रहकर इसकी विकास, ये पिछड़े को आगे हम कैसे ला पाएंगे। या तो आप अपने
जितने भी पीएसयू है, कंपनियां, उनको कहे कि सीएसआर का फंड जो यूज कर रही है उसको फंड को वहां पर खर्च करे, और उस फंड को खर्च करने में अगर हम लोग कुछ लिखते भी हैं और उस किसी कंपनी को, तो वो कंपनियां वो फंड को यूज करने के लिए जिले के डीएम को कहती है कि आप उसके साथ उस एग्रीमेंट पर साइन करें। डीएम को फुर्सत नहीं होता, वो साइन नहीं करता। इसमें संशोधन किया जाए, डीएम के साथ साथ ना हो तो डीडीसी उसके साथ एग्रीमेंट करे और काम योजना को शुरू हो सके। जिस प्रकार अगर एक दो योजना जाती भी है, वो योजना बिना एग्रीमेंट के योजना पर लौट के वापस आ जाती है। महोदय, हम अपनी से अकेले हैं, हमारे पार्टी के महोदय 2 मिनट। महोदय, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी पर महोदय, इस पर सदन पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। ये देश की करेंसी नहीं है, ये ना कहीं पर दिखती है, ये सिर्फ नेट पर मौजूद है। इसका फिजिकल कहीं कोई अता पता नहीं है। एक तो जिसकी फिजिकल पता उसमें घोटाले होते हैं, इसमें कितने घोटाले हो जाएंगे पता नहीं चलेंगे। हमारे हिंदुस्तान से जहां के छोटे इन्वेस्टर्स इनके बढ़ते हुए रेट को देखकर प्रलोभन में आकर अगर इसमें फंस जाते हैं तो देश के बहुत बड़ी इकोनॉमिक इसमें फंस सकती है। इस पर भी माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह विनती निवेदन होगा कि इस पर एक बार सदन में विशेष चर्चा कराई जाए, तभी इस पर कोई कानून नया लाने का काम करेंगे। महोदय, मैं एक बार पुनः अपने क्षेत्र सीतामढ़ी के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि अयोध्या के तर्ज पर मां सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी को भी विकसित करने के लिए, तो आप वहां पर रेलवे विभाग को वहां पर वॉशिंग किट और रेलवे विभाग ने जो मॉडर्न स्टेशन बनाने का संकल्प लिया है उसको फंड दे कि ताकि वहां पर मॉडर्न स्टेशन बन सके और सीतामढ़ी को पर्यटन के नक्शे पर लाकर वहां पर्यटन के अयोध्या के तर्ज पर वहां विकास हो। इसके लिए स्पेशल फंड देने का मैं आपसे मांग करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप सीतामढ़ी को एक स्पेशल पैकेज देकर अयोध्या के तर्ज पर विकसित करने का आप काम करें। माननीय सभापति, आपने मुझे समय दिया, मैं अपने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बी महताब जी। Thank you very much. Last Friday, the second supplementary demand for grants for 2021 and 22 was presented in this House, which is being discussed today. The budget passed in February this year had estimated an expenditure of 34,83,236 crores for the year. The second supplementary demand for grants propose an incremental cash outgo of rupees 2,99,243 crore, which is an increase of 8.6% in expenditure over the budget estimate. The first SDG presented in July 2021 had proposed an incremental cash outgo of 23,675 crores. Together, these supplementary demands imply an increase of 9.3% in the total expenditure of the Union government from the estimates of the Union budget. In this supplementary demand for grants, especially 4-5 issues needs to be deliberated, and very rightly so. Number of members have already deliberated on that subject. I would not delve more on those. One is Air India. The government seeks approval of around 62,057 crores, and fertilizer subsidy, the government seeks approval of 58,430 crores, and out of this 26,603 crore has been sought for indigenous phosphate and potassic subsidy. Rupees 16,827 crore has been sought for imported P&K subsidy, and rupees 15,000 crores has been sought for urea subsidy scheme. But one thing that is to be noted here is the government has increased the subsidy rate for phosphate by 204%, from rupees 14.90 paise, 14 rupees
14.9 rupees per kg in 2021 to rupees 45 rupees 0.3 per kg in 21-22. This was in response to a sharp increase in international prices of raw materials used in the manufacture of fertilizer. The other aspect is relating to export incentives, which say the government seeks approval of around 53,000 crores, 53,123 crores for payment of pending export incentives, remissions, etc. The good thing, another good thing is, the Finance Ministry has also proposed to spend over rupees 49,000 crores towards various schemes of food storage and warehousing. This sector was actually lagging behind, and this investment will definitely help the farmer community or the rural community to a very great extent, and also do away with the wastage of food grains and foodstuff by erecting this. We have been told that by factoring in strong revenue buoyancy in revenue receipt in 7 months, this second supplementary is unlikely to make a significant impact on fiscal deficit arithmetic. I think some of the members also have mentioned about it. Rather, it is the disinvestment receipt which is likely to pose a threat to the fiscal deficit. India Ratings is of the opinion that unless a couple of big-ticket investments, such as LIC, BPCL, are completed in financial year 2022, it will be a challenge to meet the fiscal deficit targets. ICRA has said that at the end of October 2021, 52% of the full-year expenditure target had been completed. But I am of the opinion, sir, that there is near certainty that the fiscal deficit will exceed the budgeted 15 lakh crore of rupees, despite the assessment that net tax revenue and RBI surplus transfer will get together surpass the budget estimate by rupees 1.7 lakh crore. I would just like to mention here, relating to the finance situation of the central government. While going through the receipts of 2021-22, between April-October 2021, in comparison to April-October 2019 and April-October 2020, one finds that in GST, there has been a substantial increase of up to 61%. Income tax, there is an increase of 55%. Corporation tax increase of 60%. And union excise duty there is an increase of 61%. So far, so good. But disinvestment also only 5%. But so far, so good. But devolution to the states, there something is lacking. During April-October 2021, the government has collected receipts of 12.8 lakh crores of rupees, which is, I said, 65%, out of the budgeted estimate of 19.8 lakh crores for 2021-22. The collection during April-October 2021 has seen an annual increase of 17% over the receipt collected during April to October 2019. But while gross tax revenue has seen a 14%, tax devolution to states has seen an 8% annual decrease. I think the minister is aware about it, and respective state governments are also repeatedly asking the central government for more devolution of the funds that is being collected. 3-4 points which I would like to mention, which is of my state's interest. One is delinking of 8 centrally sponsored schemes from central support, abolition of normal central assistance, and a steep increase in state share of centrally sponsored scheme has imposed severe financial burden on the state. For example, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, which has now become 60-40,
Similarly, sharing pattern of National Health Mission and Pradhan Mantri Awas Yojana has been revised, like states like Orissa having to contribute 40% share instead of 25%. Such change in sharing pattern of the centrally sponsored scheme has cast a huge additional financial burden on the states. Article 270 of Constitution of India provides for sharing of the proceeds of all union taxes between the union and the states. However, the cess and surcharge levied by Government of India, as per Article 271 of the Constitution, do not form a part of the divisible pool. The share of cess and surcharge in gross tax revenue of the union government increased from 7.5% in 2000 to 2001 to about 19% in 21-22 in budget estimate. This denies the states their rightful share in the tax devolution. Sir, I will come to the GST part. As it was contemplated, decided in GST Council, when the Act was passed unanimously by the House, by the Parliament, and with that enactment, it was decided, especially relating to after the COVID pandemic and GST compensation issue for the year 2021. Due to COVID-19 pandemic, Government of India had projected shortfall of state GST and IGST share for the states. As per discussion in the GST Council meetings, it was decided that the Ministry of Finance, Government of India, will arrange back-to-back loan to the states in lieu of GST compensation shortfall on account of implementation of GST. The balance compensation due to COVID-19 will be paid from the compensation fund after transition period, that is 30th June 2022. The state governments are not required to pay towards back-to-back loan and interest accrued thereon. The Government of Odisha preferred the above mentioned option 1. Odisha has received an amount of rupees 3,822 crores as back-to-back loan in lieu of GST compensation shortfall for 2021. For 2022, it is decided that 6,430 crore as back-to-back loan is to be paid to Government of Odisha in lieu of GST compensation, and this amount has been paid already. But relating to 2021, another 2,551.23 crore is still pending. I would urge upon the Minister that this needs to be looked into, because this is a pending claim of Odisha government. I think that needs to be looked into. The state should have a greater say. This is my suggestion, because we are discussing this in the month of December. And already the next budget is in the making. The problem that Odisha is facing, the problem respective state governments must be facing is this. The state should have a greater say today in planning, designing, and finalizing of criteria for allocation for centrally sponsored schemes. In addition, there should be an advance indication about the annual allocation for each state in the time of budget formulation, so that the states would be able to prepare their budgets on a realistic basis. The release of funds must also match the allocation. The problem today is when the budget is placed in month of February, the state governments start scrambling where to get the funds to match, to avail that grant from the central government. I'm of the opinion, I think it needs to be looked into. I'm of the opinion that a return to a high growth path will not happen on account of market forces alone. Any jubilation over the surge in exports in the first half of the current year is misplaced. Between 2014 and 2019, exports were virtually stagnant. There is a need to make a big push from public investment is required. Central bank funding of a public infrastructure authority may well be the answer. Sir, for decades, this is very close to my heart and I'm sharing it before this House. India has been brandishing its credentials as a superpower in making. In the 80s, then Prime Minister Rajiv Gandhi had talked about the dawn of the century and India turning a new page.
Similar sentiments were relayed by Dr. Manmohan Singh as the finance minister of the government that initiated India's first generation reforms in 1991. And later, during Atal Bihari Vajpayee's tenure, he steered India into a new millennium with second generation reforms. But the Indian economy has remained, as a mother, I can understand, you can understand better, but the Indian economy has remained like a stubborn child, refusing to unshackle itself. The onus lies on you, madam, to unshackle the Indian economy and go past the second generation and to bring in more. Lastly, sir, I would like to draw the attention of the minister towards a very important issue. Long back, Adam Smith had said tax payments should be proportional to income. The pandemic has brought unmitigated hardship. No doubt the income tax rules have over time become less ambiguous and more transparent, and the procedures simpler also. However, as far as taxing interest income is concerned, two ambiguities still remain. First, the interest earned in a financial year, apart from being taxed in that year, is added to the account holder's deposit under compound interest rate regime and becomes again liable for taxation in the subsequent year. This needs to be changed for your consideration. Second, interest earned is taken for taxation on accrual basis, not on realization basis. This needs to be addressed. With inflation surging, real returns are close to nil. This is hitting especially the senior citizens very hard. With these words, I support the supplementary bill. Thank you. Srimati Supriya Sulaji. Thank you very much. I stand here to speak on the supplementary demands for grants. I'm too tempted and I can't resist myself, and I hope you understand the spirit in which I'm speaking about this. Shri Nishikant Dubey quoted the Honorable Prime Minister, and I was really proud that he thought about one of the largest sons of my soil where I come from, Maharashtra, Chhatrapati Shivaji. I'm very proud that he talked about him, but you can't use Chhatrapati selectively. He talked about Chhatrapati standing up against anything that's wrongdoing. That's what he was, a great king and son of our soil. But one quality Chhatrapati had, that even if he had an opponent, and however difficult the situation, right or wrong, I'm not getting into the merits of it in today's context, but he never attacked their families and their children, and he always protected women of that family. Today I was not actually going to talk about it, but I just request of 2 minutes of indulgence even of the Honorable Finance Minister. She is a woman, she's leading the department exceptionally well. I've always complimented her about it. But at the same time, what happens in my state, and there are a lot of people who may have had income tax issue, ED's issue, I'm not going to getting into the merit of what is right or wrong. But the way the witch hunt about their children and their wives is very, very unfortunate. So when you revoke the emotions of Chhatrapati, this is not what Chhatrapati did. He always protected women and children. Fought from the front, he always protected the women. Anyway, it's sad because when they attack women, like the Mrs. Khadse, who's a senior citizen, their daughter, daughter-in-law, Anil Deshmukh, many examples, but I don't want to indulge too much into that topic today. This may not be the right person. While we are talking about these demands for grants, Mr. Dubey even talked about the subsidy for fertilizers, and he thought we as the opponents were going to criticize it. And he was right about some of it, that Parliament is not always about criticizing each other. There are some things we all agree on, especially the pandemic. I think our state government and your state government, which I think even Shrikant Shinde spoke in his speech, that our two governments, Maharashtra, we may have had challenges while working during the COVID. There were moments where tempers were high because there were very high emotional moments. It was a pandemic. It was an extraordinary situation. But clearly we worked better. We've managed to save people's lives. We've been done exceptionally well, both of us together in the vaccination. We've reached out to many people together.
And both state and central government have worked well together, be it the railways, be it the food supply that you get. We do compliment and are grateful for all the interventions you've done. But when they come to talk about the additional fertilizer subsidy, why would we be upset about it? But the problem is, which is nothing to do again with the finance minister, but this is the mismanaged. I still remember for the last 7 years, we've heard how well the neem-coated urea and neem-coated fertilizer has been doing, but the ground reality is slightly different. Ma'am, even if you go to any village today, there's unseasonal rain, which even my colleague Dayanidhi Maran talked about. Same thing with us in horticulture. And the requirement of all the fertilizers has completely changed. And what the dashboard says and what the ground reality is very different. I even do understand that the international prices, the planning of that department has actually, unfortunately use the word, but messed up. And hence she's stuck actually with this bill of this fertilizers. But I don't think anybody would really object. It's a very important intervention she needs to make, and I'm grateful that she's doing it. But it's a very challenging time, but it could have been handled a little better by the department, which you have actually no control about. The other thing which is very worrisome in this is the Narega situation. I still remember it was not a flagship program of your government when you all came. It was not something you all were very proud of. We were very proud of, because this is one of the programs which my state gave in 1972, when we had our first famine and we had challenges, and it's food for work is what we launched it as. And it's been one of the best programs in these challenging times. But why is Narega so required? Clearly because of the unemployment issue. You are infusing more money. There were challenges from, I think Mr. Dubey also in his, that how well is it being implemented. I think that accountability falls even with us and the central government, because Narega is a program for absolutely the people at the bottom of the pyramid. So I think we need to work better together to strengthen the program, but at the same time, we cannot ignore the fact that Narega's requirement is getting more and more, because it proves that the unemployment challenge is going up during this pandemic. There are a lot of programs which even this government has talked about, which I felt while reading about this new spending that this government is doing. I would like to quote the Minister of State of Finance, Pankaj Chaturvedi, while tabling the second batch, tabled the second batch of supplementary grants in Loksabha. He says that the net outgo cash of 2.99 lakh crores and 75 crores extra expenditure would be matched by savings by different ministries. Now, this is a little alarming for me, because if you're saying that you need this by savings of different ministries, does that mean all the social sector programs get affected? Madam, I'll try to give you a small example. It's like this Union Budget 2020 post-matric scholarship for SC students under the fund. What has happened under the Social Justice Department, which is such an important department, which is people from the bottom of the pyramid who really need this. The financial year of 1920, the demand for this was 14871. The funds approved by the Ministry in Finance were only 8,000 versus 14,000. The funds allocated for this ministry for 2019 were 11,000 and only 7,000. We have to notice one thing, that 17 and 18 was 10,000 and 6,000. These are not pandemic years. But the Social Justice Department and the scholarship for the poor, the downtrodden, these Dalit children is substantially going down. And the government constantly says that we have new data and we are trying to meet the numbers, which is not the case. So I urge the Honorable Minister to address this, because it's a very, very important and a critical issue. People talked about GST. I won't take too much of your time. We've discussed this before. I urge you, because I do realize one thing about GST, that the government keeps claiming GST is doing very, very well. So then why in delay in all the payments? Yeah. And there was I remember a time when in this house, madam, when we were sitting on that side and you were on this side, we were called the tax terrorism government. I remember those days when people used to attack us and we used to sort of wonder, is that really, are we tax terrorists? Now, what is the reality of the GST? Because data is saying that, especially in my state and some neighboring states, I checked for some data, the way the GST demands are made, the way people are raided, I'm even hearing some data that people are put behind bars because of GST. Now, what is the truth of this?
And are we putting people in jail? This is the new fashion, that just threaten, put them in jail. Jail is not going to resolve these situations. So is the GST collection only on paper, or are we really collecting? If you could kindly clarify. And if you are really collecting, why aren't the states getting it? And then why is this GST tax terrorism going on? So you won against us and claim that we were doing tax terrorism, and you're following the same, going through the same legacy, just in a different form. So if she could kindly clarify, would be wonderful. A lot of people have talked about MP lads. MP lads, Shrikant, Dayanidhi ji, everybody talked about it. I want to just give a small solution to this government. That in the state where I come from, Shri Uddhav Thackeray, Balasaheb Thorat and Ajit Pawar lead that government. And I'm really proud to share that my leader, Shri Ajit Pawar, who also happens to be the finance minister of Maharashtra, has not cut a single MLA's 1 rupee through this entire COVID time, even if the GST money didn't come. He gave every MLA not 1 but 2 but 4 crores every year for development. So if a state can do it, I really can't understand why central government can't do it. And if you need, because a lot of times सामने से कहा जाता है सुझाव दीजिए, तो मैं अच्छा सुझाव आपको दे रही हूँ कि महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया है. अगर आप दे दे तो मैं उनके यहाँ से आपको ला सकती हूँ कि उन्होंने कैसे अच्छा बजट बनाया कि एक भी एमएलए का एक भी पैसा इतने सालों में, जो कोविड के 2 साल है, 1 रुपया भी नहीं उन्होंने काटा है. Another quick question about Jal Jeevan Mission. Now, Jal Jeevan Mission, you have talked about 3 lakh crores is going to be spent together. You all are spending, we are spending, and it's a welcome. We have welcomed the minister. We've had very good dialogue with the honorable minister. He's a very good minister, which we have worked very closely with. Now, I have just one question. While we are all infusing so much money, the operation and the maintenance of this program, that still remains a big challenge. So I would like to find out from her that you have looked at opportunities in this. So the O&M of this program, how are we going to take it forward? MP lads, GST, scholarship, Narega. So a lot has to be said, but my only concern in all this is the MSME. Even last week, Sri Narayan Raneji, who happens to come from my state, gave us some solutions for, he said there are some schemes, but it's not reaching our state. So for all the MSMEs, for all the jobs that are going, like Professor Saugata Roy ji said, I'm not against any big companies doing well. If they are going to create wealth, create jobs, we should encourage everybody to be in business. But if it's all going to clutter at the top of the pyramid, then how will MSMEs survive? So what exact intervention is the central government doing for all the MSMEs is what she should say. Mehtabji talked about the cess, which also concerns us. We have the Swachh Bharat cess, we have the road cess, we have the clean energy cess. Now all these funds go to the Consolidated Fund of India. Now, how this is all loss of all our states. So how are you going to address us? Because we are suffering with GST. Still, we are making sure all our development programs run. We are working with you closely on all the various Jal Shakti mission, be it distribution of vaccines. We are working very closely with the central government. But how do we go ahead working together when all this money is taken away from us? The other is the Pradhan Mantri Awas Yojana. The demands for it was 1.12 crore houses to be done. Now, according to the Standing Committee report, this all needs to be fast-tracked. The same thing is applicable to all our states. If you could kindly look into it, that would be very, very helpful to us. All the health workers is something I would like to bring to the notice, that the Standing Committee have welcomed and encouraged all the ASHA workers and all the health workers during this time. So I think increase of wages is something, there is so much health budget that we keep talking about. So is there something more we can do for this bottom of the pyramid of all these people? And the health sector disaster preparedness and response scheme. Now, how much help would you give even all the states? I mean, Mr. Dubey was very complimentary to the central government, but I'm sure the states have also contributed substantially in making this a success story. I think together we have really made a difference to fight this. It was not y'all UPA versus NDA. It was all of us together against the virus. So I think this is a war which we still haven't won. We are on the verge of winning it, but I think we still have to wait for another 2-3 weeks to celebrate, because we are still 2 weeks away from the final moment of whether Omicron is there or not. So this is something we need to address for sure. But I just want to some few replies on behalf of our states, that the states are absolutely going through a very, very difficult time. A lot of social sector programs, like your own minister says,
there is jugglery of some numbers is what I seem to understand from the statement from the MOS of Finance. So if there is jugglery of numbers, does that mean it will affect our states? Because my biggest concern is that the bottom of the pyramid, Sabka Saath, Sabka Vikas, if that's what we are really going to do, if you don't give us all the monies which are needed for the poor and the needy of this country, the scholarship, for the women's safety, education, healthcare, how do we run our states? I think we need to put all our minds together and be more transparent and honest to each other and take good feedback from the states where we can work together to make India better. Thank you. Shri M.K. Vishnu Prasad ji. Thank you, Chairperson. I am going to speak on the supplementary demands and grants. To open the speech, I would like to tell one thing. Our India is unity in diversity. Your India is mutiny in diversity. To begin with, a country has to grow in all sections: agriculture, economy, health, education, technology. But surprisingly, India is pampering only the corporates. The world is learning lessons from India in how to collect taxes from the poor people, how to suck the blood of the poor people without them knowing the pain. Will anybody charge for the services? But in every month, the bank accounts, now India is going towards a zero balance account. Everybody should have an account. But unfortunately, without the knowledge, every month, service charges are being collected from the poor people. Transport is a service sector. Branch is a service sector, where you don't charge people for the services that you are rendering them. But unfortunately, yesterday when somebody was raising that they should have a branch, I come from Arni Parliament. I have asked our Honorable Finance Minister several times to open a branch because so many people are there and they have to walk 15 kilometers. But this is my request also to the Honorable Finance Minister to open a branch. See, you cannot go on the business. You cannot go on the feasibility of the business, of the branch. But it is a service sector. Because the government always depends on the accounts. The schemes directly go to the beneficiaries. I agree. You don't want the middlemen. I completely agree and endorse. But at the same time, the money is directly put into the account holders' accounts. In that case, how the poor people will go to the bank? How the women, the Narega project, even it is implemented, the money is given, the wages are being rendered into the account. How they will go and encash it? So I humbly request the Honorable Finance Minister to open the branch, to open the ATMs, to open the one-man branch at least in almost all the villages so that this confusion is sorted out. Being our Finance Minister can understand Tamil, I would like to say only one thing. I would quote from Tirukkural. In her opening remark, she said, "Iyattalum, eattalum, kaattalum, kaatha vaguttalum valladarasu." That means a government should be competent enough to generate funds. But here, disinvestment is the norm of the day. Government is very happy in selling all the public sectors. They only issue license and threaten. Apart from that, this government does not believe in earning money and generating funds for the poor people. For example, this House has seen several legislations being passed because of the mammoth majority. I completely understand. Last session also in Civil Aviation Department, several legislations were passed, only for the benefit of Air India. Imagine during Corona, the first wave, no private aircrafts were willing to offer their services to bring back the migrants, NRIs who are stranded in abroad. But it was only Air India who boldly went abroad and brought our people back to India safely. But today, unfortunately, Air India has been sold. And this is what we are going, every time legislation is passed, only for centralization of powers. It is not a clear definition of this country that is going to improve
put the country in the progressive pathway. This is the real fact India is facing. Moreover, I have no mention in this budget about my Kuteripattu bridge flyover project in my constituency and the railway lines, 2 railway lines, Dindivanam Tiruvannamalai, Dindivanam Nagari. Those two, there is no mention about these two railway lines also. There is Agriculture University and Silk Park for my constituency. There is no mention. And Defence Corridor. Honorable Finance Minister, then the Defence Minister and the Prime Minister both came to Mamallapuram for opening a defence corridor. But there is no mention. It was only puja and advertisement and celebration. After that, the government has completely forgotten about the defence corridor, and which we are facing so much threat from the neighbouring countries. Senji Fort, in my constituency, I wanted Senji Fort to be declared as a tourist centre. There is no mention. And during Corona, we are all, searching for vaccines. We are importing vaccines. But in Tamil Nadu, there is a place called Chengalpet Vaccine Centre, and it is fully furnished, fully equipped. Infrastructure is 100% complete. We are able to give 50 crores vaccine per annum. It is 100% profitable and 100% functional. But government is not at all keen in reviving or giving money, in spite our Honorable Chief Minister and our Rahulji and Sonia ji also wanted the Chengalpet vaccine unit to be revived. But this government is mute in this aspect. And Honorable Speaker, sir, regarding tolls, this is taking a toll on our life. This toll in the highways, compared to Maharashtra, compared to Uttar Pradesh, it is bigger. My Tamil Nadu state is smaller compared to Maharashtra and UP. But more tolls are there in Tamil Nadu. And there is no protocols being followed. There is no ambulance. There is no water services. There is nothing. What has to be what has to be kept in a toll is not kept in toll. And people are made to wait in a big queue. And this government, there is no mention at all. And finally, the airports. I want an airport, international airport, in my RNA constituency, and the government of India has to have a very motherly approach towards allotment of airport in my constituency. And last but not the least, petrol and diesel prices, unbearable, unimaginable, never, ever, ever in the history of India, freedom, Indian constitution, Indian people have never seen such an increase, irrespective of the decrease in the kacha prices. But still, the government is mute. The corporation can decide on the price of petrol and diesel. The corporations of BPC, IOC, SPC can decide on the LPG. The freight charges is phenomenal, is huge. Every time it fluctuates. People are not, they're not taken into consideration at all. But still we have to pay and bleed. People are bleeding. But unfortunately, government is keeping quiet. But poor farmers, the manufacturers of the agriculture produce, but they are not able to decide on the price. And the government is mute on the MSP, fixation of MSP. Now all these aspects, considering these things, anywhere the bill is going to be passed, but I strongly object this supplementary demands and grants. Consider all, whatever my demands are there, consider everything and bring a comprehensive bill, then I would like to pass it. Thank you very much, sir. Srimati Aparajita Sarangi. Thank you. I rise in this August House to extend my support to the second batch of supplementary demand for grants for the year 21-22. As we are aware that the Ministry of Finance had laid this proposal on the table on 3rd of December 21. We are aware of the fact that under very difficult circumstances, the budget of 21-22 had been formulated. We were going through the worst times of Corona, and this particular budget, if I say, has played a vital role in ensuring the revival of the economy. I don't think it would be exaggeration. We need to accept it, that this particular budget has contributed to the revival of the economy. One of our friends just mentioned about 8.4% growth in the second quarter. I think that explains whatever I have been saying.
Sir, this budget of 21-22 embodies in itself three elements we need to acknowledge, we need to appreciate. Number one, hope. Number two, vigor. And number three, confidence. Now, it embodies hope, which we carried among ourselves during the toughest times. All of us worked together. As Madam Sule rightly said, the central government and all the state governments under the leadership of the Prime Minister and the respective chief ministers have worked very closely combating combating COVID-19. As far as the element of vigor is concerned, this was embodied in all the youth. In fact, they have been filled with abundant promises and unsuppressed thirst to perform and succeed. This is very much visible, and I think the budget has been trying to help this segment of the population. Confidence, the element of confidence reflected by the budget, there is the confidence that the economy will revive and reset. Sir, as we know, this particular supplementary demand for grants second batch includes 69 grants and 2 appropriation, and approval of the House is sought for rupees 3,73,000 crore. Now, sir, as I rise to speak, as I would be talking about certain departments, the proposals they have placed before the House, I would definitely like to recall the statement made by Honorable Prime Minister Modi. He had rightly said, I would appreciate the House to kindly understand the spirit behind the statement made by the Honorable Prime Minister. Some time back he had said, this country is not made by politicians, kings and governments. This country is made by farmers, laborers, our mothers and sisters and youth. And therefore, this particular budget, the second batch of supplementary demand for grants, reflects the spirit of the statement of Honorable Prime Minister. We may not like it, but we must accept it. We must have the humility to accept it. Sir, I have been listening to all my esteemed colleagues from the right side, and all of them have been talking about MG and RGS. I would start with the Ministry of Rural Development. The Department of Rural Development is one of the departments under the Ministry of Rural Development. From 2013 to 2018, I had the opportunity of serving as the Joint Secretary handling MG and RGS, the biggest anti-poverty program of the world. Sir, this supplementary demand for grants talks of 47,039 crore rupees for the Ministry of Rural Development, which includes rupees 25,000 crore for Manrega, which includes 2,000 crore under Manrega for asset creation. Now, I think it's very, very important to understand the budget of MG and RGS. MG and RGS, backed by an act of 2005, it's very important to understand the way the budget is formulated. I would request the House not to compare apples with oranges. Apples must be compared with apples, and oranges must be compared with oranges only. Sir, when 21-22 budget was brought by the Honorable Finance Minister in February, she had brought in 73,000 crore rupees for MG and RGS, which was 18% more than the BE of 2020-21. B compared to B, 18% above. Now, there was an apprehension in the minds of the friends on the right side. They had said at that point of time, and today also some of the friends reiterated, that 34% less this time compared to last year. Now, what they are doing is, they are comparing the BE of 21-22 with the RE of 2021, which is not right. In fact, today, we must thank Honorable Prime Minister. In May 2014, when Prime Minister had come, he had taken the charge. One direction that had been given to the Ministry of Rural Development, where I was working as the Joint Secretary handling the program, was transform Manrega, focus on asset creation. The direction was to focus on water conservation, water management, and ensuring water availability for all, and thereafter we started. Today in the morning, I talked to the officials of the Department of Rural Development because I knew these things would come up today.
questions would be raised, doubts would be actually placed on the table today regarding Manrega. I'm extremely delighted to inform the House that despite your apprehension that 34% less BE of this year compared to the RE of last year, we have done exceedingly well. It's very easy to formulate schemes and programs. A good governance model is one which actually ensures that the schemes and programs are implemented properly. Whatever the resources that were available were put to right use. And today I'm delighted to tell you, I don't have to read the papers also. 60 lakh assets have been created till date this financial year, not a mean achievement. And 256 crore person days have been generated. And one more thing, I wish Mr. Shashi Tharoor, the erudite scholar, would have been here. Unfortunately, he's not there. He didn't listen to us. 99.62% of the people who had requested for jobs, or rather requested for wages under Manrega, under employment under Manrega, were offered employment by the whole setup, all the states helped by the central government. 99.62%, please remember. So please don't say that whatever demand was there, it could not be met. This is wrong. Please go to the website of Manrega. I'm extremely delighted to tell you, rather very happy to tell you, proud to tell you that MGNREGS has a wonderful website. It's a real-time basis. You can see everything there. And it's not the central government handling the website. It's real-time. It's coming from below, from all the states. So the fund allocation, 25,000 crore. And interestingly, as per the direction of the PM Modi, there has been very good focus on asset creation. 2,000 crore rupees have been earmarked for asset creation. I think we need to compliment the efforts of the government, commend the endeavor of the Prime Minister. The fund allocation now will definitely benefit the implementation and contribute to the growth of the scheme. So I come to the next ministry, the Ministry of Jal Shakti. I'm reminded of the statement of Nishikant Dubeji. He mentioned, and I think some of our friends from that side also mentioned, sir, apart from the Namami Gange plan, we are also talking of river linking projects. River linking projects, Cabinet approved the Ken Betwa river linking project in Bundelkhand area, water-starved area, for 44,606 crore rupees. This is not a mean achievement. Sir, the union budget of 21-22, the union budget, I'm not talking of the supplementary grant which has been placed now, the union budget of this current financial year envisioned universal water supply in 4,378 urban local bodies with 2.86 crore tap connections, as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. So this is, I think, the focus of the government, the focus of the Prime Minister. He has been talking to all of us regarding the need to focus on water availability, water conservation, and water management. Sir, the Ministry of Jal Shakti has placed demand for 8786.17 crore. This has to be approved by this August House. I would request for that. So farmers, agriculture, I think we have been toying with this idea. I'm privileged to be the spokesperson of my party, and every evening on various TV channels, I meet all our friends from the right side. Many apprehensions, many doubts about the intention of the government as far as farming is concerned, as far as the interest of the farmers is concerned. Sir, छोटा किसान बने देश किसान, और मुझे लगता है मैं बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार किसानों के कल्याण पर केंद्रित है. हम किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे. Sir, there has been record procurement at MSP of paddy and wheat this year. Nobody can deny that fact, number one. Number two, 28 crore soil health cards have been distributed and rupees 1.62 lakh crore
have been credited through direct benefit transfer methodology to the accounts of 10 crore farmers. And sir, 1 lakh crore have been earmarked for the agriculture infrastructure, which is not a mean achievement. I need some time. Sir, the fertilizer plants that had been closed for years together, I'll mention one plant, I think we are all aware of that. The Gorakhpur plant, Honorable Prime Minister had gone to Gorakhpur and he actually inaugurated that plant. Rather, he announced the revival of that plant, which had been closed for 30 years, the Gorakhpur fertilizer plant, at a cost of rupees 8600 crore. It's a big achievement, and this also reflects the focus of the government on agriculture and allied works. So the Department of Fertilizers, in fact, has placed the demand to the tune of rupees 58,430 crore. This includes rupees 15,000 crore for urea subsidy scheme, rupees 26,602.66 crore for indigenous P&K subsidy, rupees 16,827.34 crore for imported P&K subsidy. Sir, this particular government has been talking of 100% neem-coated urea, and the work has started, and let me tell you with a lot of confidence, and that is what we have been seeing on the ground. We are all in Loksabha, connected very much with the ground. Sir, the illegal usage of urea, the diversion of urea has been stopped because of the Prime Minister's focus on ensuring 100% neem-coated urea. So the Ministry of Agriculture and Family Welfare has placed the demand for 2,222.03 crore, and this includes rupees 241 crore for the northeastern region. I would request this August House to kindly extend your support. So the Ministry of Civil Aviation, in fact, everybody has been talking about the disinvestment, talking about the Air India. We seek approval for 66,820.05 crore. I think the matter has been debated enough. I would not like to dwell on that. This will be utilized for equity infusion in Air India Assets Holding Company for repayment of past government guaranteed borrowing and past dues liabilities of Air India. I would like to quote Honorable Prime Minister here. Honorable Prime Minister had rightly said a couple of weeks back that the disinvestment of Air India is the biggest example of public-private collaboration to deliver quality and improve services for Indians. Sir, 2 words stand out: to deliver quality and improve services for Indians. I think the good governance model will definitely talk of this. Sir, Ministry of Defense, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, देश की सुरक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. The government here has placed a demand for rupees 9,790.18 crore. This involves rupees 5,000 crore revenue expenditure for defense services, rupees 3,790.18 crore for capital outlay, and rupees 1,000 crore for civil defense. So the Ministry of Railways, I think we are aware of the importance of railways. So Indian Railways is certainly not only a medium to connect distances. I quote Prime Minister Modi again. Indian Railways is not only a medium to connect distances, but it is also becoming an important medium to connect the country's culture, tourism, and pilgrimage. सिर्फ दूरियों को रेल कम नहीं करता है, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे तीर्थ स्थलों को, हमारे पर्यटन स्थलों को जोड़ता है. इसलिए रेलवेज का बहुत महत्व है. The present government under the leadership of Prime Minister Modi is talking of a national rail plan so that we are future ready. By 2030, we are absolutely ready, and there is focus on that. आपने कल रात के कुछ तस्वीर आपने देखे होंगे सोशल मीडिया में और आज खबर कागज में भी, अखबारों में घूम रहे हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे कल रात.
उन्होंने निरीक्षण किया, देखना चाहते थे कि काशी का रेलवे स्टेशन साफ है या नहीं, सुसंगठित है या नहीं, सुंदर है या नहीं। तो मुझे लगता है अगर देश के प्रधानमंत्री मध्य रात्रि में रेल स्टेशन पर घूमे तो देश के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। अच्छा लगे या न लगे, लेकिन जो सच है उसे हमें मानना पड़ेगा। और जहां तक गुड गवर्नेंस मॉडल का सवाल है, हम सुशासन की बात करते हैं। दिसंबर 25 आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनिवर्सरी है, हमें पता है, और उसे हम सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं। जहां तक सुशासन का सवाल है तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और सुशासन के तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है हम सब हमें सबको इसका स्वागत करना चाहिए। वी नीड टू एक्सेप्ट दिस एंड कांग्रेचुलेट एंड अप्रिशिएट। Sir, as I told you, not just formulation of schemes, but the implementation of the schemes is extremely important, and that is why the PM National Gati Shakti program has come. Rupees 100 lakh crore have been earmarked for that matter, and I think we need to appreciate this endeavor of the government. Sir, with Janta in its heart, with Atmanirbhar Bharat as the vision, under the leadership of Prime Minister Modi, we will all, the government, will continue to walk the talk, deliver, and make dreams come true. Now with this, I would very humbly request all the esteemed members of the House to kindly extend support to the second batch of supplementary demand for grants for rupees 3.73 lakh crore. Thank you so much. I request the other speakers to keep in mind the time allotted for your respective parties. So the next speaker is Shri Ritesh Pandey ji. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात को यहां रखने का अवसर दिया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने देश के बढ़ते स्टॉक मार्केट और भ्रामक सरकारी नीतियों का हवाला देते हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक दिव्य स्वप्न हमारे सामने रखने का काम किया है, लेकिन सच्चाई माननीय सभापति महोदय इससे बहुत दूर है और मैं आपके माध्यम से सरकार को इस दिव्य स्वप्न से जरूर जगाना चाहूंगा। जहां एक तरफ सरकार ने अपना ध्यान यूनिकॉर्न्स पर केंद्रित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, वहीं नोटबंदी तथा जीएसटी के खराब क्रियान्वयन से और कोविड महामारी ने देश के छोटे और मध्यम वर्ग उद्योगों को नष्ट कर दिया है। यह छोटी और मध्यम वर्ग उद्योग हमारे देश के रोजगार दाता थे। देश की कुल जनसंख्या का 70% व्यक्ति, कुल जनसंख्या के 70% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और ये 70% लोग देश की आर्थिक या देश की इनकम लेवल में 46% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। वास्तविक वेतन, जिसको रियल वेजेस कहा जाता है, जिससे आम व्यक्ति की खरीदने की क्षमता को आंका जाता है, उसको अगर हम देखें वो पूरी तरह से या तो स्थिर है और या तो घट चुकी है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण उपभोग में भी गिरावट आने का काम हुआ है। महामारी के पहले जनवरी 2020 में ही सरकारी संस्था एनएसओ द्वारा सर्वे में यह स्थापित कर दिया गया था कि भारत में उपभोग उसी समय 10% की गिरावट आ चुकी थी। जहां ग्रामीणों की आमदनी गिरी, उनकी खरीदने की क्षमता घटी, वहीं लोगों की नौकरियों को मिलने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर देना पड़ा। इसी के साथ साथ चप्पल से लेकर चपाती तक में ग्रामीण इलाकों में बढ़ोतरी देखने का काम किया गया, जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था स्वाहा हो गई है। अब इसी बीच छाती पीटते हुए, थाली बजाते हुए एक हमारी अर्थव्यवस्था को और खत्म करने के लिए एक बहुत ही कठोर लॉकडाउन लागू किया गया। उस समय लाखों प्रवासी मजदूरों को एक बहुत ही घातक और बहुत ही कठिन पदयात्रा पर वापस अपने घरों की तरफ भेजने का काम किया गया
और जब वो अपने ग्रामीण इलाके में पहुंचे, अपने गांव में पहुंचे, तो वहां उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा? वहां उन लोगों को वापस पहुंचते ही महंगी खाद, महंगा डीजल और गिरती हुई कृषि आमदनी का सामना करना पड़ा, जिससे ग्रामीण भारत में गरीबी और व्यापक तरीके से फैलने का काम हुआ। इसी वजह से हमारे सामने मनरेगा की डिमांड में एक बढ़ोतरी देखने को मिली। और ये मान्यवर, आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी फिर जो मनरेगा डिमांड में पैसा दिया जा रहा है, ये हमारी सरकार की खामियों को उजागर करने का काम करता है। लेकिन क्या सरकार इससे कुछ सीखती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सन 2020-21 में बजट में केंद्र सरकार ने 61,500 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए आवंटित किया था, जो कि 19-20 के रिवाइज बजट से 13% कम था। 19-20 के रिवाइज बजट से 13% कम था, जिसमें महामारी हमने झेली थी। जाहिर सी बात है कि यह आवंटन कम पड़ गया और सरकार को 40,000 करोड़ रुपया इस सदन से दोबारा मांगना पड़ा। इस साल भी जब महामारी और मंदी का प्रकोप ग्रामीण इलाकों में व्यापक था, फैला हुआ था और उसने अपना तांडव पूरी तरह से दिखाया, तभी भी जो है इस सरकार ने मनरेगा के आवंटन में मात्र 1.8% की वृद्धि करने का काम किया, जो कि कोविड की दूसरी लहर के बाद भी इतनी कम वृद्धि जो है, ये कहीं ना कहीं सरकार की एक विफलता को दिखाने का काम करता है। इनकी दूरगामी सोच में जो पर्दा लगा हुआ है, उसको हमारे सामने लाने का काम करता है। इसी कारण अक्टूबर के महीने में तमाम राज्यों ने मनरेगा के फंड्स को खत्म होने की गुहार लगाना शुरू कर दिया और आज फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि उसको फिर बढ़ाने की बात की जा रही है। सरकार को एक दूरगामी सोच के तहत इस चीज को पहले ही सोचना चाहिए था। मनरेगा का जो इस साल आवंटन किया गया है, ये 2015 और 16 के वास्तविक आवंटन से कम है। वास्तविक आवंटन से मेरा मतलब यह है कि इन्होंने इन्फ्लेशन को अगर अकाउंट में लिया जाए तो उससे ये कम होने का काम करता है। और ये 2015 में जो है, जब ये हुआ था, जब नोटबंदी जैसी घातक नीतियां हमारे सामने आई थी, और अगर हम नोटबंदी की ही बात करें माननीय अध्यक्ष जी, तो हमारे सामने 17 लाख रुपए का नकदी जो है नोटबंदी के समय था, और आज की तारीख में आरबीआई ने फिर से अपने आंकड़े दिए हैं और उसमें लगभग 30 लाख करोड़ की नकदी हमारे जो है अर्थव्यवस्था में आने का काम हुआ है। मेरे ख्याल से जो हमारे लाखों लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग थे, उनका लाइन में लगना और अपनी दुकानों को बंद कर देना, अपने बिजनेसेस को बंद कर देना, वो व्यर्थ ही हो गया मान्यवर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को ना तो सिर्फ काला धन वापस आया और ना ही किसी को 15-15 लाख रुपया उनके खातों में मिलने का काम हुआ। अब मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े जिनका हमारे सामने जो आने का काम होता है, इसका आम जनता के जीवन से क्या मतलब होता है। दाल, तेल, गैस की बढ़ती कीमतें, गिरती आमदनी और नौकरियों के अभाव से गरीबी और व्यापक होती चली जा रही है। यह अत्यंत ही चिंता का विषय है कि 2014 से निरंतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के आंकड़ों में डरावनी। I have 10 minutes, sir. I have 10 minutes. No, sir, I have 10 minutes. That's what he told me. He said I have 10 minutes. So, शिक्षा के आंकड़ों में डरावनी प्रवृत्ति देखने को मिली है। इस सरकार को रैंकिंग का बड़ा शौक है मान्यवर। मैं आपके माध्यम से रैंकिंग जरूर एक रैंकिंग रखना चाहूंगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। मान्यवर, उसमें भारत की रैंकिंग 101 पायदान पर है और हम जो सबसे पीछे देश है, हमसे पीछे मात्र 16 और देश हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी देश भी हमसे इस रैंकिंग में आगे हैं मान्यवर। भारत में भुखमरी की कगार को वैश्विक रूप में हमें एक गंभीर बीमारी से हम झेलने का काम करते हैं। ये पूरी दुनिया मान रही है कि भारत में ये स्थिति पैदा हुई है। भारत में 33 लाख बच्चे कुपोषित हैं, 60% महिलाएं एनीमिक हैं, 55% बच्चे निर्बल और नाटे कद के हैं। लेकिन फिर भी यह सरकार इस सदन से जो पोषण का धन मिला हुआ है, उसको खर्च करने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज भी उत्तर प्रदेश में मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सदन को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मिड डे मील का पैसा है, वो प्रतिदिन प्रति बच्चे पर मात्र 5 रुपया आवंटित किया गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदन से पूछना चाहता हूं कि 5 रुपए में कौन सा पौष्टिक भोजन इन बच्चों को मिल रहा होगा। आप लोग जरा इस पे गौर करने का काम करिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों ने बहुत ही बड़ा जो है अपना स्कूल का वर्ष खोने का काम किया है, और यदि सरकार उसके लिए कोई नीति जल्दी नहीं लेके आती है तो उनका 1 साल का पूरा शिक्षा का कार्यकाल पूरी तरह से अंधकार में चला जाएगा।
तो अगर ग्रामीण भारत की यह स्थिति है और वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है मान्यवर, तो आखिर फायदा किसको हुआ है, इस पर भी यह प्रश्न उठता है। मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास भारत की आधी जनसंख्या का धन, आधी जनसंख्या के पास जितना धन है उतना मात्र 1% लोगों के पास है। लॉकडाउन के दौरान देश के सबसे अमीर आदमी ने 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम किया। भारत में पिछले 7 साल में जो भी आर्थिक बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है वो बिना रोजगार सृजित किए हुए मिली है, यानी कि कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, क्योंकि चंद पूंजीपति लोगों के लिए अनुकूल नीतियां बनाने का काम ये सरकार करने का काम करती है। मान्यवर, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, सिर्फ उन्हीं सेक्टरों के लिए नीतियां बन रही हैं जिसमें रोजगार सृजित नहीं होते। कौन से हैं ये सेक्टर? बस 2 मिनट्स मोर, आई एम कंक्लूडिंग इन 2 मिनट्स। कौन से हैं ये सेक्टर? ये सेक्टर टेलीकॉम और ये सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। वहीं पे अंतरराष्ट्रीय ट्रेड एग्रीमेंट से हम बाहर रह करके जो हमारा टेक्सटाइल जैसा सेक्टर है जिसमें अंदर एक भारी रूप से रोजगार सृजित होने का काम होता है, उस सेक्टर में मान्यवर हम लोगों ने अपना बिजनेस बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम को खोने का काम किया है। दरअसल बात यह है कि सरकार की सारी नीतियां एक ही कार्यालय और एक ही व्यक्ति के अंदर समाहित हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जी हजूरों की फहरिस्त लगी हुई है, और जिसकी वजह से हम और आप चाहे जो कुछ यहां पे बोले वो भैंस के आगे बीन बजाने का काम करना है। कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यह सरकार विभाजनकारी और पूंजीवादी राजनीति को प्राथमिकता देकर दलित, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ छलावा करने का काम कर रही है। जहां अयोध्या और काशी के नाम पर ढिंडोरा पीट करके और हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने का काम किया जा रहा है, वही समाज में जातिवाद और आर्थिक असमानता की खाई को कम करने के लिए इस सरकार ने एक भी ठोस कदम उठाने का काम नहीं किया है। ऐसी राजनीति का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान्यवर, आपने कभी सोचने का काम किया है आप कब तक नफरत की नींव पर अपने चुनाव को लड़ने का काम करेंगे? देश के पूंजीपतियों के हाथों में देश को गिरवी रखकर आप कहां पर जाएंगे? सबका साथ और सबका विकास कब होगा? अच्छे दिन कब आएंगे? आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयदेव गला जी। Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak on the second batch of supplementary grants demands of the Government of India. Sir, the Honourable Finance Minister has come before the House with one of the largest, if not the largest, supplementary demands in recent times. She has come seeking approval of this House to draw 2.9 lakh crores net additional expenditure, and total gross expenditures proposed at 3.74 lakh crores through these demands. And I'm sure is not the final one, as she will come back to the House again sometime in February next for the final supplementary demands. But sir, I did not find any mention about additional expenditure on COVID vaccination. I'm saying this because the expenditure is now estimated to be more than 50,000 crores, which has surpassed the budgeted amount of 35,000 crores. So will the Honourable Minister throw some light on this as to how much has so far been spent and what is the additional amount required for the COVID vaccination? Sir, I would like to draw the attention of the House to a few points about Andhra Pradesh before getting on to the supplementary demand for grants. The first is the AP Reorganization Act of 2014, which lists 18 major assurances that have been given to the state of Andhra Pradesh. I would not like to mention all 18, as we have raised these in the House multiple times in the past. But one of the major assurances was the granting of the special category status for the state, which is still pending. Sir, Polavaram, the lifeline of Andhra Pradesh, continues to get delayed. The main reason is flow of funds. The Technical Advisory Committee has approved revised cost estimate of 55,650 crores. I request the Honourable Minister to release the dues to the state of Andhra Pradesh and approve the second revised cost estimates of the project without any further delay. Sir, Section 46(2) of the AP Reorganization Act clearly says that the Honourable Finance Minister is also aware that the central government should provide grants and also adequate benefits and incentives in the form of special development package to
the backward areas of the state. And Section 94(2) also clearly mandates that the central government, and it says, the central government shall support the programs for the development of backward areas in AP, including expansion of physical and social infrastructure. And on the basis of this provision, the then Prime Minister assured on the floor of Parliament that grants would be given to the backward districts of AP on the lines of the support given to the KBK districts and Bundelkhand region. But the Government of India has given just 1,050 crores and washed off its hands. This is not fair, sir. This Parliament has to honor the legislation it has passed and the assurances given to Andhra Pradesh. So I request the Honourable Finance Minister to announce the package to backward districts in AP on the lines of the KBK and Bundelkhand packages. Sir, coming to Kadapa Steel Plant is another mandate given by the AP Reorganization Act to the Government of India. We are in the 8th year of implementation of the Act, but neither SAIL nor the Government of India has done anything tangible on this front. I only appeal to the Honourable Finance Minister not to allow this issue to die in the corridors of power. Kindly announce setting up of this steel plant. Sir, AP is ready to provide all necessary facilities like water, electricity, land, tax concession, etc. So I request the Minister to kindly take this up. The Honourable Finance Minister must have got information from her sources that the agitation for withdrawing the sale of the Vizag steel plant is at its peak. All I appeal strongly is to reconsider the decision of privatizing RINL and let it run as it has started to earn profits again. With these points, I would now like to move to the supplementary demand for grants, which I will complete quickly, sir. With these supplementary demands, the size of the budget goes up from 34.83 lakh crore when presented at the start of this year to 37.82 lakh crore, an increase of nearly 9%. The positive indication is that there is an expected buoyancy of 2 lakh crore more to come from tax collections. If it is not so, I wish to know from the Honourable Minister to what extent this additional supplementary demands would see slippage on the fiscal deficit front. Can we stick to the target of 6.8% as budgeted, or is there a slippage and will it go beyond 7% with this additional expenditure? I request the Honourable Minister to please provide clarity on this. The next point I wish to make, we have the figures of tax collections for the first 7 months of this fiscal, which is about 64.7% compared to 35% last year, which comes to on an average about 45%. The revenue receipt is 70.5%. Tax revenue is 68.1%. Non-tax revenue is 85%. And disinvestment is 10.5%. Of course, there are justified reasons of the pandemic for this not so appreciable 10.5% figure, which may go up if the LIC issue comes out. So whether the tax revenue can achieve the budget figures in the remaining period may kindly be known to this House. And because people never anticipated that 67,000 crores net would go to Air India, which was also not budgeted, and if you take into account the surplus from RBI, which is around 50 to 52,000 crores, I just wish to know what would be the figure of the borrowings. I'm asking this because Omicron has entered into the country, and as many as 40 cases have already been reported from various corners of the country, with the first death reported from the UK yesterday globally. Will this lead to another lockdown and economic turmoil? I do not wish so, but I would like to know how the ministry perceives the coming months may kindly be known to the House. The next point I would like to know is what are the reasons that the capital expenditure is just hovering around 45.7% in the first 7 months of this fiscal? Because even during last year, when we had the huge second wave of the pandemic, the capital expenditure was slightly higher at 48%. So will the Honourable Minister please explain where we have faltered? The next point is about disinvestment. People were thinking that BPCL, LIC and others would be through, but it seems BPCL is still languishing, and some statements have come from LIC, but still there are some doubts. And in the first almost 9 months, the investment collections are minuscule compared to what you had budgeted. So what is the approach of the ministry on this front, and can this be construed that we'll falter again on disinvestment this year as well?
The next point, sir, is how much government is going to lose in view of reduction in excise duty on petrol and diesel, telecom reforms package, and reframing the dues to be collected from the telecom companies. Secondly, you have also launched the Ujjwala 2.0 and sanctioned 1 crore LPG gas connections to the poor. But as of 1st December, nearly 81 lakh connections have been given, and there are reports that the ministry may sanction 1 crore more connections and also extend increased number of free cylinders. Please conclude. 2 minutes, I'll complete, sir. That the ministry may increase the number of free cylinders from 1 to 3 or 4. This entails additional expenditure, and how much the ministry has to adjust for this may also kindly be known to the House. One last point, sir. This is a very important point. The recent heavy rains due to the deep depression in the Bay of Bengal and the consequent very heavy floods in several districts of Andhra Pradesh have damaged agriculture crops in more than 6 lakh hectares and nearly 5 lakh hectares of horticulture crops. The breach to the earthen bund of Annamaya project has caused an unprecedented flood to Cheyuru River in Kadapa district, causing terrible damages to human life, animals, residential houses, roads, and huge siltage of sand in thousands of crop villages. Around 61 persons have lost their lives. Considering all of this, I would request the kind intervention of the Minister to sanction and release the funds from NDRF to the state of Andhra Pradesh to undertake relief, rehabilitation, and reconstruction programs to help the victims of recent deep depressions and heavy floods in Andhra Pradesh. Also, to take necessary steps to implement the Bhupender Singh Hooda recommendation of 10,000 rupees per acre input assistance to farmers whose crops are damaged due to natural calamities. And finally, an urgent need to make changes in the norms of scales of assistance to tackle losses due to natural calamities. Sir, with these submissions, I support the demands. Thank you very much. Thank you. Shri A. Marif ji. For giving me the opportunity to speak on supplementary demands for grants, second batch for 2021 and 2022. The government has sought for the approval of crores of rupees as supplementary demands for various ministries and departments, which are discussing now. Before entering into the demands discussion, the government has shown no intention to yield to genuine requests made on the floor of this House by members, even if it just needs to spend a few crores out of it. Sir, for the past 1 year, I have been repeatedly bringing to the attention of the Ministry of Education on the need for taking over project sector Kendriya Vidyalaya in Kayangulam in my parliamentary constituency going to close because of the withdrawal of sponsorship by NDPC. In this session itself, Honorable Education Minister replied to my question that it would not require even 50 crores per annum to take over 14 project sector Kendriya Vidyalaya in this country, which are on the verge of closure from next academic year due to the withdrawal of sponsorship by public sector companies of India. Most of them belongs to the BJP members, leaving the future of students there in limbo. Honourable Finance Minister, please listen. Even then, this government has been non-committal to spending such a small amount for sake of future of the children for the KVs. But at the same time, spending huge amounts to start new KVs across the country. Hence, at the outset, I once again request the Honourable Minister of Finance allocate 50 crores rupees to Department of Education, converting 14 project sector KVs to civil sector across the country. Then come to the demand for grants, number 1. Now I wish to raise matters related to the important ministries and as well as departments, one by one, starting with the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. Sir, our Prime Minister has been vociferous about Annadatas of the country every now and then in his speeches for the last few years. Yet the farmers of the country got nothing but false promises from this government. Honourable PM had promised way back in 2016 that farmers' income would be doubled by 2020. But now it says it cannot be achieved as the farm laws were repealed. Then what the government was doing for the past 5 years,
but it has not taken any concrete step for increasing the income of farmers. At least the government need to acknowledge that farmers have lost their life during the one-year-old protest and give an ex gratia of ₹10 lakhs for each grave families. It could have make a demand for the sufficient fund for the same supplementary grants. Also, the government has remained uncommitted to give statutory backing for the minimum support price, which has been long pending demand of farmers across the country. I request the government to heed on this genuine demand of farmers and bring the legislation for the same without further delay. Then about the cooperation, what is the government approach to the cooperative sector? The government is again and again proving that it is not having even scant regard for the federal principle which guides our constitution. This is evident from the direction given by the RBI banning the use of the term bank by cooperative societies in the country. So the cooperative banks play a major role in meeting the credit demand of the rural areas of the country, and depriving them from offering bank services will severely destroy the backbone of the rural economy. Hence, I request you to give direction to the RBI to allow the cooperative society to provide banking service without any hindrance. Then about the food and public distribution, demand number 15. Sir, I wonder what purpose of the government is seeking additional grants for Ministry of Food and Public Distribution. The cost of essential commodities, including vegetables, are skyrocketing in the country for the past few months. But this government has not taken any steps to control the prices and people over the burdens. I would like to know what are the measures going to take for the control of the inflation. Sir, coming to the demand 18, 19, 20, coming for the defense sector, the government's silence in the reported move by France to inquire into the alleged corruption related to the Rafale deal by the India generates suspicion that it wants to hide the truth from the people of this country. The inquiry has started after the clearance of the Honorable Supreme Court of India on the litigation regarding the Rafale deal. Hence, I request the Union government to also order an inquiry. Sir, 1 minute. Joint Parliamentary Committee to the Rafale deal. Then, demand number 44. The world over, we have seen how various governments came forward to extend helping hand to their citizens during the unprecedented crisis due to COVID-19. Demand number 34 and 35 taxes. As we all know, how the government has pushed the people of country by increasing the central excise duty on petroleum products when the crude oil prices once gone down in the international market since March 2020. I am not more explaining it. So this government itself has informed in this house that there has been 495% increase in the income from tax on petroleum products after the BJP government has come into power in 2014. This is nothing but looting money from the pockets of the common people and throwing them to hardship. Sir, without even an executive order or announcement, this government has stopped giving 12 LPG cylinders at subsidy rates all on a sudden, and no one knows when such a decision was taken and who was responsible for that. So demand number 84. Now the government says that it has no intention to reintroduce the concession fares to senior citizens which existed before the COVID-19 for rail journeys, sir. Sir, why are you this much of cruel to the senior citizens? Please conclude. Only one. Sir, the health sector, we are not yet recovered from the COVID-19 pandemic. It's almost a year we have started COVID-19 vaccination in our country, but yet only 37.3% population of the fully vaccinated, and those who got at least one dose is in just about 59%. Even this much of people would not have got if the Honorable Supreme Court has not intervened. Coming to the economic sector, yesterday's Indian Express has reported how this government has been generous to the corporate defaulters, while in the last financial year the total rupees of 2.02 lakh crore were write-off. After coming to power in 2014, the BJP government has written off the total rupees of 10.7 lakh crore written off.
At the same time, what it gives to common people RFG, of the please country, conclude. just 5 kilograms of rice, 5 kilogram pulses of the past months. I conclude. I can't support your supplementary demands for grants because of it is not fulfill the needs and demands of poor people of the country. Thank you. Thank you, sir. Honorable members, those who want to lay their speeches on the table may do so now. Next is Shri Abdul Samad Samdani ji. Thank you, sir, for permitting me to take part in this very important discussion on the supplementary demands. Sir, enough has been said about these supplementary demands and the budgetary allocations and also the economic policies of the government. It is quite natural, sir, in this kind of an occasion, we will be naturally going into the details of the positive and negative aspects of the government's economic policy. Sir, Mahatma Gandhi said, whenever we are going to take a decision, especially with the welfare of the people, related with the welfare of the people, we have to take into consideration at the foremost level the most grief-stricken person of the country, the last person standing in the queue. Sir, with such an angle, if you observe the economic policy of the government, sir, we are compelled to say that it is a very sorry picture, a dismal picture that the government is presenting. In short, sir, what has happened in the country is that the rich are getting big things and the big persons in the country are getting rich. That is happening. And the government is adding fuel into the already existing difficulties, pains and anguish of the depressed, downtrodden, backward sections of the country, including the minorities and the Dalits. Sir, for a very economic policy, if it has to be healthy, the country, the governing authority has to take into consideration, first of all, the diverse character of the country. The diversity is very important. It is a very backbone of democracy. Sir, democratic countries can become rich countries. There is a lesson before us. For example, sir, according to the latest statistics, world statistics, the top richest countries of the world by per capita income are, out of 10 countries, 8 countries are full-fledged democratic countries. 1 country, half democratic country. It's a lesson for us, sir. Those countries are Luxembourg, Ireland, Switzerland, Norway, USA, Iceland, Denmark, Singapore, and Australia. All these countries, democratic countries, have come to progress. But, sir, what is our country's real situation? Mere arithmetics of the statistics will not be able, sir. With that, the government cannot conceal the picture of the grief-stricken people of the country. For example, sir, the Center for Monitoring Indian Economy, CMIE, according to their statistics, it is a very sorrowful picture that the poor people of the country are facing. We know, sir, the condition that is existing in the COVID days and the fuel price hike, and also now in the global hunger index, India has taken place. Nobody can deny. The statistics can be denied, but the spirit cannot be denied. The meaning cannot be denied. Sir, and for even in such a situation, I don't know why the government is trying to exploit the distressed people. I can't understand the logic, sir, behind the withdrawal of the concessions given for the elders among the train passengers. It has been withdrawn. Sir, I oppose it. It is very bad. It was a concession already enjoyed by the elders of our railway passengers. Such economic measures are taken by the government.
And, sir, in certain states, the land of the poor persons, they are confiscated. In Assam, the trouble took place. The real phenomena behind is that their lands are confiscated. In Assam and Tripura, there were attacks against minorities. Sir, it is a part of the corporate agenda that accumulation through dispossession. That is a new liberal world's, it's a part of new liberal world's economic policy. Our सरकार सर पिछड़े जो तबका है उनके जो लोग हैं उनको बचाने के लिए कुछ नहीं करते, उनको मदद करने के लिए कुछ नहीं करते। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। Sir, they are just mourning upon their condition, but they are not ready to help our people. And sir, our honorable finance minister is present in this house. Sir, the government should clarify to the country why these public sector assets have to be sold for the corporates in the name of bringing private participation in public sectors. Sir, our public sector institutions are... Sir, please, 2 minutes. Please. Sir, our public sector institutions are actually... No. Sir, I am only speaker for my party. Sir, these public sector institutions are the symbols of our national sentiment. It is the symbols of our freedom movement. And sir, and it's a sign of our national pride. Sir, giving for lease, and the government, the honorable minister was saying that 20 items of assets will be sold within 4 years, and 6 lakh crores of rupees will be collected. Sir, is this kind of a policy will be good for our country? That has to be, sir, taken into consideration. And sir, there is now the corporates are getting 2 benefits. One, the tax reduction, and they can purchase good assets, valuable assets for cheaper rates. In these 2 ways, they are helped by the authorities. But sir, I would like to stress and emphasize here, this privatization of the airports, railways, in the list of which our very important airport in Kerala, Kozhikode Airport, is also included, sir, which belongs to my constituency. Sir, we oppose it, because the service mind behind all these public sector institutions cannot be implemented and cannot be taken into consideration by the private parties. They look for profit only. Sir, I am concluding. While I conclude, I would like to stress the fate of our peasantry, the farmers. Sir, agriculture is the very basis of our Indian economy. Not only Mahatma Gandhi, everybody, our great leaders of our country have stressed the role of peasantry, the farmers. And the government's attitude is very negative. And for even, sir, centuries back, I remember a king who ruled our country about 1 million years. He said, sir, 1 minute, I am concluding by just making this quotation. The cultivators are a source of prosperity. I have encouraged them and shall always watch over their condition, that no man may oppress and injure them. If a ruler cannot protect the humble peasantry from the lawless, it is tyranny to extract revenue from them. I quote, unquote. Sir, in this way, the peasantry and the labor class have to be protected. So, in the circumstances, I think the government will be coming forward to correct this kind of policies and to include the interests of the downtrodden and the backward classes into consideration. Thank you. In this circumstance, sir, I am standing here to oppose this demand for. Honorable members permit, the House may be extended till 7 p.m. Thank you. The next speaker is Hasnain Masoodi ji. बहुत शुक्रिया जनाब। मैं खड़ा हूँ सेकंड बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स
फॉर ग्रांट्स 2021-22 पर बहस में शिरकत के लिए। जनाब, इन ग्रांट्स के जरिए मुतालबा किया जा रहा है 3,73,761 करोड़ का, जिसमें से 2,99,243 करोड़ का प्रोविजन है। जनाब, मेरा मंशा ये नहीं है कि मैं जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी जो उनका खुलूस है, उनकी नीयत है, उनकी जो काबिलियत है, उस पर कोई सवाल निशान खड़ा करूँ। जनाब, सिर्फ 24 घंटे पहले श्रीनगर में एक पुलिस की गाड़ी पर, पुलिस बस पर हमला किया गया, 3 पुलिस वाले जाँ बहक हुए और कोई 12 के करीब जख्मी हुए। ये दूसरा वाला वाक़ा था श्रीनगर में ही। उससे पहले एक और एनकाउंटर में 2 नौजवान मारे गए, और इससे पहले कुपवारा में एक सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर ने अपनी जान खुद ली। पिछले कई बरसों से, खासकर 5 अगस्त के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस में सुसाइड का रुझान बढ़ता जा रहा है। उसके लिए आप अंकड़े देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं। जनाब, जो सरकारी जो एदाद शुमार है स्टैटिस्टिक्स, उसके मुताबिक 5 अगस्त 2019 में जो फैसले किए गए आईन के खिलाफ, उसके बाद 1050 के करीब एनकाउंटर्स हुए हैं, 500 के करीब जानें चली गई हैं। और जनाब, हर साल, क्योंकि इसमें होम पर भी एक इजाफी जो भी मुतालबा किया जा रहा है, तो हर साल जम्मू कश्मीर में सड़कों पर अमन कायम रखने के लिए, LOC LAC पर अमन कायम रखने के लिए 8000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। और आज देश जायज तौर पर, अवाम जायज तौर पर पूछते हैं इस सरकार से 5 अगस्त के फैसलों से मिला क्या? एक अनसर्टेनिटी के बगैर, दूरियों के बगैर, खलीज के बगैर और क्या मिला? और मामला वही का वही है जहां मामला था, और सिर्फ बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ गई, और जो तशद्दुद के वाक़ात थे वो बढ़ गई, और जो सिक्योरिटी फोर्स पर जो प्रेशर है, माउंटिंग प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो बढ़ता जा रहा है। तो जनाब, 5 अगस्त और 6 अगस्त को जब ये 2019 को जो फैसले किए गए, उस वक्त जो मिस्टर से जिन पर ये मार्केट किया गया, धीरे धीरे वो सब शराब साबित हुए, सब झूठे साबित हुए। जनाब, अभी PRI के इलेक्शंस की बात की गई। आपको ये आश्चर्य होगा सारे हाउस को ये जानकर कि जो पंच और सरपंच चुने गए, उनमें से अक्सर इस वक्त प्रोटेक्टिव कस्टडी में है। 30 तो सिर्फ डिग्री कॉलेज में है अनंतनाग के, और उसके अलावा मोस्टली जो हैं उनको अपने इलेक्टोरेट के पास जाने नहीं दिया जाता। आप जनाब इस साल जो हमारे मिनिस्टर साहिबान थे जनाब, वो वहाँ तशरीफ लाए एक साइट सी के प्रोग्राम के में। वही मैं कहने जा रहा हूँ, वही मैं कहने जा रहा हूँ, वही मैं कहने क्या जनाब, ये अगर भाषण इनको देना है, अगर भाषण दें तो अपनी बारी पर भाषण दे जनाब। ये कहें आप हाउस, ये मालूम करें क्या इस वक्त 30 के करीब। मुझे लगता है कि एक बात मैं माननीय सदस्य का सम्मान करता हूं, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि जब वो ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है ये तथ्यों से परे है, जो सदन में नहीं होनी चाहिए। देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल के 50 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री वहां जाते हैं, मैं भी उसमें से एक हूं जो 2 बार गया हूं। वहां पर जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद है, फिर आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक कस्टडी में है, ये ठीक नहीं है। During the reply, don't worry, please. जनाब, you carry on. जनाब, जो मंत्री और इनके शामिल मंत्री आए, इन्होंने कहा था, पहले ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ तरक्की नहीं है, लेकिन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और बाकी मिनिस्टर्स, जिस कन्वेंशन सेंटर को उन्होंने इस्तेमाल किया इंटरेक्ट करने के लिए, वो खुद से पूछना चाहिए था वो कब बना है। वो कन्वेंशन सेंटर जो एशिया का सबसे अच्छा कन्वेंशन सेंटर है, वो कन्वेंशन सेंटर कम पड़ा है। और जो पार के सड़क के उस पार जो रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में आप गोल्फ के खेलने के लिए गए, जो एशिया का 10 गोल्फ कोर्सेज में सबसे अच्छा गोल्फ कोर्स माना जाता है, वो कब बना था? ये मुझे कहना नहीं है। मुझे कहना ये है कि जनाब, देश एक सवाल पूछ रहा है कि 5 अगस्त को मिला क्या,
और जिस तरह आपने फॉर्म लॉज पर खुद एहतसाबी का सबूत दिया, खुद से सवाल पूछने का सबूत दिया, इसी तरह 5 अगस्त के फैसलों को आप एक रिअप्राइजल कीजिए, उन पर अलसरना गौर कीजिए और देखिए कि क्या ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप वसी कल्बी का मुजाहरा कीजिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा कदम लिया कि उसने कैबिनेट को पूछे बिना सबको अपने मन की जो बात थी वो कहा और उन्होंने कहा कि मैं लेता हूँ। देख बस अभी तो मैंने स्टार्ट शुरू ही किया, अभी तो मैं इसका पस मंजर ही बोल रहा था। तो जनाब यह बात हुई तो मेरा मुतालबा होगा कि उस पर नए सिरे से आप गौर कीजिए। तो अब रहा कि ये जो आज की जो ग्रांट्स है, अब देखिए हजारों करोड़ रुपए टाटा को फैसिलिटेट करने के लिए खर्च किया जाता है सिविल एविएशन में, लेकिन अवंतीपोरा का जो 4 साल से पड़ा है जो हमारा एयरपोर्ट, उसको सिविल ऑपरेशंस के लिए शुरू नहीं किया जा रहा है। जनाब एमजी नरेगा में जो मटेरियल कंपोनेंट है वो 2017 से कुलगाम और दूसरे इलाकों में रिलीज नहीं हो रहा है। उससे क्या है कि अगर आपने टाइम फ्रेम दिया है वेजेस का, लेकिन वो वेजेस मुतासिर होते हैं जब आपने मटेरियल जो कंपोनेंट है वो नहीं रिलीज किया। जनाब जल जीवन जो है वो तो बिल्कुल कहीं है ही नहीं। 60% से कम लोगों को साफ पानी दिया जा रहा है। ये तो एडमिटेड है, जो दिशा मीटिंग्स हुई उनमें एडमिटेड है, जो मैंने खुद देखा। तो जनाब बिजली का कोई नेब निशान नहीं है। 2 कश्मीर है, एक कश्मीर जो कल्चरल प्रोग्राम्स के साथ रहता है कन्वेंशन सेंटर में, और दूसरा कश्मीर है जो डूबा हुआ अंधेरे में, जहां पर 13 घंटे का शटडाउन हो रहा है। तो जनाब 20% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट की शरह हो गई है। तो जनाब जो फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है, तो उसकी धज्जियां उड़ रही है जो ऐसे वाक़ात हो रहे हैं जो कल के वाक़ात हो रहे हैं। तो जनाब एजुकेशन जो है, हेल्थ केयर है, जनाब सारा हेल्थ केयर जो अगरचे काम किया, हम सब ने मिलकर काम किया और कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसका मुकाबला किया सब ने। बड़ी अच्छी बात की गई कि सब ने मुकाबला इकट्ठे होकर किया, लेकिन अगर इक्विपमेंट है लेकिन कहीं पर मैन पावर नहीं है। अब जनाब सीटी स्कैन है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है वो चलाने के लिए, डिजिटल एक्सरे है लेकिन कोई टेक्नीशियन नहीं है। ये सारी चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो दी नहीं जा रही है। जनाब जो रेल है, रेल 50 साल से इंतजार कर रहे हैं, उधमपुर से बारामूला रेल का हो नहीं रहा है, और बारामूला से कुपवारा तक, बारामूला से कुपवारा तक जो रेल है और पहलगाम तक की रोड का जो वादा किया गया था वो हो नहीं रहा। जनाब जब मेरी थोड़ा सा कंसेशन जम्मू कश्मीर को होना चाहिए। अब जनाब कल लद्दाख में बंद रहा प्रोटेस्ट के खिलाफ। जो तालियां बजा रहे थे हमारे एमपी साहब है, आज वो भी मजबूर है कहने के लिए कि हमें सिक्किम का दर्जा दे दीजिए लद्दाख को। तो जनाब सारे का सारा ये सारा जो प्रोग्राम ही था मिस्टर एडवेंचर साबित हुआ। अब क्या करिए सरकार, जो सिक्योरिटी के तहत जो कानून है उसी को अपना रही है, डिलिमिटेशन का ख्वाब देख रही है, कभी कोई और प्रोग्राम बना रही है, कोई डोमिसाइल का की बात कर रही है, ये रूल ऑफ लॉ का जो धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो जनाब ये जो आप यहाँ पर जो भी आप मुतालबा पेश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो I have to call other person, please. हाँ, तो मेरा यही मुतालबा होगा कि सारी की सारी जो मसाइल हैं वो मसाइल जुड़े हैं 5 अगस्त के गैर आईनी फैसलों के साथ, वो आप ऐसे ही जैसे फार्म लॉज को आपने रिअप्राइजल के जरिए, खुद एहतसाबी के जरिए, इंट्रोस्पेक्शन के जरिए मनसूख किया, यही कीजिए और इसी से हम सही दिशा में जा सकते हैं। Honorable Member Uday Pratap Singh. Thank you, Honorable Chairperson. मैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स सेकेंड बैच 21-22 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि इस सेकेंड बैच डिमांड फॉर ग्रांट्स का जो आया देश का बड़ा महत्वपूर्ण समय पर, हमारे बजट अगले साल का 22-23 के बजट के पहले आखिर तिमाही के लिए एक महत्वपूर्ण ये डिमांड्स यहाँ पर सदन के अंदर हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश की हैं। 3.73 लाख करोड़ रुपीस की ये व्यय की मंजूरी हेतु सदन में बजट यहाँ पर आया है।
सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कोविड के समय जब पूरा देश संघर्ष कर रहा था, सरकार ने किसानों को, जहां एक तरफ आंदोलन चल रहे थे, वहां किसानों को मदद करने के लिए लगातार किसानों को सब्सिडी देने का काम किया। अभी जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का जहां सेकंड बैच आया, उसमें किसानों की फर्टिलाइजर पर सब्सिडी के लिए 58,430 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि किसानों की सरकार मदद नहीं करती, सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपके सामने कहना चाहता हूं, सदन के सामने, कि अगर सरकार ने इस कोविड के समय किसानों की मदद नहीं की होती तो जो यूरिया आज 360-65 रुपए में देने का काम सरकार कर रही है, वो 1700 रुपए बैग, 50 किलो का जो बैग आता है, वो 1700 रुपए में इस देश के किसानों को मिलता है। अगर सरकार ने उर्वरक पर सब्सिडी नहीं दी होती तो जो डीएपी की एक बैग हम 1200 रुपए में दे रहे हैं, ये लगभग 2900 से 3000 रुपए के आसपास ये बैग इस देश के किसानों को मिलता है। और जब किसान को चीजें महंगी मुहैया होती, स्वाभाविक रूप से उसका जो लाभ है, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की मंशा है, किसान की आय दुगनी होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होती, उसको नुकसान होता है। इसलिए हमारी सरकार लगातार किसानों पर फोकस करके किसानों को मदद करने का काम कर रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने लगातार, चाहे किसान की सम्मान निधि हो, चाहे किसान को एमएसपी पर खरीदी, पूरे देश में जो प्रोक्योरमेंट का काम है एमएसपी के ऊपर वो खरीदने का काम किया हो, सरकार ने कमी नहीं आने दी। पूरे देश में गेहूं खरीदा, दलहनों को खरीदने का काम सरकार ने किया, पैडी को खरीदने का काम सरकार ने किया। लगातार किसान की जेब में इस देश में हमारी सरकार ने पैसा भेजा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों एक बड़ा निर्णय इस देश में हमारी सरकार ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनकी कैबिनेट का अभिनंदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश भी उस योजना में शामिल है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकरण जो बना है, राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना जो बनी है, उसमें शुरुआती तौर पर 4300 करोड़ रुपए, 4300 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए। पहली योजना में केन बेतवा योजना को शामिल किया। बुंदेलखंड का एरिया जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शामिल होकर आता है, उस पूरे क्षेत्र में पानी पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए, इंसान से लेकर जानवरों तक को पानी मुहैया कराने के लिए केन बेतवा परियोजना एक मील का पत्थर साबित होगी। आगे आने वाले समय में हमारे बुंदेलखंड के लोगों को एक लाभकारी योजना इस देश में हमारी सरकार ने दी है। कितनी चीजें हैं जो बहुत, ये वित्तीय वर्ष जो था 21-22 का बहुत कठिन वर्ष था। अनेक योजनाएं हैं, अगर वो नहीं होती थी देश किस रास्ते पर जाता समझ से परे है। आज कोविड के चलते सरकार ने पूरे देश के, हिंदुस्तान के 80 करोड़ हमारी जो गरीब बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी है, उसको 2022 मार्च तक मुफ्त में राशन देने का काम किया। इस देश में आजाद हिंदुस्तान में किसी की भी सरकार रही हो, इतनी बड़ी संख्या में इतने लंबे समय तक गरीबों के कल्याण के लिए जो मुफ्त में राशन देने की योजना पहले कभी नहीं रही। मैं इसके लिए भी हमारे वित्त मंत्री जी और भारत की सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारे अपोजिशन के हमारे लीडर्स ने कहा कि मनरेगा एकदम तोड़ती हुई योजना है। मैं कह रहा हूं, अगर मनरेगा नहीं होती तो इस देश में जो गरीब मजदूर है हमारा, आज जो बिल्कुल बेहिचक प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास मिला है उसमें रहकर मजदूरी करने जाता है, उसे चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हर दिन हर हाल में उसको जीवन यापन के लिए राशन, पैसा और खरीदने के लिए जो रकम उसको मिलती है मनरेगा की मजदूरी के माध्यम से, वो अपने आप को सुखी और सुरक्षित महसूस करता है। कोविड के रहने के बाद में भी इस देश के बुजुर्गों ने कभी चिंता नहीं करी। हर हाल में उनको हर महीने पेंशन देने का काम अगर किसी ने किया है, हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज सेना का बजट बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। पूरे देश में अगर हम सुरक्षित हैं, यहाँ हाउस के अंदर हमारे कितने पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो जिस समय इस हाउस पर अटैक हुआ था उस समय इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे हैं। अगर उनको सुरक्षित करने का काम किसी ने किया था, हमारे सैनिकों ने किया था। इस देश की सुरक्षा करने का काम अगर कोई करता है, हमारे सैनिक करते हैं। उसके बजट को बढ़ाने का काम सरकार ने किया तो हमारी मोदी सरकार ने किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। किसान सम्मान निधि में 1,20,000 करोड़ रुपए कृषि मंत्रालय के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान के खाते में डालने का काम करते हैं। हर हाल में किसान मजबूत हो, सशक्त हो, इस बात की सरकार हमारी चिंता कर रही है।
सबसे महत्वपूर्ण, देश को बिखरने नहीं दिया, देश एकजुट रहे, बेरोजगारी की समस्या न बढ़े। एमएसएमई सेक्टर में भारत की सरकार लगातार, मैंने स्वयं देखा है पिछले 1 साल में मेरे संसदीय क्षेत्र में कितने नए उद्योग स्थापना हुई। उन उद्योगों को सरकार ने बहुत रियायती दरों पर, कम जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर सरकार ने लोन देने का काम किया। नए हमारे एमएसएमई सेक्टर में उद्योग स्थापित हुए हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार दे रही है और साथ में लॉन्ग टर्म का उनको लोन भी उपलब्ध करा रही है। इससे जहां एक तरफ हमारा एमएसएमई सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ऊपर जाएगा, दूसरे रोजगार की समस्या को भी निराकरण करने का काम वो सेक्टर करेगा। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे साथी महंगाई की बात कर रहे हैं कि इस देश में महंगाई बढ़ी है, चिंता का विषय। महंगाई चिंता का विषय अगर है, एक तरफ आप कहते हो किसानों के कल्याण की बात करना है और दूसरी तरफ कहते हो आप महंगाई बढ़ रही। आप अगर महंगी दाल की चिंता करोगे, किसान को पैसे देने की चिंता भी आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो किसान की जेब में पैसा जाए तो दाल महंगी होगी, किसान का अनाज जो है उत्पाद वो महंगा होगा। एक तरफ आप कहते हो हर हाल में एमएसपी के ऊपर किसान का माल बिकना चाहिए और दूसरी तरफ आप कहते हो कि सब्जी महंगी हो रही। सब्जी बिक्री के बाद पैसा कहां जाता है? किसान की जेब में जाता है। दाल की बिक्री के बाद पैसा कहां जाता है? किसान की जेब में जाता है। आज हमारा जो ऑयल सीड्स है, ऑयल महंगा हुआ है। अगर ऑयल उत्पाद जो हमारा अनाज उत्पादन कर रहा है किसान, उसकी जेब में पैसा जाता है तो देश में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी तो किसान है। किसान एक अकेली ऐसी कौम इस देश में है जो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। 65% किसान अन्न उत्पादन करता है तो 65% किसानों के परिवार कंज्यूमर भी हैं, उपभोक्ता भी हैं। इसलिए किसान का अनाज का दाम जब बढ़ता है, मेरा कृपा पूर्वक विनती सदन में है कि उसको महंगाई के साथ न जोड़ा जाए। किसान के अनाज की महंगाई अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उस 65% आबादी की जेब में पैसा भी जाता है, जिसके लिए आप केवल सदन में उसकी बात करते हो। किसान की सही मायनों में किसान का कल्याण हो, इस बात की आप चिंता नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय को लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी ने मॉनिटर किया। लगातार इस मंत्रालय ने जो हमको वित्त मंत्रालय से पैसा मिला है, उसमें इस देश में लोगों की सुरक्षा के लिए अपने आप को अपडेट किया है पूरे हमारे हेल्थ सेक्टर ने। आज मेरे खुद के पार्लियामेंट्री एरिया में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगे, हमारे हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया है, ऑक्सीजन की यूनिट्स लगाई गई हैं, लगातार हाईटेक हमारे हेल्थ सिस्टम को किया गया है। आखिर ये कहां से हुआ? अगर पैसे का आवंटन नहीं होता, सरकार की मंशा नहीं होती, तो हमारा ये सेक्टर कैसे तरक्की कर पाता? मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जैव ऊर्जा के क्षेत्र में आप देखें, चाहे पराली आधारित बिजली परियोजना हो, कंप्रेस्ड बायोगैस हो, बायोएथेनॉल हो। 2 मिनट, पार्टी का टाइम है, 2-3-4 मिनट खत्म करूंगा, 2-3 मिनट खत्म करूंगा। जो बायोडीजल हो, चाहे बायोएथेनॉल हो, इस सब के ऊपर सरकार की बहुत सकारात्मक नीति है और सरकार बिल्कुल तय करके इन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। वित्त मंत्रालय लगातार इसमें मदद कर रहा है। मुझे लगता है कि आज अगर एथेनॉल और बायोफ्यूल के ऊपर हम आगे नहीं बढ़े तो 11 लाख करोड़ रुपए हर साल हम विदेशों से ऑयल का, हमारा जो पेट्रोल डीजल उसको खरीदने में हम भारत सरकार खर्च करती है। आप कल्पना करिए, जिस दिन 15, 20 और 25% ब्लेंडिंग हमारी डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में होने लगेगी, उस दिन कितनी बड़ी राशि हमारी इस देश की जो है पूंजी हमारी बचेगी। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि रासायनिक उर्वरक जो है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग देश में चिंता का विषय है। हमारी सरकार ने नैनो यूरिया और नैनो फर्टिलाइजर के ऊपर काम किया है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं कि हमें जैविक खेती की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। वित्त मंत्री जी, राज्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। जैविक खेती के ऊपर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और साथ में जो उर्वरक के ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं उस पर भी हमको उससे मुक्ति मिलेगी। मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से कि वन पर्यटन मंत्रालय जो है, जैसे हमारे क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देकर हम कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को उसको बेहतर कर सकते हैं। आज हम वन अभयारण्य बनाते हैं, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाते हैं। अगर टूरिज्म और पर्यटन को वन मंत्रालय के साथ में हम टूरिज्म और वन मंत्रालय को जोड़कर उसमें टूरिस्ट एक्टिविटीज बढ़ाएं तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि उन क्षेत्रों को हम और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी सड़क परियोजनाएं इस देश में चल रही। वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सड़क परियोजनाओं के ऊपर देश में बड़ा आवंटन इन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए हमारी एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है नरसिंहपुर, होशंगाबाद और खंडवा के बीच में, उसको एनएच में तब्दील करके उस सड़क परियोजना पर राशि आवंटित हो, ये मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय,
रेल परियोजनाओं के ऊपर देश में बहुत काम हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इंदौर बुधनी गाडरवारा हमारी बड़ी परियोजना 2015-16 में स्वीकृत हुई थी। वो इंदौर से बुधे हुआ है रेल परियोजना का। छिंदवाड़ा करेली सागर होकर परियोजना को भी उसको कहीं न कहीं हमें गति देने की आवश्यकता है, जिससे दक्षिण भारत का, सभापति महोदय आप दक्षिण भारत से आते हैं, चेन्नई से नागपुर, नागपुर से करेली सागर होकर अगर आप दिल्ली आप जाओगे तो कम से कम 5 से 6 घंटे का समय आपका बचेगा। तो वो परियोजना पर भी आगे हम काम करें। इसकी मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। दूसरा मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारा जो चूंकि वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, वित्त मंत्रालय के अधीन बैंक काम करती है। बैंक में सारा सिस्टम हमारा, हर विभाग का, हर व्यक्ति का बैंकिंग सेक्टर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बैंकों में कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के हर व्यक्ति का पैसा बैंकों में जाता है। मजदूर से लेकर पेंशनधारी से लेकर मनरेगा के मजदूर से लेकर कर्मचारी, हर व्यक्ति बैंक से अपना लेन देन करता है। मेरा आग्रह है कि बैंकों में जो कर्मचारियों की शॉर्टेज है, कमी जो कर्मचारियों की है, उस पर कहीं ना कहीं फोकस करके काम करना चाहिए। कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मैं पुनः सभापति महोदय आपके माध्यम से जो हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का सेकंड बैच यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करते हुए आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के सुब्रायन। வணக்கம். சப்ளிமெண்டரி டிமாண்ட்ஸ் ஃபார் கிராண்ட்ஸ் மீது என்னுடைய சில கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்புகிறேன். 7.5 ஆண்டு காலமாக இந்த ஆட்சியில் கண்ட பலன் வரலாறு காணாத வேலையின்மை, வரலாறு காணாத விலையேற்றம், வரலாறு காணாத பணவீக்கம். இந்த மூன்றும் தான் இந்த ஆட்சியால் ஏற்பட்டுள்ள விளைவாகும். ஆட்சியாளர்கள் பெருமைப்பட்டுக் கொள்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. தவறான நடவடிக்கைகளையே மிகச்சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரே ஒரு வேலை, எது தவறானதோ அதை தவறாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுதான் இந்த 7.5 ஆண்டு கால ஆட்சியில் கண்ட பலன். இன்னொன்றை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். NMP என்பது தேச விரோதமான நடவடிக்கை என்று நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். NMP என்பதன் மூலம் இந்தியாவினுடைய சொத்துக்கள் முழுவதும் பணமாக்கப்பட்டுவிடும். அநேகமாக ராஜ்யசபா, லோக்சபா, செங்கோட்டை தவிர எல்லாவற்றையுமே விற்று விடுவார்கள் போல் தெரிகிறது. அப்படி விற்று பணம் பண்ணுவது என்பது எந்த வகையிலும் நாட்டுக்கு நன்மை பயப்பதல்ல. இது கடுமையான அத்துமீறலாகும். நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புவது ஆட்சியாளர்களை, நீங்கள் தேர்தலில் சொன்னதை செய்யவில்லை. 2 கோடி பேருக்கு வேலை என்று வேலை அளிக்கவில்லை, வேலை இன்மைதான் அதிகரித்தது. அதே மாதிரி விவசாயிகளின் வருமானத்தை 2 மடங்கு உயர்த்துவோம் என்றீர்கள். ஆனால் விவசாயிகள் ஓராண்டு காலமாக போராடினார்கள். வருமானம் மேலும் கீழேதான் இறங்கியது. எதை நீங்கள் சொன்னதை செய்தீர்கள்? ஊழலற்ற ஆட்சி நடக்கும் என்றீர்கள். ஊழலற்ற ஆட்சி நடக்கவில்லை என்பதற்கு ரஃபேல் டீலே மிகப்பெரிய அளவுக்கு அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது. எனவே எந்த ஒன்றிலும் இந்த ஆட்சி சரியாக நடந்து கொள்ளவில்லை என்பதை தொடர்ந்து உறுதிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. இவர்கள் மேலும் சொல்லுகிறார்கள், வங்கியை, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகளை, பொது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் உட்பட சகல பொதுத்துறை நிறுவனங்களையும் விற்றுவிட மக்கள் உங்களை அனுமதித்தார்களா? நீங்கள் ஆட்சியை கலைத்துவிட்டு நாங்கள் இதை செய்தது சரி என்று மக்களிடம் மறு ஆணை கோர தயாரா என்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன். உண்மையிலேயே இவற்றை விற்க உங்களுக்கு மக்கள் அனுமதிக்கவில்லை. ஆனால் மக்கள் அனுமதிக்காத ஒன்றை செய்வது சரியான நடைமுறை அல்ல. இன்னொன்று, இந்த ஆட்சி யாருடைய ஆட்சி? இவர்கள் 419 ரூபாய் இருந்த கேஸ் விலையை எதிர்த்து இந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் போராடினார்கள் என்று. ஆனால் இன்று அது 2 மடங்கு அதிகமாகிவிட்டது. அதே மாதிரி பெட்ரோல் 45 ரூபாய்க்கு இருந்தது, அன்றைக்கு இவர்கள் போராடினார்கள். இன்றைக்கு 3 மடங்கு அதிகரித்து விட்டது. இவர்களுக்கு
ஆட்சி நடத்துகிற தார்மீக தகுதி இருக்கிறதா என்று கேட்கிறேன். நீங்கள் சத்தியமேவ ஜெயதே என்று சொல்லுவதற்குரிய தகுதியே இல்லை. இவர்கள் சொன்னதற்கு நேர் எதிராக செயல்படுகிறார்கள். எனவே இவர்கள் ஒருபோதும் ஆட்சி நடத்துவதற்கு தகுதியோடு இல்லை என்பதைத்தான் நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இவ்வளவு விலையை ஏற்றினீர்களே, 30% இருந்த கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் 22% குறைத்தார்கள். 32% 30 இருந்தது 22. ஆனால் ஏழைகளுக்கு வரி உயருகிறது. ரேஷன் சர்க்கரை காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில், நீங்கள் சொல்லுகிற மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தில் வெறும் 11 ரூபாய்க்கு இருந்தது, 12.5 ரூபாய்க்கு இருந்தது. இன்றைக்கு அது 25 ரூபாய். ஆனால் கார்ப்பரேட் அதானி அம்பானிக்கு 30% இருந்த டாக்ஸை 22 குறைத்தீர்களே. இவர்கள் யாருடைய ஆட்சி? கார்ப்பரேட் ஆட்சி தான். ஏழை எளியவர்களுக்கு எதிரான என்பதற்கு ஏராளமான விவரங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை பட்டியலிட நேரம் இல்லை. அதே மாதிரி விலை ஏறிவிட்டது, என்ன செய்ய வேண்டும்? பொது விநியோக முறையின் மூலம் மக்களின் தேவை பண்டங்கள் முழுவதையும் அரசாங்கமே கொள்முதல் செய்து ரேஷன் கடைகளின் மூலம் நியாய விலைக்கு விற்பதை உறுதிப்படுத்தாத வரை விலைவாசி ஏற்றத்திலிருந்து மக்களை காப்பாற்ற முடியாது. அதே மாதிரி இந்த அரசுக்கு 2 நிமிடங்கள். இந்த அரசு 2 வருடங்களுக்கு முன்னர் சுதந்திர தின கொடியேற்றுகிற போது பிரதமர் மோடி அவர்கள் அறிவித்தார்கள், இந்தியாவில் சமூக செல்வத்தை உற்பத்தி செய்கிறவர்கள் அதானி அம்பானி போன்ற கார்ப்பரேட் முதலாளிகள் தான் என்று அறிவித்தார். இது பொருளாதார ரீதியாக தவறான கருத்தோட்டம். சமூக செல்வத்தை படைப்பது அம்பானியோ அதானியோ அல்ல, விவசாயிகள் தான், உழைக்கின்ற மக்கள் தான். உழைக்கின்ற மக்களும் விவசாயிகளும் தான் சமூக செல்வத்தை படைக்கிறார்களே தவிர அதானி அம்பானி படைக்கவில்லை. ஆனால் இவருடைய கண்ணோட்டம் என்ன? சரியான நிலையில் இருந்தால் தான் சரியான முடிவுக்கு வர முடியும். எனவே தவறான நிலையில் இருக்கிறார்கள். இன்னொன்றையும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன், இதை முடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆஷா ஒர்க்கர்கள் மோடி அவர்கள் செய்தார்கள். ஆஷா ஒர்க்கர்களை புகழ்ந்து பேசினார், இவர்கள் சிறப்பாக முன்களத்தில் வேலை செய்தார்கள் என்று. ஆனால் ஆஷா ஒர்க்கர்களுக்கு சம்பளமே நிர்ணயிக்கவில்லையே, சரியா? அவர்களுக்கு சம்பளம் நிர்ணயித்து வழங்க வேண்டும். அதே மாதிரி துப்புரவுத்துறையில் இருக்கிற பணியாளர்களின் கால்களை கழுவினார்கள். பிரைம் மினிஸ்டர் கழுவினார். கால்களை கழுவினால் போதாது, அவர்கள் வயிற்றை கழுவிக்கொள்ள சம்பளத்தை ஏற்றுங்கள். வயிற்றை கழுவ வழி இல்லை, வேலை இல்லை. இந்த நிலையில் இத்தகைய மோசமான ஒரு ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருப்பது கடுமையானது. பட்டியல் நிறைய இருக்கிறது, சொல்ல வேண்டும். ஏமாற்றிவிட முடியாது. வரலாறு காணாத போராட்டத்தின் மூலம் இந்த அரசுக்கு பாடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த பாடத்தை படித்துக் கொள்ள வேண்டும். நிறைவு செய்கிறேன். अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के जरिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जितना पैसा चाहे आप ले लीजिएगा, लेकिन इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चकाचौंध कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं और हमें तो पूरा यकीन है कि कोरोना के दौर के अंदर, कोविड के इस दौर के अंदर हर इंसान जो मरा है वो सिर्फ कोविड से मरा है या कोरोना से मरा है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी कमियों की वजह से भी मरा है। ये एक हकीकत है और हम सबको इसे कबूल करना चाहिए। हमने बहुत सारी स्कीम से शुरू की। 2018 के अंदर जब आयुष्मान भारत निर्माण स्कीम की घोषणा की गई तो हमें ऐसा लगा कि अब इस देश के अंदर कोई भी इलाज से महरूम नहीं रहेगा। लेकिन कोरोना 1 और कोरोना 2 के दौरान कितने लोगों को इन स्कीम्स का फायदा मिला। एक उदाहरण के तौर के ऊपर अगर कोरोना 2 के अंदर अगर हम कुछ राज्यों के आंकड़े आपको बताएं तो आप भी चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर इस स्कीम के जरिए महज 8.15% लोगों को इस स्कीम का फायदा मिला। उत्तर प्रदेश जो आपका बहुत लाड़ का राज्य है, वहां पर एक आरटीआई के जरिए में पता चला है कि इस स्कीम का फायदा महज 875 लोगों को दिया गया है, जो सबसे पॉपुलेटेड राज्य है। हम झूठ कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हुआ है, हकीकत में जमीनी स्तर के ऊपर बहुत कुछ करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय,
आज जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर भगवत करार साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो मेरे ही चुनाव क्षेत्र से आते हैं और वो एक खुद डॉक्टर है और उन्हें मालूम है कि मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर, उनके चुनावी क्षेत्र के अंदर मेडिकल की क्या अवस्था है। क्या डॉक्टर साहब ये हकीकत नहीं है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि मराठवाड़ा का सबसे बड़ा घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद के अंदर है और आज भी इस हॉस्पिटल के अंदर गर्भवती महिलाओं को बेड्स नहीं होने की वजह से, डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से उन्हें फर्श के ऊपर लिटाया जाता है। यह हकीकत है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप भी कई मर्तबा इस अस्पताल के अंदर गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे अस्पतालों की, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इस कदर चरमराई हुई थी कि मुझे एज अ सांसद होने के नाते बॉम्बे हाईकोर्ट जाना पड़ा क्योंकि सरकारों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने पीआईएल फाइल किया और पीआईएल फाइल करने के बाद जब अदालत को मैंने हकीकत से आगाह कराया तो अदालत ने सरकार को फटकार लगाई और सरकार को फटकार लगाने के बाद आज कई 100 पोस्ट आज महाराष्ट्र के अंदर क्रिएट किए जा रहे हैं, तो महज इसलिए कि इसके अंदर सरकार का कोई हाथ नहीं है बल्कि अदालत ने इसे गंभीरता से लिया था। क्या वजह है कि अदालत के दखलंदाजी के बाद ही ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया है? क्या वजह है कि हम बहुत सारे लोगों के मरने के बाद ही हम जागते हैं? कोरोना से पहले अगर हम इसके ऊपर संजीदगी से ध्यान देते तो आज मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर जितनी मौतें हुई है या देश के अंदर जितनी मौतें हुई है हम वो बचा सकते थे। हम एक तरफ आयुर्वेदा को खूब बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम यूनानी मेडिसिन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन बूस्टर शॉट्स के बारे में सरकार की क्या नीति है ये हमें बताए। जेनोम सीक्वेंसिंग महज 1% तक क्यों है, इसके बारे में हमें बताए। आज के इस बजटरी डिमांड्स के अंदर माइनॉरिटी के बारे में भी चर्चा की जा रही है। माइनॉरिटीज के बारे में इसलिए कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आपको माइनॉरिटीज से कोई लेना देना नहीं है और इन्हें माइनॉरिटीज की याद महज इलेक्शन के वक्त में आती है, लेकिन हम बोलेंगे आपको। लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया अगर कहीं पर है तो वो आज सिर्फ मुसलमानों का है। हर साल अध्यक्ष महोदय 1 करोड़ मुसलमान बच्चे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप से महरूम रह रहे हैं, क्योंकि हम जो डिमांड कर रहे हैं कि ये डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, उसको आप कबूल नहीं कर रहे हैं। कितना पैसा लगेगा? महज 1500 करोड़ रुपए किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। हाईएस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन किसके है? तो वो मुसलमान बच्चों के। कितना परसेंटेज है? 4.43%। 2019-20 के अंदर आपने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत फाइनेंस मिनिस्टर साहब 120 करोड़ रुपया आपने दिए मदरसा माइनॉरिटी मॉडर्नाइजेशन स्कीम। खर्च कितने किए? तो महज 70 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिए हैं। आज भी इस देश के अंदर मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के टीचर्स जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट 2 मिनट, जो मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें ऑनरेरियम नहीं दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 सालों से 1 रुपया भी इस स्कीम के तहत दिया नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को पैसा देने की जरूरत है। मैं अपने महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। 93,000 एकड़ वक्फ की जमीनें हैं महाराष्ट्र के अंदर और उसे देखभाल करने के लिए महज 23 लोगों का स्टाफ है। वो जमीनों के ऊपर हम कोई अपना घर या अपना महल नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन जमीनों के ऊपर हम स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, हमने इसी सदन के अंदर खड़े रहकर यह मांग की थी कि मुसलमानों के हज की एक मिनट मुसलमानों के हज की सब्सिडी कैंसिल कर दे। आपने हर साल 650 करोड़ रुपए कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन वो पैसा हम चाह रहे थे कि वो मुसलमान बच्चों के ऊपर, स्कूल के ऊपर खर्च किए जाए। अध्यक्ष महोदय, जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा। कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक सदस्य ये कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी एक रेलवे स्टेशन के ऊपर सफाई कितनी है ये देखने के लिए गए थे। मैं वजीर आजम से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि किसी दिन रात में बगैर सिक्योरिटी के एक आम आदमी की हैसियत से किसी बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर जाइए, आपको सच क्या है और झूठ क्या है इसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Chairman, sir. Sir, I rise to oppose the supplementary demands for grants for the financial year 2021-22 on the main ground that the major chunk of the supplementary demand is being used for the privatization, indiscriminate privatization of Air India and other public sector undertakings. Sir, this is the second batch of supplementary demands for grants in this financial year.
The first batch of supplementary demand for grants was for an amount of 23,675 crores of rupees. It was passed in the last session. Unfortunately, we couldn't participate in the discussion for the supplementary demands for grants first batch. So after the presentation of the budget, this is the first time the members of this house is getting an opportunity to discuss about the implications of the budget of the current financial year. So I seek some little bit time from your from the house, from the chairman. Sir, what is the impact and implication of the budget that has to be analyzed in a micro level way? That is my first submission. Now this finance ministry is demanding a grant of 3,73,761 crores of rupees by way of supplementary demands for grants. Sir, it means that the first batch, it is coming around 2,673 and the second batch 3.73. That means in total the first batch and the second batch would come around 4 lakh crores of rupees as supplementary demands for grants. That means more than 10% of the amount, more than 10% of the total estimated expenditure of the financial year 2021-22 is being demanded as supplementary demands for grants. It is not a good fiscal planning as far as the government is concerned. Sir, why I am saying is because the Public Accounts Committee has already expressed their displeasure and concern over the lack of foresight in effective monitoring and the bad planning on the part of the budget controlling authorities of various ministries and development departments in preparing the budget estimate as well as the SDGs. Sir, the PSC reiterated the need for a scrupulous scrutiny of the budget proposals, rigorous monitoring of expenditure, and strict compliance of the finance rules to eliminate the possibility of excess expenditure or underspend and wrongful appropriation. Sir, proper planning and effective monitoring mechanism is highly essential to have a disciplined budget system. So I urge upon the government to adhere to the strict compliance of the financial rules and directions of the PSC to avoid supplementary demands for grants. So recurrent SDGs within 2 quarters. These 2 supplementary demands for grants have come within the 2 quarters. It shows the inefficiency of planning and the monitoring and the failure in the inefficiency in planning and the monitoring the fiscal system as a whole. This is not good as far as fiscal planning is concerned. So that is the first point which I would like to make. So regarding the second issue that is coming to the supplementary demands for grants, 3.73 lakh crore. So demand number 6, 8, 15, 16, 59, 84, 85 and 86. The major chunk goes to all these demands. Out of the 62,000 crores of rupees, out of the 66,000 crores of rupees is going to disinvest or privatize the Air India, the pioneer national carriage of India. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, what is the financial deed which took place as far as the sellout of Air India in this country? We would like to know the financial details. What is the commitment of the government of India in selling out this Air India to Tatas? And what is the financial commitment of the bidder in this deal? We would like to know the financial deals. Sir, Air India is having, sir, you may kindly see the Air India is having 122 aircrafts. And also they are having big real estate within the country and outside the country. And they are having the bilateral rights are there. And also they are having the freedom of rights. So many rights are being there. So when we consider or accumulate all these things, I have read an article written by our learned colleague, Sri Manish Tiwari, in the year 2017, that it is being estimated that, yes, Air India is being estimated as 5 lakh crore capital is there, or total assets will be valued as 5 lakh crore. So I would like to know from the Honorable Minister regarding the commitment of Air India, regarding the commitment of Government of India in the sellout of Air India, and also other demands also the government of explanation. Sir, coming to the macroeconomic terms or the implication of the budget, the Honorable Finance Minister at the time of introduction and even at the time of reply, I am having the reply that has been printed and circulated among the members. I am having the copy of it. The Ministry has said that V-shape of economic, yes,
V-shape of economic growth will take place. In the first quarter, yes, it was -24 in the year 2020. And in the first quarter of 2021, it is 20.1 plus, I do agree. But at the same time, I would like to know from the Honorable Finance Minister, what would be the impact of the SDG to the fiscal deficit, which is being estimated as 6.8, that is a fiscal deficit. Sir, 15 lakh crores is the fiscal deficit. Sir, 1 second. I'm talking on the financial terms. Fiscal deficit estimated in the year 21-22. Now you are having more than 3 lakh crores of rupees as additional or supplementary demand for grants. So I would like to know what would be the estimated fiscal deficit after these things. And regarding the price rise and unemployment and the poverty, sir, the global hunger index, 1 point I will conclude, 1 point. The global hunger index, it would goes to show that, yes, only 1 point, that is the global hunger index. Sir, kindly see, during the time of UPA, in 2011-12, it was 52 position out of 116 countries. Now it has come to 101 position. So the fiscal position is not satisfactory. Since I oppose the supplementary demands for grants, and with this words I conclude. सभापति महोदय, सदन में आज वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी। इस पे सरकार के बजट को लेकर विस्तृत से कई बातों को मानने साथी सदस्य ने रखा। वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3,73,761 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। सभापति महोदय, मैं अपनी बात किसानों के सामने आ रही समस्या शुरू करूंगा। आपने उप मांगों में उर्वरक सब्सिडी के लिए 58,430 करोड़ के अतिरिक्त खर्च की बात कही, लेकिन इस वर्ष फसलों के बुआई से पहले डीएपी की भारी किल्लत और बुआई के बाद यूरिया की भारी कमी से मेरे राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान जूझ रहे हैं। राजस्थान में जगह जगह आंदोलन हुए। कांग्रेस की सरकार ने किसानों पर लाठियां भी बरसाई। कई जगह पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान उनके बजट भाषण की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ेंगे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि आप गैस कनेक्शन दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, लेकिन सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसे वो कैसे वहन कर पाएगा। आपने उपचुनाव में कई जगह हार का सामना इसलिए भी करना पड़ा, पेट्रोल डीजल की कीमत में कुछ कमी की है, लेकिन इससे जनता को राहत नहीं मिली, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें देखें और 2014 में एनडीए की सरकार की शुरुआत के समय के भाव देखकर तुलना करते हम पाएंगे कि भाव आसमान छू रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष असर महंगाई पर पड़ा। सरकार को पेट्रोल डीजल घरेलू गैस की कीमतों को और कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। नदी जोड़ो परियोजना को गति देने के लिए 2021-22 की अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में 4300 करोड़ रुपए की मंजूरी मांगी गई। नदियां जोड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पारस्परिक नदियों के भाव क्षेत्र की जो हालत है उसमें सुधार कैसे होगा, उस पर मंथन करने की जरूरत है। आज राजस्थान के लंबित अंतर्राज्यीय जल विवादों के निस्तारण में केंद्र गंभीरता रुचि नहीं दिखा रहा। अभी कुछ दिनों पहले का उदाहरण देना चाहूंगा कि राजस्थान के नौर में 200 के स्थान पर 30 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, क्योंकि हरियाणा ने नौर फीडर में पानी की आवक अचानक घटा दी, और इसका कारण यह था कि पंजाब से नौर फीडर का मांग के क्रम आवंटन पानी नहीं दिया गया। इस कारण भी किसानों की बारियां पिट गई और फसलें बर्बाद हुई। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा रेगिस्तानी भाग राजस्थान में स्थित है। सभापति महोदय, पानी राज्य के हिस्से में देश का सबसे कम मात्रा में। राज्य में कृषि व पशुपालन मूल व्यवसाय होने की वजह से यहाँ पानी की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि वर्षा यहाँ सबसे कम होने के साथ साथ यहाँ का तापमान अधिक रहता है। सारे हालातों के बाद भी राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों का जल विवाद अशोभनीय। रावी व्यास समझौते के अनुसार पंजाब द्वारा राजस्थान को किस हिस्से का पानी नहीं देना, भरतपुर जिले में यमुना का पानी कम पहुंचने, वह यमुना बोर्ड के निर्णय के क्रम में राजस्थान को उसके हिस्से का जल आवंटन नहीं होने जैसे विवादों के कारण राजस्थान को उसके हक का पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए आप नदियों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त बजट मांग रहे हो, परंतु आपको ऐसे विषयों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे एक बात रेलवे से संबंधित कहना चाहूंगा कि कई बजट घोषणाओं में नई रेल लाइनों की सर्वे घोषणा होती है और बाद में कह दिया जाता है कि गैर यहाँ आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इस कार्य को आयोजन नहीं बढ़ाया जाता। मैं आपको उदाहरण के तौर पर मेरे राजस्थान में फड़ौदी से नागौर तथा पीपाड़ से भोपालगढ़ अशोक संकुआद होते मूंडवा तक नई लाइन का सर्वे प्रपोज हुआ। दोनों मामलों में आपने कह दिया कि यहाँ आर्थिक रूप से सर्वे ठीक नहीं हुआ, इसलिए प्रपोजल स्वीकृत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी को सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक तरफ हम रेल को सेवा बताते हैं, दूसरी तरफ गैर
अर्थ बताकर परियोजना को मूर्त रूप नहीं दिया। ऐसे में केवल एक निजी कंपनी की सोच की तरह केवल शुद्ध मुनाफे की तरफ ही क्यों ध्यान दिया जाता? दोनों लाइनें जनहित में अच्छा कदम होगा, लेकिन आपने एक कारण बता दिया कि इस प्रकार की वर्षों लंबित पुष्कर मेड़ता रेलवे लाइन को भी मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है। मेरे संदेश से नागौर के नागौर, लाडनू, कुचामन, डीडवाना, मकरान, नागौर जिले के मेड़ता और डेगाना में स्थित रेलवे स्टेशनों पर बुजुर्ग व बीमार यात्रियों के लिए एस्केलेटर लिफ्ट लगाने की मांग की। रेल मंत्रालय से यहाँ यात्री भार कम होने का हवाला देकर नियमों में नहीं आने की बात कह दी गई। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि रेल सेवा का जरिया है? यदि ऐसे नियम है तो उसमें शिथिलता दी जाए। और एक मेरी मांग है कि ट्रेनों में सामान्य कोच में सामान्य टिकट देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू किया जाए। इससे गाँव के गरीब लोगों को समस्या आ रही है। साथ ही रेलवे की विभिन्न लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। रेलवे में नई सरकारी नौकरियों का अवसर सर्जित किए जाए। एक मिनट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा वर्ष 2015 से 17 के House has to adjourn 7 o'clock. 2 more speakers are there. Please. Already exhausted 5 minutes. तो अभी तो 5 मिनट नहीं है मुझे, तो उनको 12 1 minute, please. 1 minute. 1 मिनट सब परिवहन और राजमार्ग राज्य आप तोड़ दे तो बीच में कर्म मेरा। 2015 से लेके 17 के मध्य उनके राजस्थान से जुड़े दौरों में की गई घोषणाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में 50 सड़क मार्ग जिनकी लंबाई 4772 किलोमीटर, जिससे फलोदी से होकर मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के नागौर, तरनाऊ, खाटू, नारायणपुरा होते हुए दूदू दोसा खंड भी शामिल उन्हें घोषित करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी गई। उन घोषणाओं को फिर क्रियान्वयन नहीं हुआ, इस पर ध्यान देकर राज्य में घोषित किया जाए। शब्द मैं इस मौके पर यह भी पुनः कहना चाहूंगा कि शिक्षा स्वास्थ्य से कई विषय राज्य संबंधित है, लेकिन केंद्र को प्रत्येक बात ये कहकर नहीं टालनी चाहिए कि राज्य का विषय। राजस्थान की कुछ मांगों को सदन रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाए। दोनों स्थान धार्मिक, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और दोनों ही स्थानों से केंद्र में मंत्री भी है। जोधपुर बीकानेर से राजस्थान में एक मिनट, राजस्थान में कुचामन से डीडवाना, फलोद, नागौर जाइल होते हुए फास्ट पटरों में डीडवाना तक नई रेलवे लाइन के सर्वे प्रपोज करके स्वीकृत रेलवे लाइन हेतु दी जाए। ये रूट भी धार्मिक, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समझ मोदे एक मेरे वहाँ की बहुत बड़ी मांग है, जो दुनिया भर के अंदर नागौरी पान में थी, जो गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में केवल मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में उत्पादित होती है। मेरी सरकार से मांग है कि नागौर की पान मेथी, जिसे कसूरी मेथी भी कहते हैं, उसे नागौर के प्लीज फिनिश। 1 मिनट साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल नो, आई हैव टू क्लोज बाय 7 o'clock. हमने आप पे तो कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया, बैठ रहे। 1 second प्लीज फिनिश। अब बात तो समाप्त करना दो सर। नागौर के नाम से जीआई टैग दिया जाए। 2018-19 में 53,026 क्विंटल व 2009-20 में 55,535 क्विंटल मेथी का उत्पादन नागौर में हुआ। आज जनार्दन सिंह सिंगरीवाल, 1 मिनट बात समाप्त करने दो। माननीय बेनीवाल खत्म करो भैया, प्लीज यू स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं पूरक अनुदान की मांग द्वितीय पर बोलने के लिए और उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। सभापति महोदय, मैं आंकड़े पर नहीं जाऊंगा और जहां हमारे माननीय निशिकांत दुबे जी ने जो पहले अपनी बात रखी है, तो पूरे आंकड़े संबंधित और सारे बातों को उन्होंने रखने का काम किया है। लेकिन मैं 2-3 बातें सभापति महोदय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब ये नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री, तो चाहे जो भी धन दीजिए और सारे सुरक्षित हैं, देश के विकास के और देश के सम्मान में लगने वाले हैं, यह मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। और इसका जीता जागता उदाहरण कुछ आपके सामने मैं देना चाहता हूं। सभापति महोदय, चाहे कोरोना जैसे वैश्विक महाआपदा को झेलते हुए अपना कोरोना टीका का निर्माण कर देश के जनता को कोरोना से बचाने का काम अगर किसी ने किया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह हुआ है, जो दुनिया में एक अपना अलग स्थान बनाने का काम किया है। दुनिया में सबसे तेज गति से रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कराना, यह आपके पैसा सुरक्षित होने का जीता जागता उदाहरण है। और ऐसे कार्य के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और कोरोना योद्धाओं को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, उन्हें सम्मान करता हूं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत देश के प्रत्येक नागरिक का डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड में स्वास्थ्य का वही खाता रखने वाला आईडी कार्ड बनाने की योजना आरंभ कर हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना, यह देश के लिए गर्व की बात है। सभापति महोदय, नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आज हमारी सरकार 6 एम्स के जगह पर 22 एम्स पूरे देश में खड़ा किया है और यह देश के लिए मिसाल
के तौर पर आज खड़ा है। और यह संसदीय और इसके साथ ही प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना मेडिकल जगत के इतिहास में बहुत बड़ा निर्णय है। सभापति महोदय, स्वामित्व कार्ड योजना के तहत जमीनों का गांव-गांव में सही हक एवं जानकारी देने का निर्णय लेना सभापति महोदय यह सबसे बड़ी योजना है और देश के लिए गर्व की बात है। रोडों का जाल बिछा करके अनेकों एक्सप्रेसवे, हाईवे का निर्माण तथा राष्ट्रीय भारतमाला योजना के तहत देश के चारों दिशाओं को सड़क मार्ग से जोड़ करके यातायात को सुगम एवं सरल बनाना यह देश के लिए सभापति महोदय गर्व की बात है। निर्णय और निर्माण के ऐतिहासिक समन्वय के साथ देश के चहुमुखी विकास में तीव्रता से कार्यरत यह सरकार यह देश के लिए गर्व की बात है। सनातन संस्कृति और परंपरा के पुनरुद्धार का कार्य करने वाली यह सरकार है और हम सबके लिए और देश के लिए गर्व की बात है। इसे कड़ी में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में कराने के लिए दिनांक 5 अगस्त 2020 को स्वयं प्रधानमंत्री ने शिलान्यास कर राम मंदिर के 492 वर्ष के इतिहास में स्वर्णाक्षर में दर्ज कराने का काम करने वाली यह सरकार है। सभापति महोदय, प्रत्येक दिवाली में अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यह सरकार है। सभापति महोदय, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मोदी हैं तो आपके और सदन के द्वारा दिया गया यह पैसा देश के लिए सम्मान और स्वाभिमान के लिए लगने वाला है। देश की संस्कृति और धार्मिक सनातन परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए धार्मिक महाकुंभ का सफल संचालन करने वाली सभापति महोदय यह सरकार है। दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम के तहत बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का वाराणसी में फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण जो सीधे गंगा स्नान कर जलाभिषेक के लिए बाबा विश्वनाथ के दरबार में लोगों को जाने के लिए सुगम और सरल बनाना यह हमारे लिए और देश के लिए गर्व की बात है। सभापति महोदय, किसानों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान किसान योजना के तहत उन्हें मुहैया कराना और उनके आय को दुगना करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार देश के लिए सम्मान और गर्व की बात है। सभापति महोदय, रेहड़ी ठेलों पटरी वाले गरीब दुकानदारों छोटे व्यवसायियों के लिए पेंशन देना और उन्हें बिना गारंटर का 10,000 रुपए बैंकों से दिलवाने के लिए प्रेरित करना यह देश के लिए सम्मान और स्वाभिमान की बात है। अटल जी के सपनों का भारत निर्माण हेतु नदी जोड़ो योजना का प्रारंभ करना यह हम सब के लिए सम्मान और स्वाभिमान की बात है। सभापति महोदय, यह कर करके यह सरकार दिखाने का काम करिए। श्रमिकों के लिए नई योजना लाना यह देश के लिए सम्मान और स्वाभिमान की बात है। सभापति महोदय, गरीबों के लिए मुफ्त अन्न योजना लागू कर हर गरीब को अन्न उपलब्ध कराने वाली यह सरकार यह कोरोना रूपी महामारी में भी सभापति महोदय हमने यह पूरे देश के 80 करोड़ राशन कार्ड धारियों को राशन मुहैया कराने का काम यह आज सरकार करने का काम कर रही है। पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन में दुनिया के बड़े देशों के सामने वैश्विक पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत का पक्ष मजबूती से रखकर पर्यावरण हित में विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली यह सरकार है। सभापति महोदय, एशिया और पश्चिम एशिया के देशों सहित विश्व के अन्य देशों के साथ मिलकर के राष्ट्र हित में विदेश नीति को नया आयाम देने वाली यह सरकार है और यह भारत के लिए गर्व की बात है। सभापति महोदय, नई संसद भवन और सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य प्रारंभ कर लोकतंत्र की जननी देश में अद्भुत लोकतांत्रिक मंदिर बनाने का ऐतिहासिक कार्य करने वाली यह सरकार हमारे और यह देश के लिए गर्व की बात है। सभापति महोदय, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विकास हेतु सतत प्रयत्नशील सरकार यह हमारे और आप सबके लिए गर्व की बात। सभापति महोदय, प्लीज कंक्लूड। सबका सभापति महोदय 2 मिनट अभी 7 बजे न खत्म होगा। सभापति महोदय, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के संकल्प के साथ दिन रात गांव गरीब किसान मजदूर व्यापारी नौजवान युवा महिला बुजुर्गों एवं बच्चों के लिए अनेकों योजना प्रारंभ करने के लिए यह कार्यरत सरकार है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं सदन को कहना चाहता हूं कि नदी जोड़ो परियोजना को गति देने के लिए यह बजटीय प्रबंध करने की काम यह सरकार ने करने का काम किया है। और इतना ही नहीं, आपने जो पैसा दिया खेलो इंडिया योजना के तहत इन दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम यह सरकार ने किया है।
गरीबों को बिजली देना, आवास देना, रसोई गैस का कनेक्शन देना, चूल्हा सिलेंडर रेगुलेटर के सहित यह देने का काम सरकार ने किया है। आयुष्मान सभापति में एक मिनट, सभापति महोदय, 10 करोड़ गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत गोल्ड हेल्थ गोल्ड कार्ड देने का काम यह सरकार ने किया है। सभापति महोदय, वही उसी स्थिति में जब पहले की सरकार थी तो वह पैसा देने में लोग हिचकते इसलिए थे, सदन में विरोध इसलिए करते थे कि वहां खेल घोटाला हुआ था, कोल घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, अगस्ता घोटाला हुआ था, चारा घोटाला हुआ था, अलकतरा घोटाला हुआ था, वर्दी घोटाला हुआ था, जमीन घोटाला हुआ था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री के हाथों से कागज फाड़ करके उनके मुंह पर फेंकने का काम भी इसी सदन में हुआ था महोदय। और उस समय के सरकार के दर्जनों मंत्री घोटाले में जेल जाने का काम किया था, और इसलिए प्रधानमंत्री ने மாண்புமிகு அவை தலைவர் அவர்களே, தங்களின் மூலமாக மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு ஓரிரு கோரிக்கைகளை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன். முதலாவது கோரிக்கை, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கென்று ஆண்டுதோறும் ஒதுக்கப்படுகிற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை 20 கோடி ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என்று நான் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். ஆண்டுக்கு 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுகிறது. ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் கூட அந்த நிதியிலிருந்து பணிகளை செய்ய இயலவில்லை. தமிழ்நாட்டில் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு 3 கோடி ரூபாய் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியாக தரப்படுகிறது. அப்படி கணக்கு பார்த்தால் கூட 6 3 18 கோடி ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரிடம் பொதுமக்கள் இந்த அடிப்படையில் தான் சில கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறார்கள். எனவே தொகுதிக்கு மேம்பாட்டு பணிகளை செய்வதற்கென்று தற்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிற இந்த 5 கோடி ரூபாய் போதாது என்பதை நான் இங்கே வலியுறுத்தி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எனவே இந்த தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை 20 கோடி ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இரண்டாவது கோரிக்கை, SC/ST மக்களுக்கென்று மக்கள் தொகை அடிப்படையில் SC/ST ஷெட்யூல் காஸ்ட் சப் பிளான், டிரைபல் சப் பிளான் என்று துணை திட்டங்கள் மூலமாக மேம்பாட்டு பணிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மக்கள் தொகை அடிப்படையிலே ஒதுக்கப்படுகிற இந்த நிதி முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறதா, செலவு செய்யப்படுகிறதா என்று கண்காணிப்பதற்கென்று எந்த மெக்கானிசமும் இல்லை. ஆகவே இந்த நிதியை போதுமான அளவுக்கு உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு, செய்யப்படுகிற பணிகள் அல்லது ஒதுக்கப்படுகிற இந்த நிதி எவ்வாறு செலவு செய்யப்படுகின்றன என்பது குறித்து ஆய்வதற்கு மாதந்தோறும் அல்லது 3 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கூட்டங்களை கூட்டி நடத்துவதற்குரிய அதிகாரத்தை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். எப்படி விஜிலன்ஸ் அண்ட் மானிட்டரிங் கமிட்டி இருக்கிறதோ, பிரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் என்கிற அந்த சட்டத்தை மேற்பார்வை செய்வதற்கு, அந்த சட்டத்தின் நடைமுறைகளை கண்காணிப்பதற்கு ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அதேபோல இந்திய ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் திட்டங்களை, யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ், அவற்றை கண்காணிப்பதற்கென்று தீசா கமிட்டி இருப்பதை போல் இந்த SC/ST மக்களுக்கென்று ஒதுக்கப்படுகிற நிதியை ஷெட்யூல் காஸ்ட் சப் பிளான், டிரைபல் சப் பிளான் மூலமாக ஒதுக்கப்படுகிற நிதியை முறையாக செலவு செய்கிறார்களா என்பதை கண்காணிப்பதற்கென்று ஒரு கமிட்டியை அமைக்க வேண்டும். அந்த கமிட்டியை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தலைமை தாங்கி வழிநடத்துவதற்குரிய அதிகாரங்களை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு, பள்ளி கல்வி மற்றும் பல்கலைக்கழக கல்விக்கென்று தற்போது ஒதுக்கப்படுகிற நிதி போதுமானதாக இல்லை. எனவே கல்விக்கென்று நிதி ஒதுக்கீடு கூடுதலாக தேவைப்படுகிறது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சி, அதுவும் மிகச்சிறந்த ஒரு தேசத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்றால், நாம் வருகிற வருவாயில் இருந்து பாதிக்கு மேல் அல்லது 1/3 மடங்காவது கல்விக்கென்று ஒதுக்க வேண்டும். ஆனால் நமது தேசத்தில் கல்விக்கென்று ஒதுக்கப்படுகிற நிதியின் அளவு மிக மிக சொற்பமாக இருக்கிறது. எனவே கல்விக்கென்று கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளையும் வைத்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். बुधवार दिनांक 15 दिसंबर 2021 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।